journalist Mr. Kanti Parmar to show you the visuals. That is the forest area, and behind that is Pakistan. That's we've been informed by the BSF officials. So we are just at the point of Indo-Pak border, and the tourism spot that has been developed out here at Nadabet border area, wherein today the flag hosting ceremony gonna take place. The senior officials of BSF will be present here and will be hosting the flag, and in fact a parade is also planned. So as similar as any other Independence Day celebration. Now apart from that, what is more important and in this 75th Independence Day is that India is celebrating Har Ghar Tiranga campaign. India is doing Amrit Mahotsav. So definitely the kind of atmosphere it will be definitely up to the sky, and this is the place wherein the people will be asked to go in, and the actual flag hoisting will happen there. The people will be people across India are gonna come out here at the Nadabet Indo-Pak border. You can see out here the visuals my video journalist Mr. Kanti Parmar is showing you, and this is the place wherein people will be coming out here and taking part in the flag hoisting ceremony out here in Nadabet border. So you can understand that the all preparations for celebrations have taken place. But yes, in a short while the people across the country will be coming here to experience and witness the flag hoisting ceremony out here at Indo-Pak border at Gujarat Nadabet. Over to you. Yeah, thank you very much, Sandeep. I'd like to go to Ashwin at Kochi now. Ashwin, I'm interested to know, I mean, there is more light right now, and I can see you better, I can see the environment better. Kochi is a blessed city because Kochi also has a ship named after it, the INS Kochi, which is one of the premier destroyers of the Indian Navy, and it was my honor and privilege a few years back to be on INS Kochi. I was shooting Patriot there, and I remember the captain and the complete crew, the officers and the crew of INS Kochi. So the city of Kochi reminds me of that ship. So tell me Ashwin, now tell me what's happening. What are the Navy planning? Kochi has a huge naval presence. It has a huge naval base. What is the Navy planning in Kochi? Absolutely. The Kochi Naval Base is the headquarters of the Southern Naval Command, one of the 3 command centers of the Indian Navy. And it is certainly an overwhelming feeling now seeing reports from all the way from Cellular Jail in Andaman to Kanyakumari to the Gujarat border to Chandigarh, everywhere. It's certainly an overwhelming feeling. What is important with these visuals is that this is the place. I'm outside the Cochin shipyard. Due to some security reasons, we are not allowed to go at the entrance of the Naval Command right now. Will be allowed inside. Today at around 7:30 a.m. There will be a huge naval parade at the naval base. There's going to be a parade which will be taken out, which will be reviewed by the Vice Admiral MP Humpy Holi. He's AVSM and NM flag officer, commanding in chief of the Southern Naval Command. This will take place, and after which we are also being told that all the ships in all the vessels in the naval base will also have their own individual celebrations which will happen inside. Today they have said due to some security reasons the media won't be allowed to shoot those. Otherwise it's an aspiration where I'm standing right in front of the aspiration of the Indian defense as well, because what is here is the very place where the indigenous aircraft carrier INS Vikrant was made. This is the very spot outside of it. So certainly gives a great feeling. At the moment, the moment of people is less. But in a short while, at around 7:30, we will be showing you an exclusive visuals of the naval parade, which will be taking place in Kochi today. Arya. Yeah, we have Aneri here live from Kanyakumari. Now, Aneri, you said that the Lieutenant Governor will be there, and there will be a proper function there to honor all those
who suffered at Cellular Jail, who are imprisoned at Cellular Jail, and those who gave up their lives fighting for the country. What is the general mood in and around Port Blair? Because we see all over the country, we see Har Ghar Tiranga, Azadi Ka Amrit Mahotsav. Now, you've told us about Cellular Jail. Tell us something, because you must have seen all the houses there. Have people put up the tricolor there? What is the mood of the people there in Port Blair? Well, Gaurav, we are reporting from here, from Kanyakumari, where we have been seeing that this is the last point of India and the southernmost tip of India as we talk. Right now, there are thousands of people who have gathered here to watch, and every day there are thousands of people who gather here to watch the sunrise, as this is the last point of India, and also the Vivekanand Rock Memorial, which is a historic monument which is located here, and this is said to be the very last step of India in Kanyakumari. And also this itself has a long history. If we talk about, the memorial stands as one of the two rocks which is isolated near about 500 meters off the mainland, and also this was built in 1970s in honor of Vivekanand, when he had swam all the way to here. And also when we talk about this, as we talk about Ek Bharat, Shresht Bharat, and from Ek Bharat, that is from Kashmir se leke Kanyakumari, this is the very point as we continue to report from Kashmir to Kanyakumari. As you can see now, in some time from now, we will also be seeing celebrations here taking place in regard with the 75th Independence Day. As we have been seeing, there are flags which have been unfurled at houses. Every household has a national flag, very significant, and also at the same time, just on the 11th of August, as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, we had seen that the Indian Army had unfurled the national flag, which is 75 feet national flag, which was unfurled here at the Kanyakumari's Vivekanand Rock Memorial. And also, what important here is that there were many various celebrations which were taking place at the naval base as well, and also by the Indian Army as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, and several activities have been taking place across the country, let it be in Port Blair to Kochi, and also as we continue to report from some time from now, we will be seeing there will be celebrations here in Kanyakumari as we report from which is the last point of India. The coming of the age of electricity has completely changed our way of life. Electric power is the open sesame to a more pleasant and prosperous life for every one of you. Power has revolutionized major industries throughout the world. Village and small-scale industries now follow suit. And now India is becoming electrically minded. लाल किले की प्राचीर से 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। वे यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। Namaskar. As time gives birth to another day, as every passing day gives birth to history, and as every 15th of August gives birth to national celebration, joyous Independence Day greetings to every Indian blessed to inhabit this kaleidoscope of contrasts, cultures and camaraderie we call India. As the nation comes together to celebrate its 76th Independence Day, let all eyes only see the tricolor. Let all hands only rise in gratitude, and let all feet only tap to the beat of patriotism. As we complete this landmark year of celebrating our independence, it is a fragrance of reverence and respect that colors all festivities today.
We bow our heads to those courageous men and women who fought for freedom in this land, our brave freedom fighters, warriors and role models, joining in from all parts of the country, scripting extraordinary stories and performing seemingly impossible tasks. आज से 75 वर्ष पहले वो सुबह भारत में आई थी जिसके लिए भारतवासियों ने सपना देखा था, संघर्ष किया था, बलिदान दिया था। तब से आने वाली हर 15 अगस्त की सुबह में आजादी की भावना की वो महक होती है जो हर भारतवासी को गौरवान्वित करती है। आज 15 अगस्त 2022 की सुबह आजादी के अमृत महोत्सव की सुबह है। साल दर साल एक एक कदम शानदार और यादगार। भारत ने इन तमाम वर्षों में एक देश के तौर पर जो हासिल किया है वो आश्चर्य से कम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक शानदार देश है। संभावनाएं जहां संकल्प बनती हैं और सिद्ध हो जाती हैं। लोगों की जिंदगी कैसे बदलती है हमने ये करके दिखाया है। देश जब आजाद हुआ तब हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थीं। तब से अब तक के भारत की यात्रा कई मायनों में हैरान करने वाली है। पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय विकास और जन कल्याण के लिए किए गए उपायों और प्रयासों के सकारात्मक परिणाम हम सबके सामने हैं। For India, the midnight between the 14th and 15th of August 1947 pushed open the gates of self-rule when a restless, eager and dynamic nation raised its face, lifted its fate and opened its arms to the winds of change. This historic red fort, marvelous, majestic and seemingly motionless, has witnessed and participated in all that change. Change that began with governance at the center, but would ultimately percolate down in social and real terms to towns and villages. Change that would bring with it ups and downs, churn and cheer, gloom and glory, but most importantly, change that would allow a free India to blossom and grow into a country that was unique and truly reflective of its people. It's a lovely cloudy day here in New Delhi. The sun peeking out to give that proverbial silver lining to every cloud. A slight wind making the national flag flutter with pride. Our freedom today gives us wings, while our history anchors us to a land that has held us strong and gives us stability. Our strength lies in us being one, and that is what helped us get our freedom finally. When we all came together and public sentiment rode high on inspiring slogans like Swaraj is my birthright and I shall have it, Jai Hind, Vande Mataram, Simon go back, Inqilab Zindabad, quit India. This nation we call our motherland has nourished, nurtured and harbored us over the centuries. We salute this land, Vande Mataram.
वंदे मातरम केवल दो शब्द नहीं है, ये स्वयं में हमारे मान, अभिमान और देश प्रेम को समेटे हैं। इसे आजादी की लड़ाई के लिए गाया गया और अब इसे देश के बढ़ते गौरव और इस देश की मिट्टी से हमारे प्रेम के लिए गाते हैं। प्रेम और उत्साह का संचार करता है वंदे मातरम। ऐतिहासिक लाल किला और उस पर शान से लहराता हमारा प्यारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा। और इसी लाल किले की भव्य दीवारों पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशस्तियों को सजाया गया है। इनमें उस प्रदेश की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और धार्मिक विरासत को भी देखा जा सकता है। इन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए हम सभी देशभक्तों के योगदान और बलिदान को आज याद कर रहे हैं। आज हर उस विभूति को देश याद कर रहा है जिनके प्रयासों से आजादी की लड़ाई को बल मिला और आखिरकार हम आजाद हुए। ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में कम जानकारी है या वे भी जो गुमनाम रह गए। उन सभी को सादर नमन। Before the desire for independence became a movement, before it gathered momentum, it started as a dream, dreamt by thinkers, visionaries and leaders. It started as a song and a chant, Vande Mataram, inspiring people, stirring emotions and leading actions. It started as a sentence that became a mantra of thousands. Swaraj is my birthright and I shall have it. And in this saga of what went into making us today who we are, some of the most inspiring stories are people who we have not read about. Silent revolutionaries, quiet workers and strong rebels, men and women who broke norms, challenged social constructs and led by example. Today, we salute all the sung and unsung heroes who gave patriotism true meaning. In fact, whenever we think of the independence movement, the bespectacled, calm and benign gaze of Mahatma Gandhi or Bapu flashes across the mind. And we had so many other people, so many others who quietly gave their all. आज का दिन इन सभी नाम अनाम देशभक्तों को याद करने का विशेष दिन है। लाल किले की दीवार पर 3 जगह इन प्रशस्तियों को सजाया गया है। आज ये कल्पना करना कितना कठिन है कि इन देशभक्तों को किन किन कुर्बानियों से गुजरना पड़ा। 200 साल की गुलामी थी, बहुत लंबा संघर्ष चला, लक्ष्य आसान नहीं था। कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता, पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम तक उसके उपनिवेश थे, लेकिन इन देशभक्तों के बल पर भारत ने आजादी पाई और आज हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष आजादी के पूरे हुए हैं और लाल किले की प्राचीर के सामने अलग अलग स्कूलों के 792 एनसीसी कैडेट्स मौजूद। इन कैडेट्स ने भारत के मानचित्र की भौगोलिक फॉर्मेशन में इसे रचा है। लाल किले की प्राचीर के सामने ज्ञान पथ। Nearly 800 NCC cadets forming the map of India. From the snowy mountains, the beautiful mountain lakes, and the peaceful regions of the northeast to the central and vibrant part of India. Color, culture, creativity, festivity,
our beautiful sand dunes, the somber sand color, and the gorgeous costumes. Haryana, the heartland. And we have here, as you can see, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttarakhand, all being represented. Of course, one of the 7 wonders of the world, Taj Mahal. A varied land and beautiful topography, all interspersed with lovely bits of culture. In fact, everything sprouting from this beautiful land we call our mother. भारत की भूमि को आशीर्वाद प्राप्त है। जमीन, जंगल, पहाड़, प्राकृतिक संपदा, सौंदर्य, संस्कृति, खान पान, विविधता, सब कुछ भरपूर है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने आप में अनूठे हैं। चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, असाधारण इतिहास, संस्कृति और विविधता की वजह से ये अनोखे हैं और विशेष भी। हर जगह की अपनी खासियत है जो सभी को लुभाती है। हर राज्य, हर प्रदेश जीवन के अनुभवों को समृद्ध करने वाले हैं। ये सब मिलकर भरते हैं भारत के गौरव में शानदार रंग। From the beautiful 7 sisters of the Northeast to the heartland of India, and of course the sea-kissed and ocean-kissed coastal areas. Beauty is when colors come together, not to merge into one another to form one color, but to retain their individual identities and stand shoulder to shoulder to form a larger identity. Inclusive, unique and awe-inspiring. That's the power of being different yet together, of coming from different places but belonging to one country, of having different faiths but one belief, that without us there is no me. And so today in our hearts, hopes and homes, let's celebrate all the color that makes us one, all the faiths that make us Indian, and all the strengths that make us human. And each time that we see a flutter in our tricolor, let the one in me be replaced by all of us as one in India. आकाश में इंद्रधनुष में तो सिर्फ 7 रंग होते हैं, लेकिन भारत के इस इंद्रधनुष में कई रंग मिले हैं, इसीलिए इसकी छटा बिल्कुल अलग है। ये विशिष्ट दीर्घा गण्यमान्य व्यक्तियों के लिए भारत जैसी विविधता वाला देश दुनिया में शायद ही कोई हो। विशाल देश, अलग अलग संस्कृतियां, बोली, भाषा, खान पान, वेशभूषा, और 75 वर्ष पहले जब भारत आजाद हुआ, तब से अब तक की उसकी यात्रा ऐसे ऐसे पड़ावों से होकर गुजरी है जो ऐतिहासिक हैं। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए हमने उम्मीदें भी जगाई और उपलब्धियों के कीर्तिमान भी बनाए। क्रांतिकारियों की शहादत, आंदोलनकारियों की कुर्बानियां और करोड़ों देशवासियों के अथक परिश्रम का गौरवशाली लम्हा रहा 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ। तब से एक लंबा सफर तय कर आज देश स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 75 वर्षों में देश ने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए कई क्षेत्रों में सफलता के परचम लहराए हैं। स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग रियासतों का भारत में विलय कर राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती प्रदान कर सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार किया। पिछले 7 दशकों में औद्योगिक क्षेत्र में हमारे देश ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर एक अनूठी मिसाल कायम की है।
किसानों की उपज बढ़ी, उनकी आमदनी में इजाफा हुआ तो श्वेत क्रांति से किसानों के चेहरे खिल उठे और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए FDI की पहल हो या फिर मूल्य नियंत्रण के लिए MRP को लागू करना, इन सब ने देश को नई दिशा देने का काम किया। इसरो ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक अंतरिक्ष में कई ऐसी सुनहरी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिस पर देश और दुनिया को गर्व है। पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर भारत दुनिया के चुनिंदा परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल हो गया। 1971 का युद्ध हो या कारगिल संघर्ष, भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और वीरता से तिरंगे का मान बढ़ाया है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दुश्मन के घर में घुसकर उसे नेस्तनाबूद करना भारत के फौलादी इरादे और बुलंद हौसले की गौरव गाथा है। एक साक्षर नागरिक ही देश की प्रगति में योगदान दे सकता है। इसी सोच के साथ शुरू किए गए सर्व शिक्षा अभियान से गांव-गांव तक पढ़ने लिखने का माहौल बना। तो वहीं IIT और IIM जैसे संस्थानों ने हायर एजुकेशन में भारत को दुनिया में पहचान दिलाई। कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की घर घर पहुंच ने सूचना तकनीक के क्षेत्र में क्रांति लाकर डिजिटल इंडिया के सपने को पर लगा दिए हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज से लेकर एक दिन में राष्ट्रीय राजमार्ग के रिकॉर्ड निर्माण तक के बेमिसाल सफर में इस देश ने सुदूर गांवों को महानगरों से जुड़कर नया इतिहास गढ़ते देखा है। काले धन पर अंकुश लगाने की बात हो या फिर एक राष्ट्र एक कर की, ये देश हमेशा से आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नजरिए से भारत दुनिया भर में मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन गया है। कोरोना महामारी का कुशल प्रबंधन, 200 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज की अनूठी उपलब्धि के साथ वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत वाले भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत कई देशों को मुफ्त वैक्सीन देकर सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित की। नेपाल और श्रीलंका में जब हालात बिगड़े तब भारत ने नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत सहायता पहुंचाकर सच्चे मित्र राष्ट्र की भूमिका निभाई। जगत गुरु कहलाने वाले इस देश की पिछले कुछ वर्षों में विदेशों में बढ़ती साख ने इसे एक अलग मकाम दिलाया है। स्वच्छता का मिशन हो या कमजोर तबके का बैंक से रिश्ता, बेटियों के प्रति समाज की सकारात्मक सोच हो या किसानों की प्रगति का ये सुनहरा सफर, ये देश 130 करोड़ से अधिक लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए बदल रहा है और न्यू इंडिया के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। Success can be individual, but progress has to be collective. The country today is celebrating and participating in one more celebration of a day that holds in its memory and legacy the power and responsibility that come with freedom, the life force of democracy. In the special VIP enclosures, the dignitaries started arriving and taken their seats here at the historic Red Fort. The Red Fort is this grand red sandstone fortress, the centerpiece without doubt of our Independence Day celebrations, and this is the place where the history of individual India was crafted, and today it is a connect between the past and the modern present. The people of a democracy are its driving force, the engines of its renewal, revival and reform. Governance has always had to lead from the front in ensuring that all policies, politics and processes ensure that the fruits of progress reach the last mile and bring about equity,
enhancing access to opportunities for the marginalized. The last 8 years have also seen India moving strongly and surely in this direction. पिछले 8 साल न्यू इंडिया के निर्माण की शिल्पकार मोदी सरकार। कमाल के काम और उपलब्धियां बेमिसाल। यही है मौजूदा सरकार की विशेष पहचान। लोगों का भरोसा और शासन में पारदर्शिता पिछले 8 सालों में सरकार की सबसे बड़ी पूंजी साबित हुई है। सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिले, हर गरीब को मिले, और इसी अप्रोच से हम काम कर रहे हैं। पिछले 8 सालों में किसानों की खुशहाली बनी है राष्ट्र की खुशहाली। सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम किसान, फसल बीमा और कृषि सिंचाई योजना ने किसानों को राहत और संबल प्रदान किया है। कृषि में उन्नत तकनीक मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है और 35 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे इसी दिशा में सार्थक कदम है। अन्नदाताओं के लिए चलाई गई हैं किसान रेलगाड़ियां। रिकॉर्ड निर्यात होने से देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, तो वहीं रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह ने उम्मीदों को पर लगा दिए हैं। 8 सालों में बनाई सुनियोजित योजनाओं का ही कमाल है कि पूरी हुई है बढ़ती बिजली की मांग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया से बढ़ा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वोकल फॉर लोकल से स्वदेशी की मांग बढ़ी है और बढ़ा है स्थानीय कारोबारियों का आत्मसम्मान। युवा भारत तरक्की और उन्नति का पर्याय बन गया है। स्किल इंडिया स्टार्टअप और स्टैंडअप ने युवाओं को बनाया है कुशल और जॉब प्रोवाइडर। यूनिकॉर्न की बढ़ती संख्या प्रगति का नया आयाम है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने ऐसे काम किए हैं जिस पर देशवासियों को फख्र है। कोविड के दौरान विदेशों में बसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन और यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने से खुशहाली बढ़ी है और मिलने लगा है वहां के लोगों को उनका अधिकार। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर मोदी सरकार ने वर्षों पुराना सपना किया है साकार। पंचामृत के जरिए धरती को हरा भरा बनाए रखने की पहल हो या नमामि गंगे मिशन से गंगा की साफ सफाई का अभियान, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना हो या फिर जंगलों का विस्तार। 27 शहरों में मेट्रो, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 10 लाख के पार और नए भारत को गति प्रदान करने के लिए प्रतिदिन 37 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण। बीते 8 साल में हर मोर्चे पर कामयाब रही है मोदी सरकार। दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता और स्वस्थ जीवन शैली के लिए इसकी स्वीकार्यता, आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य सुरक्षा हो या फिर विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान, ये कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिस पर हर देशवासी को नाज है। सरकार की नीतियों का ही कमाल है कि गांव से लेकर रायसीना हिल तक महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण देखने को मिला है। अष्टलक्ष्मी यानी पूर्वोत्तर के राज्यों का चहुमुखी विकास पिछले 8 सालों में अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ने सिक्किम को दी है एक नई पहचान। आजादी के 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के लिए संकट में सहारा बनकर चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है। डिजिटल होती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा और शिखर को छूने की दूरदर्शिता भी दिखी है।
21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार का अनूठा संकल्प है नई शिक्षा नीति। पिछले 8 सालों में खेल के मैदान पर बने हैं ढेरों कीर्तिमान। खेलो इंडिया और टॉप्स जैसी योजनाओं से ओलंपिक, पैरालंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने परचम लहराकर देश को गौरवान्वित किया है। पिछले 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नाम रहे हैं। ये निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों के बेहतर भविष्य की नींव है। एक ऐसी नींव जिस पर सशक्त भारत की गौरवशाली इमारत शान से खड़ी हो रही है। One of the largest growing economies in the world, India today surging ahead, using technology to empower. India is a nation which has special needs, special requirements and challenges, of course, also very special strengths, fueled by people, perspectives and progress. Just before the Prime Minister's address to the nation, flower petals will be showered by 2 Mi-17 helicopters in Amrit formation. These are from the 129 helicopter unit, also called the Nubra Warriors, and the formation will be led by Wing Commander Anand Vinayak Agashe and Wing Commander Nikhil Mehrotra. Will be in the second helicopter. While following the 2 Mi-17s in line astern formation will be 2 Dhruv helicopters from 111 helicopter unit referred to as the Snow Tigers, and this is the first unit of the Indian Air Force to induct these indigenous advanced light helicopters made by Hindustan Aeronautics Limited, making them the proud flag bearers of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. आज का ये समारोह कई मायनों में यादगार होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय अमृत फॉर्मेशन में 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के द्वारा यहाँ फूलों की पंखुड़ियां बिखेरी जाएंगी और राष्ट्रगान के समय पहली बार लाल किले पर समारोह के दौरान सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित घरेलू हावित्जर तोप एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम प्रोटोटाइप द्वारा औपचारिक 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तोप पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे DRDO ने डिजाइन और विकसित किया है। पहली बार 21 तोपों की सलामी में स्वदेशी तोप शामिल है। 21वां गोला इसी तोप से छोड़ा जाएगा और ये तोप की गूंज नहीं, ये भारत की गूंज है। Absolutely. In fact, this prototype of the advanced towed artillery gun system has been specially customized with certain technical specifications being tweaked for the ceremony. हर 15 अगस्त को लाल किले का माहौल पूरी तरह से निखर उठता है। चाहे धूप खिले, बादल हो या बारिश, यहाँ मुख्य समारोह की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। इस समारोह की भव्यता और आयोजन की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए कई एजेंसियां जुटती हैं और इस समारोह का शानदार प्रसारण आप तक पहुंचता है दूरदर्शन के माध्यम से। भारत का 76वां स्वाधीनता दिवस बेहद खास और अनूठा है। हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीकों के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधा प्रसारण के लिए 44 HD कैमरे लगाए गए हैं। इनमें वाइड एंगल लेंस के साथ 2 ब्यूटी कैम, 4 PTZ कैमरा और 4 जिप कैमरे डायनेमिक एंगल वाले खूबसूरत शॉट्स आप तक पहुंचा रहे हैं।
दूरदर्शन ने प्रधानमंत्री के काफिले को कवर करने के लिए पहली बार लाल किले स्थित दिल्ली गेट दरवाजे की तरफ 6 कैमरे इस तरह प्लेस किए हैं कि बैकड्रॉप में स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता की कहानी भी नजर आती है। पूरे समारोह को एक नए एंगल से दिखाने के लिए ज्ञान पथ पर ट्रैक एंड ट्रॉली पर कैमरा लगाया गया है। गुरुद्वारा शीशगंज के ऊपर लगे इस कैमरे से चांदनी चौक से लाल किले को सीधे देखा जा सकता है। लाल किले और चांदनी चौक पर लगा क्रेन कैमरा फ्रंटल शॉट्स की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। राजघाट आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ 5 कैमरों के मल्टी सेटअप के जरिए क्रिएटिव एंगल से हर गतिविधि को कैप्चर करने की व्यवस्था की गई है। मुख्य कार्यक्रम स्थल लाल किला और राजघाट को ऑप्टिकल फाइबर और बैकपैक कनेक्टिविटी के साथ दूरदर्शन के स्टूडियो से जोड़ा गया है। दूरदर्शन के 125 से भी ज्यादा क्रिएटिव लोगों की टीम पिछले 3 महीने से भारत सरकार के अलग अलग विभागों के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में लगी है। रक्षा मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के साथ 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट वायुसेना के विमानों को कमांड देती है। मुख्य समारोह स्थल पर हाई क्वालिटी ऑडियो का बेहतरीन प्रबंधन किया है सिग्नल रेजिमेंट ने। स्वाधीनता दिवस समारोह के इस मेगा प्रसारण की ओवरऑल इंचार्ज हैं प्रिया कुमार और सुनील। तकनीकी प्रभारी हैं अभिषेक अग्रवाल और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र सिंह चौहान। लाल किले की प्राचीर के सामने ये गारद मौजूद। पहले इसी लाल किले से सटकर यमुना बहती थी, वक्त के साथ अब वो यहां से जरा हटकर बहती है। आज के समारोह में बड़ी उत्सुकता से शामिल यहाँ गण्यमान्य व्यक्ति, केंद्रीय मंत्री, राजनयिक और सभी विशिष्ट गण, विदेशी मेहमान। और यहाँ ये भी बताना महत्वपूर्ण होगा कि 14 देशों के 26 अधिकारी और 127 कैडेट्स यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 9 से 17 अगस्त के बीच भारत में हैं और आज यहाँ मौजूद हैं। लाल किले पर मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के अलावा वो आगरा और दिल्ली में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल भी देखने जाएंगे। Today we come together to celebrate our 76th Independence Day, with the past giving us context and a point of reference, and the present keeping us alive and aware of our needs and deeds today, and the future basing itself on the hope that we think of the well-being of the country first before our personal opinions or agendas. And what bigger celebration that unites the largest democracy in the world, with more than 1.35 billion heads and hearts suffused in saffron, white and green. The colors, when they come together, stop being individual colors, but come together as one called India. लाल किले की प्राचीर के सामने और पूरे इस इलाके में रंगों की अद्भुत छटा है। और हम जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश बापू का स्मरण कर रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राजघाट पर कुछ ही देर में आगमन होगा। 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बापू को नमन। The apostle of peace and non-violence, who led our freedom struggle towards the path of truth
and peaceful protest. Located on the banks of the river Yamuna, this memorial in the form of a black marble stone platform just beneath the open sky without any claddings on top or any sides. And here the arrival of Prime Minister Narendra Modi to offer reverence and respect to the father of the nation. The path to the sublime are one to many. The nature of peace is pure harmony. And as we walk our journey in our different way, the resting place is only one, they say. Of reverence and gratitude as the flame of truth and non-violence rises strong and upwards. राष्ट्र का बापू को नमन। प्रधानमंत्री ने बापू की स्मृति को पुष्पांजलि अर्पित की। अब वो राजघाट से प्रस्थान कर रहे हैं लाल किले की ओर। बापू का जीवन आदर्श की वो पराकाष्ठा है जहां वो स्वयं एक संदेश बन जाता है। बापू ने देश को जोड़ा, बापू ने दुनिया को जोड़ा, जीवन को सरल बनाने के अनूठे और सीधे सादे मंत्र दिए। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को हर कार्य की कसौटी माना। सत्य का मार्ग कठिन सही मगर वही सही है, बापू ने फिर से बताया। Magnificent and imposing, the Red Fort, standing regal and proud, reinforcing the belief that architectural brilliance is more than just design. It's about rhythm, order, balance and soul. Centuries of history embodied in the 17th century fortress palace. Its significance transcending time and space. भारत में या दुनिया के किसी भी कोने में जब भी हम अपने प्यारे तिरंगे को देखते हैं तो मन में जोश और उमंग की भावना जागती है। इसे शब्दों में व्यक्त करना बड़ा कठिन है। तिरंगे की कल्पना से लेकर उसके राष्ट्रीय ध्वज बनने की यात्रा बड़ी रोचक है। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा, तिरंगे की धूम, आजादी का अमृत महोत्सव। The national flag, a symbol of the ultimate patriotic spirit. And today, as our national flag flutters proudly all across the nation, we know that it carries with it the saffron of sacrifice and steadfast calm, the white of peace and the benign gaze, and of course the green of prosperity and our connection to the earth.
लाल किले के सामने चांदनी चौक और जहां भी नजर वहां तिरंगा। ये आजादी की शान है, भारत की जान है, एकता की पहचान है और ये तिरंगा हम सबका मान है। आजादी के 75 वर्षों की प्रगति और तरक्की का साक्षी है ये तिरंगा। ये तिरंगा ही है जो बदलते दौर के साथ अटल और अडिग होकर इठलाते इतराते हुए लहरा रहा है। हर घर तिरंगा एक पहल है तिरंगे से व्यक्तिगत रिश्ता बनाने का। ये मौका है अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र अभिमान की भावना का अनुभव करने का। तिरंगा उम्मीद भी है और प्रेरणा भी। ये लक्ष्य भी है और वहां तक पहुंचने का जज्बा भी। सभी देशवासी अपने घरों में तिरंगा फहरा सकें, इसके लिए राष्ट्रीय ध्वज संहिता में बदलाव किया गया है। इस बदलाव का ही परिणाम है कि भारत का हर नागरिक दिन रात अपने घरों पर तिरंगा फहरा सकता है। अब पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज का भी उपयोग किया जा सकता है। हर घर तिरंगा अवसर है भारतीयता के जश्न का। ये उत्सव है देश प्रेम का और ये लम्हा है गौरवशाली भारतीय इतिहास के साथ समृद्ध वर्तमान के आन बान शान तिरंगे को भावपूर्ण सलामी देकर ये प्रण लेने का कि हम सब इसकी गरिमा बनाए रखने की कोशिश अंतिम सांस तक करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव, रंगों की छटा अलग, बिल्कुल निखरी हुई सुबह। और ये भादों का महीना, जब कभी सुबह बादल आ जाते हैं, कभी बारिश होती है, लेकिन आज की सुबह बेहद सुहावना मौसम और प्रतीक्षा कुछ ही समय में पधारेंगे यहाँ लाल किले की प्राचीर के सामने माननीय प्रधानमंत्री और ये विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जहां केंद्रीय मंत्री और अन्य विशिष्ट व्यक्ति आज के इस विशेष कार्यक्रम में यहां मौजूद। और रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक अनूठी पहल की है। स्क्रोल, यानी अगर हम देखें तो आजादी के संघर्ष के ऐसे पलों को दिखाया गया है जो सबके लिए प्रेरणा बन गए। 500 प्रख्यात कलाकारों ने इन स्क्रोलों को बनाया है। So as we shared earlier, fortunately the sun is not bright and shining because it can get very, very warm. And here at the arrival at Red Fort, the Prime Minister's car came. देश के इतिहास में यादगार पल, आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। भारत का ये गौरवशाली अवसर और लाल किले के दक्षिणी छोर से लाहौरी दरवाजे की ओर बढ़ता प्रधानमंत्री का काफिला। प्रधानमंत्री बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात यहाँ पधार रहे हैं। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार करेंगे। इसके बाद रक्षा सचिव प्रधानमंत्री का परिचय दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा से करवाएंगे।
दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग प्रधानमंत्री को सलामी मंच की ओर ले जाएंगे, जहां अंतर सेना और दिल्ली पुलिस गारद के जवान उन्हें सलामी देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे। आगमन हो रहा है लाल किले की प्राचीर के नजदीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, अब वो घड़ी समाप्त हुई। The Prime Minister's Guard of Honor assembled here just outside the Lahori Gate as the Prime Minister arrives here. गौरव पताका विश्व में लहराने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम विनय से स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, उनकी अगवानी की रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहां उन्हें जनरल सैल्यूट दिया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान गारद का निरीक्षण करने का अनुरोध किया जाएगा। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन गरिमापूर्वक स्वीकार किया और Wing Commander Kunal Khanna, who is commanding this Guard of Honor, requesting the Prime Minister to come and inspect the Guard of Honor. And when the inspection starts, the band position there will strike up a slow march. समाप्त हुआ और अब माननीय प्रधानमंत्री जी। The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now make his way through the beautifully decorated Lahori Gate to reach the ramparts of Red Fort for the flag unfurling and his customary address to the nation. And today, as we take a look at our achievements, there is a sense of pride, but also a realization of the miles we need to walk for achieving the different shades of independence. The past can give us context and inspiration, but it is only in the present that we can sow the seeds of a better future. प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद लाहौरी दरवाजे से अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर, और आज उनके स्वागत में विशेष रूप से 2 हाथी भी वहां मौजूद और इधर
41 फीट ऊंचे और 24 फीट चौड़े लाहौरी गेट से गुजरकर प्राचीर पर पहुंचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री लिफ्ट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सन 1947 में जब 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया था, तब आकाश में बादल थे। तिरंगा फहराने के समय अचानक आकाश में इंद्रधनुष निकल आया था। लाल किले पर पहली बार तिरंगा 16 अगस्त 1947 की सुबह फहराया गया। उसके बाद से हर साल 15 अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। जब लाल किला बनवाया गया था तो उस समय ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया। इसी प्राचीर पर 90 बरस तक यूनियन जैक दिखाई दिया और यहीं पहली बार 1947 में स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। माननीय प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर पर आगमन, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने उनकी अगवानी की। The Prime Minister, having reached the first level of the ramparts, will now move to the second level in a short while and unfurl the national flag. And as the national anthem will play to the booming of the 21-gun salute, the gently floating petals from the unfurled flag would be symbolic of the many opportunities that come our way to ensure that governance always and every time foregrounds the values enshrined in our Constitution. Nation building can of course have varied lenses. The power of being one, the empowerment of everyone, or the exclusion of no one. Whichever way we look at it, all become important against the backdrop of National Day celebrations. Our 792 NCC cadets, to be precise, in different costumes of the different states they are from. In fact, all districts have sent NCC cadets here for this year's celebration. And eager anticipation in the dignitaries to await the Prime Minister's address, his speech, and what he is going to outline and foreground. And across the street, we have Chandni Chowk. और लाल किले के आसपास का वातावरण सर्वधर्म संभाव की अनूठी तस्वीर पेश करता है। हमारी कई खूबियों में से एक है हमारी विविधता। भारत की विविधता इसका सबसे खूबसूरत रंग है और इसमें हर रंग समाया है। लाल किले के सामने जामा मस्जिद जो भोजला पहाड़ी पर बनी है, आर्य समाज मंदिर, भारत की संस्कृति और परंपरा यही है कि दुनिया में सबके लिए उसके दरवाजे खुले हैं। गुरुद्वारा सीसगंज, खुला मन, विशाल हृदय, पूरी दुनिया, पूरी मानवता एक। गौरी शंकर मंदिर और जैन लाल मंदिर जिसमें पक्षियों का चिकित्सालय भी है। पूरी दुनिया, पूरी मानवता एक, ये मंत्र हम जानते हैं और जपते भी हैं। In fact, unity in diversity is very often used and has the danger of becoming a cliche. But in India, the endeavor is to always foreground it and actually become action in our everyday actions, in how we visualize our lives and how we visualize our role in society.
And today, for every Indian living not only across the length and breadth of this beautiful and diverse country, but also across the myriad time zones of our deeply interconnected world, it is a day of celebration. And yes, we celebrate many things. A determination to stay united and committed to the values which form the bedrock of our independence struggle. We also celebrate our coming together in the face of adversity. And now, surviving as an economy and growing very fast post the corona period. And of course, we celebrate our people. People who serve this vibrant, tolerant, complex, paradoxical and incredible nation. We have challenges to face today and many more to come. But that's the story of progress. As long as we are in it together, huge multitude of people over here watching the celebrations. अपार जनसमूह उमड़ा है आज के इस अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए। कहीं हाथों में तिरंगा है, कहीं मन में उमड़ती भावनाएं हैं और सबको प्रतीक्षा जब लाल किले की प्राचीर पर माननीय प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये ऐतिहासिक अवसर होता है और सब उत्सुक रहते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री किन योजनाओं और किन विचारों को वो देश के साथ साझा करेंगे। The Prime Minister has arrived for his speech. राष्ट्रध्वज को नमन करेंगे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर कमांडर आनंद विनायक अगाशी और दूसरे हेलीकॉप्टर में है विंग कमांडर Wing Commander TVR Singh, the Guard Commander of the National Flag Guard, giving the command, and the Guard marching away. और आकाश में Mi-17 हेलीकॉप्टर्स कार्यक्रम स्थल के नजदीक आते हुए और पुष्प वर्षा कर रहे हैं आकाश से। 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान करते हुए ये क्षण और उनके पीछे ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। Standing applause for the showering of flower petals. Smiles writ large on every face.
आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है। एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। यह राष्ट्र कृतज्ञ है उन वीरांगनाओं के लिए, रानी लक्ष्मीबाई हो, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी,
रानी गाइदिन्ल्यो, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, वेलू निचियार। भारत की नारी शक्ति क्या होती है, भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है, भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। आजादी का जंग भी लड़ने वाले और आजादी के बाद देश बनाने वाले भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम भारती, अनगिनत ऐसे महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। जब आजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। ये देश का सौभाग्य रहा है कि आजादी के जंग के कई रूप रहे हैं और उसमें एक रूप वो भी था जिसमें नारायण गुरु हो, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंदो हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हो, ऐसे अनेक महापुरुष हिंदुस्तान के हर कोने में, हर कान में भारत की चेतना को जगाते रहे, भारत को चेतनवंत बनाते रहे। अमृत महोत्सव के दौरान देश ने पूरे एक साल से हम देख रहे हैं, 2021 में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, स्मृति दिवस को संवारते हुए हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लक्षावधि कार्यक्रम किए हैं। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो, वो शायद पहली घटना हुई होगी। और हिंदुस्तान के हर कोने में उन सभी महापुरुषों को याद करने का प्रयास किया गया जिनको किसी न किसी कारणवश इतिहास में जगह न मिली या उनको भुला दिया गया था। आज देश ने खोज करके हर कोने में ऐसे वीरों को, महापुरुषों को, त्यागियों को, बलिदानियों को, सत्याग्रहियों को याद किया, नमन किया। अमृत महोत्सव के दरमियान इन सभी महापुरुषों को नमन करने का अवसर रहा। कल 14 अगस्त को भारत ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी बड़े भारी मन से हृदय के गहरे गांवों को याद करते हुए
उन कोटि कोटि जनों ने बहुत कुछ सहन किया था, तिरंगे की शान के लिए सहन किया था, मातृभूमि की मिट्टी से मोहब्बत के कारण सहन किया था और धैर्य नहीं खोया था। भारत के प्रति प्रेम ने नई जिंदगी की शुरुआत करने का उनका संकल्प नमन करने योग्य है, प्रेरणा पाने योग्य है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पिछले 75 साल में देश के लिए जीने मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले, देश के संकल्पों को पूरा करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के कर्मी हो, शासन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हो, जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के शासक प्रशासक रहे हो, राज्यों के शासक प्रशासक रहे हो, केंद्र के शासक प्रशासक रहे हो, 75 साल में इन सबके योगदान को भी आज स्मरण करने का अवसर है और देश के कोटि कोटि नागरिकों को भी, जिन्होंने 75 साल अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बीच भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने से जो हो सका वो करने का प्रयास किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई है। सुख दुख की छाया मंडराती रही है और इसके बीच भी हमारे देशवासियों ने उपलब्धियां की है, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है, संकल्पों को ओझल नहीं होने दिया है। और इसलिए, और ये भी सच्चाई है कि सैकड़ों सालों के गुलामी के कालखंड ने भारत के मन को, भारत के मानवीय की भावनाओं को गहरे घाव किए थे, गहरी चोटें पहुंचाई थी, लेकिन उसके भीतर एक जिद भी थी, एक जिजीविषा भी थी, एक जुनून भी था, एक जोम भी था। और उसके कारण अभावों के बीच में भी, उपहास के बीच में भी, और जब आजादी का जंग अंतिम चरण में था तो देश को डराने के लिए, निराश करने के लिए, हताश करने के लिए सारे उपाय किए गए थे। अगर आजादी आई, अंग्रेज चले जाएंगे तो देश टूट जाएगा, बिखर जाएंगे, लोग अंदर अंदर लड़ करके मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, अंधकार युग में भारत चला जाएगा। न जाने क्या क्या आशंकाएं व्यक्त की गई थी, लेकिन उनको पता नहीं था ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, इस मिट्टी में वो सामर्थ्य है जो शासकों से भी परे सामर्थ्य का एक अंतर प्रभार लेकर के जीता रहा है, सदियों तक जीता रहा है। और उसी का परिणाम है, हमने क्या कुछ नहीं झेला। कभी अन्न का संकट झेला, कभी युद्ध के शिकार हो गए, आतंकवाद ने डगर डगर चुनौतियां पैदा की, निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, छद्म युद्ध चलते रहे, प्राकृतिक आपदाएं आती रही, सफलता विफलता, आशा निराशा, न जाने कितने पड़ाव आए हैं, लेकिन
इन पड़ाव के बीच भी भारत आगे बढ़ता रहा। भारत की विविधता, जो औरों को भारत के लिए बोझ लगती थी, वो भारत की विविधता ही भारत की एक अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है, और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है, वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं, वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की यात्रा में आशाएं, अपेक्षाएं, उतार चढ़ाव सब कुछ के बीच में हर एक के प्रयास में हम जहां तक पहुंच पाए थे, पहुंचे थे। और 2014 में देशवासियों ने मुझे दायित्व दिया। आजादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल किले से देशवासियों का गौरवगान करने का अवसर मिला था। लेकिन मेरे दिल में जो भी आप लोगों से सीखा हूं, जितना आप लोगों को जान पाया हूं मेरे देशवासियों, आपके सुख दुख को समझ पाया हूं, देश की आशा अपेक्षाओं के भीतर वो कौन सी आत्मा बसती है, उसको जितना मैं समझ पाया हूं, उसको लेकर के मैंने अपना पूरा कालखंड देश के उन लोगों को एम्पावर करने में खपाया। मेरे दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, दिव्यांग हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, समुद्र का तट हो, हिमालय की कंदराएं हो, हर कोने में महात्मा गांधी का जो सपना था आखिरी इंसान की चिंता करने का, महात्मा गांधी जी की आकांक्षा थी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समर्थ बनाने की, मैंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया। और 8 साल का नतीजा और आजादी के इतने दशकों का अनुभव आज 75 साल के बाद जब अमृत काल की ओर कदम रख रहे हैं, अमृत काल की ये पहली प्रभात है, तब मैं एक ऐसे सामर्थ्य को देख रहा हूं और जिससे मैं गौरव से भर जाता हूं। देशवासियों, मैं आज देश का सबसे बड़ा सौभाग्य ये देख रहा हूं कि भारत का जनमन आकांक्षी जनमन है। एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत होती है और हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में, हर समाज के हर वर्ग में, हर तबके में आकांक्षाएं उफान पर है। देश का हर नागरिक चीजें बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है,
लेकिन इंतजार करने को तैयार नहीं है, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, कर्तव्य से जुड़ करके करना चाहता है, वो गति चाहता है, वो प्रगति चाहता है। 75 साल में संजोए हुए सारे सपने अपने ही आंखों के सामने पूरा करने के लिए वो लालायित है, उत्साहित है, उतावला भी है। कुछ लोगों को इसके कारण संकट हो सकता है, क्योंकि जब एस्पिरेशनल सोसाइटी होती है तब सरकारों को भी तलवार की धार पे चलना पड़ता है, सरकारों को भी समय के साथ दौड़ना पड़ता है। और मुझे विश्वास है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों न हो, हर किसी को इन एस्पिरेशनल सोसाइटी को एड्रेस करना पड़ेगा। उनकी आकांक्षाओं के लिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमारे इस एस्पिरेशनल सोसाइटी ने लंबे अरसे तक इंतजार किया है, लेकिन अब वो अपनी आने वाली पीढ़ी को इंतजार में जीने के लिए मजबूर करने को तैयार नहीं है। और इसलिए ये अमृत काल का पहली प्रभात हमें उस एस्पिरेशनल सोसाइटी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर लेकर के आई है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने पिछले दिनों देखा है, एक और ताकत का हमने अनुभव किया है, और वो है भारत में एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ है। एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण। आजादी के इतने संघर्ष में से जो अमृत था वो अब संजोया जा रहा है, संकलित हो रहा है, संकल्प में परिवर्तित हो रहा है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा जुड़ रही है और सिद्धि का मार्ग नजर आ रहा है। ये चेतना, मैं समझता हूं कि चेतना का जागरण, ये पुनर्जागरण, ये हमारी सबसे बड़ी अमानत है। और ये पुनर्जागरण देखिए, 10 अगस्त तक लोगों को पता तक नहीं होगा शायद कि देश के भीतर कौन सी ताकत है, लेकिन पिछले 3 दिन से जिस प्रकार से तिरंगे झंडे को लेकर के, तिरंगा की यात्रा लेकर के देश चल पड़ा है, बड़े बड़े सोशल साइंस के एक्सपर्ट्स वे भी शायद कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे भीतर के अंदर कितने, मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य है, एक तिरंगे झंडे ने दिखा दिया है। यह पुनर्चेतना, पुनर्जागरण का पल है। ये लोग समझ नहीं पाए हैं। जब देश जनता कर्फ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति है। जब देश ताली थाली बजा करके कोरोना वॉरियर के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाता है, तब चेतना की अनुभूति होती है। जब दिया जला करके कोरोना वॉरियर की शुभकामना देने के लिए देश निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति होती है। दुनिया कोरोना के कालखंड में वैक्सीन लेना या न लेना, वैक्सीन काम का है कि नहीं है, उस उलझन में जी रहा था। उस समय मेरे देश के गांव गरीब भी 200 करोड़ डोज दुनिया को चौंका देने वाला काम करके दिखा देते हैं। यही चेतना है, यही सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य ने आज देश को एक नई ताकत दी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीसरा एक महत्वपूर्ण सामर्थ्य मैं देख रहा हूं, जैसे एस्पिरेशनल सोसाइटी, जैसे पुनर्जागरण, वैसे ही आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों,
विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। हम जिस प्रकार से संकल्पों लेकर चल पड़े हैं, दुनिया इसे देख रही है और आखिरकार विश्व भी उम्मीदें लेकर के जी रहा है। उम्मीदें पूरे करने का सामर्थ्य कहां पड़ा है, वो उसे दिखने लगा है। मैं इसे त्रिशक्ति के रूप में देखता हूं, 3 सामर्थ्य के रूप में देखता हूं। और ये त्रिशक्ति है एस्पिरेशन की, पुनर्जागरण की और विश्व की उम्मीदों की। और इसे पूरा करने के लिए हम जानते हैं दोस्तों, आज दुनिया में एक विश्वास जगने में मेरे देशवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है। 130 करोड़ देशवासियों ने कई दशकों के अनुभव के बाद स्थिर सरकार का महत्व क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता का महत्व क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुनिया में किस प्रकार की ताकत दिखा सकती है, नीतियों में कैसा सामर्थ्य होता है, उन नीतियों पर विश्व का कैसे भरोसा बनता है, ये भारत ने दिखाया है और दुनिया भी इसे समझ रही है। और हम जब राजनीतिक स्थिरता हो, नीतियों में गतिशीलता हो, निर्णयों में तेजी हो, सर्वव्यापकता हो, सर्वसमावेशकता हो, तो विकास के लिए हर कोई भागीदार बनता है। हमने सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के हम चले थे, लेकिन देखते ही देखते देशवासियों ने सबका विश्वास और सबका प्रयास से उसमें और रंग भर दिए हैं। और इसलिए हमने देखा है हमारी सामूहिक शक्ति को, हमारे सामूहिक सामर्थ्य को हमने देखा है। आजादी का अमृत महोत्सव जिस प्रकार से बनाया गया, जिस प्रकार से हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान चल रहा है, गांव गांव के लोग जुड़ रहे हैं, कार सेवा कर रहे हैं, अपने प्रयत्नों से अपने गांव में जल संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चला रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे गरीबों के कल्याण का काम हो, देश आज पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गौरवगान करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे, तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तो साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा। और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, तो पहला प्राण, अब देश
बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, ये हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब सपने बड़े होते हैं, जब संकल्प बड़े होते हैं, तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है, शक्ति भी बहुत बड़ी मात्रा में जुट जाती है। अब कोई कल्पना कर सकता है कि देश 40-42 के कालखंड को याद कीजिए। देश उठ खड़ा हुआ था, किसी ने हाथ में झाड़ू लिया था, किसी ने तकली ली थी, किसी ने रेंटिया लिया था, किसी ने सत्याग्रह का मार्ग चुना था, किसी ने संघर्ष का मान चुना था, किसी ने क्रांति की वीरता का रास्ता चुना था। लेकिन संकल्प बड़ा था आजादी, और ताकत देखिए, बड़ा संकल्प था तो आजादी लेके रहे। हम आजाद हो गए। अगर संकल्प छोटा होता, सीमित होता, तो शायद आज भी संघर्ष करने के दिन चालू रहते। लेकिन संकल्प बड़ा था तो हमने हासिल भी किया। मेरे प्यारे देशवासियों, अब आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है, तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है। अपनी आंखों के सामने
और जो 20, 22, 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने हैं, मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50-55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा। विकास के हर पैरामीटर में हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को विकसित करेंगे। हमारे केंद्र में मानव होगा, हमारे केंद्र में के मानव की आशा आकांक्षाएं होगी। हम जानते हैं भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है। जब मैंने यहां स्वच्छता की बात कही थी मेरे पहले भाषण में, देश चल पड़ा, जिससे जहां हो सका स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा और गंदगी के प्रति नफरत एक स्वभाव बनता गया। यही तो देश है जिसने इसको करके दिखाया है और कर भी रहा है, आगे भी कर रहा है। यही तो देश है जिसने वैक्सीनेशन, दुनिया दुविधा में थी, 200 करोड़ का लक्ष्य पार कर लिया, समय सीमा में कर लिया, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के कर लिया। ये देश कर सकता है। हमने तय किया था देश को, खाड़ी के तेल पर हम गुजारा करते हैं, झाड़ी के तेल की ओर कैसे बढ़े। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का सपना बड़ा लगता था, पुराना इतिहास बताता था संभव नहीं है, लेकिन समय से पहले 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करके देश ने इस सपने को पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, 2.5 करोड़ लोगों को इतने कम समय में बिजली कनेक्शन पहुंचाना छोटा काम नहीं था, देश ने करके दिखाया। लाखों परिवारों के घर में जल से नल, नल से जल, नल से जल पहुंचाने का काम आज देश तेज गति से कर रहा है। खुले में शौच से मुक्ति भारत के अंदर आज संभव हो पाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, अनुभव कहता है कि एक बार हम सब संकल्प लेकर के चल पड़े तो हम निर्धारित लक्ष्यों को पार कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हो, देश में नए मेडिकल कॉलेज बनाने का इरादा हो, डॉक्टरों की तैयारी करवानी हो, हर क्षेत्र में पहले से गति बहुत बड़ी है। और इसलिए मैं कहता हूं, अब आने वाले 25 साल बड़े संकल्प के हो। यही हमारा प्राण, वही हमारा प्रण भी होना चाहिए। दूसरी बात मैंने कही है, उस प्राण शक्ति की मैंने चर्चा की है कि गुलामी की मानसिकता देश की सोचिए भाइयों, कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे? क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे? क्या 130 करोड़ का देश अपने मानकों को पार करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है? हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे, लेकिन सामर्थ्य के साथ खड़े होंगे, ये हमारा मिजाज होना चाहिए। हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमारे मन के भीतर दूर दूर 7 समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। और मैं आशा देखता हूं, जिस प्रकार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, जिस मंथन के साथ बनी है, कोटि कोटि लोगों के विचार प्रवाह को संकलित करते हुए बनी है, और भारत की धरती की जमीन से जुड़ी हुई शिक्षा नीति बनी। रसखस हमारी धरती के मिले हैं। हमने जो कौशल्य पर बल दिया है,
ये एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमें गुलामी से मुक्ति की ताकत देगा। हमने देखा है कभी कभी तो हमारी टैलेंट भाषा के बंधनों में बन जाती है। यह गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। हमें हमारे देश की हर भाषा पे गर्व होना चाहिए। वो हमें भाषा आती हो या ना आती हो, लेकिन मेरे देश की भाषा है, मेरे पूर्वजों ने दुनिया को दी हुई भेंट सौगात है, हमें गर्व होना चाहिए। मेरे साथियों, आज डिजिटल इंडिया का रूप हम देख रहे हैं, स्टार्टअप देख रहे हैं। कौन लोग हैं? ये वो टैलेंट है जो टियर 2, टियर 3 सिटी में किसी गांव गरीब के परिवार में बसे हुए लोग हैं। ये हमारे नौजवान हैं जो आज नई नई खोज के साथ दुनिया के सामने आ रहे हैं। गुलामी की मानसिकता हमें उसे तिलांजलि देनी पड़ेगी, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करना होगा। दूसरी एक बात जो मैंने कही, तीसरी मेरी प्राण शक्ति की बात है, वो है हमारी विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, तभी तो ऊंचा उड़ेंगे। और जब हम ऊंचा उड़ेंगे तो हम विश्व को भी समाधान दे पाएंगे। हमने देखा है जब हम अपनी चीजों पे गर्व करते हैं। आज दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा कर रही है, लेकिन जब होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करती है तो उसकी नजर भारत के योग पर जाती है, भारत के आयुर्वेद पर जाती है, भारत की होलिस्टिक लाइफस्टाइल के पर जाती है। ये हमारी विरासत है, हम जो दुनिया को दे रहे हैं। दुनिया आज उससे प्रभावित हो रही है। अब हमारी ताकत देखिए, हम वो लोग हैं जो प्रकृति के साथ जीना जानते हैं, प्रकृति को प्रेम करना जानते हैं। आज विश्व पर्यावरण की जो समस्याओं से जूझ रहा है, हमारे पास वो विरासत है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं के समाधान का रास्ता हम लोगों के पास है, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ है। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हम लाइफ मिशन की बात करते हैं, तो दुनिया का ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारे पास एक सामर्थ्य है। हमारा बड़ा धान, मोटा धान, मिलेट, हमारे यहां तो घर घर की चीज रही है। ये हमारी विरासत है। हमारे छोटे किसानों के परिश्रम से छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों में फलने फूलने वाली हमारे धान। आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट ईयर मनाने के लिए आगे बढ़ रही है। मतलब हमारी विरासत को आज दुनिया, हम उस पर गर्व करना सीखे। हमारे पास दुनिया को बहुत कुछ देना है। हमारे फैमिली वैल्यूज, विश्व के सामाजिक तनाव की जब चर्चा हो रही है, व्यक्तिगत तनाव की चर्चा होती है तो लोगों को योग दिखता है, सामूहिक तनाव की बात होती है तब भारत की पारिवारिक व्यवस्था दिखती है। संयुक्त परिवार की एक पूंजी सदियों से हमारी माताओं बहनों के त्याग बलिदान के कारण परिवार नाम की जो व्यवस्था विकसित हुई, ये हमारी विरासत है। इस विरासत पर हम गर्व कैसे करें? हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नारी तो नारायणी कहते हैं। हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। हम वो लोग हैं जो हर कंकर में शंकर देखते हैं। ये हमारा सामर्थ्य है। हर नदी में मां का रूप देखते हैं। पर्यावरण की इतनी व्यापकता, विशालता, ये हमारा गौरव। हम विश्व के सामने जब खुद गर्व करेंगे तो दुनिया करेगी। भाइयों बहनों, हम वो लोग हैं जिसने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। हम वो लोग हैं जो दुनिया को कहते हैं एकम सत विप्रहा बदो वदंती,
आज जो होलियर देन दाव का जो संकट चल रहा है, तुझसे बड़ा मैं हूं, ये जो तनाव का कारण बना हुआ है, दुनिया को एकम सत विप्रादा बहुधा वदंती का ज्ञान देने वाली विरासत हमारे पास है। जो कहते हैं सत्य एक है, जानकार लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, ये गौरव हमारा है। हम लोग हैं जो कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। कितनी बड़ी सोच है, जो ब्रह्मांड में है वो हर जीव मात्र में है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये कहने वाले हम लोग हैं। हम वो लोग हैं जितने दुनिया का कल्याण देखा है। हम जन कल्याण से जग कल्याण के राही रहे हैं। जन कल्याण से जग कल्याण की राह पर चलने वाले हम लोग जब दुनिया की कामना करते हैं तब कहते हैं सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। सबके सुख की बात, सबके आरोग्य की बात करना, ये हमारी विरासत है। और इसलिए हम बड़ी शान के साथ हमारी इस विरासत का गर्व करना सीखें। ये प्राण शक्ति है हमारी, जो हमें 25 साल के सपनों पूरा करने के लिए जरूरी है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे देशवासियों, एक और महत्वपूर्ण विषय है एकता, एकजुटता। इतने बड़े देश को, उसकी विविधता को हमें सेलिब्रेट करना है। इतने पंथ परंपराएं, ये हमारे आन बान शान है। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं है, सब बराबर है। कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। ये भाव एकता के लिए बहुत जरूरी है। घर में भी एकता की नींव तभी रखी जाती है जब बेटे बेटी एक समान हो। अगर बेटे बेटी एक समान नहीं होंगे तो एकता के मंत्र नहीं गूंज सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी हमारी एकता के लिए पहली शर्त। जब हम एकता की बात करते हैं, अगर हमारे एक ही पैरामीटर हो, एक ही मानदंड हो, जिस मानदंड को हम कहें इंडिया फर्स्ट, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं, जो बोल रहा हूं, इंडिया फर्स्ट के अनुकूल है, एकता का रास्ता खुल जाएगा। दोस्त, हमें एकता से बांधने का वो मंत्र है, हमें इसको पकड़ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम समाज के अंदर ऊंच नीच के भेदभावों से, मेरे तेरे के भेदभावों से हम सब की पुजारी बने। श्रमेव जयते कहते हैं हम, श्रमिक का सम्मान, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 5वीं प्राण शक्ति की बात करता हूं और वो 5वीं प्राण शक्ति है नागरिक का कर्तव्य। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है,
जिन जिन देशों ने कुछ अचीव किया है, व्यक्तिगत जीवन में भी जिसने अचीव किया है, कुछ बातें उभर करके सामने आती हैं। एक, अनुशासित जीवन। दूसरा, कर्तव्य के प्रति समर्पण। व्यक्ति की जीवन की सफलता हो, समाज की हो, परिवार की हो, राष्ट्र की हो, ये मूलभूत मार्ग है, ये मूलभूत प्राण शक्ति है। और इसलिए हमें कर्तव्य पर बल देना ही होगा। यह शासन का काम है कि बिजली 24 घंटे पहुंचाने के लिए प्रयास करे, लेकिन ये नागरिक का कर्तव्य है कि जितनी ज्यादा यूनिट बिजली बचा सकते बचाएं। हर खेत में पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का प्रयास है, लेकिन पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी बचाते हुए आगे बढ़ना, मेरे हर खेत से आवाज उठनी चाहिए। केमिकल मुक्त खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, यह हमारा कर्तव्य है। साथियों, चाहे पुलिस हो या पीपल हो, शासक हो या प्रशासक हो, ये नागरिक कर्तव्य से कोई अछूता नहीं हो सकता है। हर कोई अगर नागरिक के कर्तव्यों को निभाएगा तो मुझे विश्वास है कि हम इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में समय से पहले सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज महर्षि अरविंदो की जन्म जयंती भी है। मैं उस महापुरुष के चरणों में नमन करता हूं, लेकिन हमें उस महापुरुष को याद करना होगा जिन्होंने कहा था, स्वदेशी से स्वराज, स्वराज से सुराज। ये उनका मंत्र है। हम सबको सोचना होगा कि हम कब तक दुनिया के और लोगों पर निर्भर रहेंगे। क्या हमारे देश का अन्न की आवश्यकता हो, हम आउटसोर्स कर सकते हैं क्या? जब देश ने तय कर लिया कि हमारा पेट हम खुद भरेंगे, देश ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? एक बार संकल्प लेते हैं तो होता है दोस्त। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत, ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज के हर इकाई का ये दायित्व बन जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत, ये सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। मेरे साथियों, आज जब ये बात हमने सुनी, आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं दी? और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया है, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है दोस्तों। उनको आज मैं सलाम करता हूं, क्योंकि सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के चलता है। मौत और जिंदगी के बीच में कोई फासला ही नहीं होता है, और तब बीच में वो डट करके खड़ा होता है। और वो मेरा सेना का जवान तय करे कि हम
300 ऐसी चीजों आप लिस्ट करते हैं जो हम विदेश से नहीं लाएंगे हमारे देश की। ये संकल्प छोटा नहीं है। मुझे इस संकल्प में भारत के आत्मनिर्भर भारत के उज्जवल भविष्य के वो बीज मैं देख रहा हूं जो इस सपने को वटवृक्ष में परिवर्तित करने वाले हैं। सैल्यूट, सैल्यूट मेरे सेना के अधिकारियों को, सैल्यूट। मैं मेरे छोटे छोटे बालकों को 5 साल 7 साल की आयु के बालक, उनको भी सैल्यूट करना चाहता हूं, उनको भी सलाम करना चाहता हूं। जब देश के सामने चेतना जगी, मैंने सैकड़ों परिवारों से सुना है 5-5, 7 साल के बच्चे घर में कह रहे हैं कि अब हम विदेशी खिलौने से नहीं खेलते। 5 साल का बच्चा घर में विदेशी खिलौने से नहीं खेलेंगे। ये जब सब संकल्प करता है ना, तब आत्मनिर्भर भारत उसकी रगों में दौड़ता है। आप देखिए, पीएलआई स्कीम 1 लाख करोड़ रुपया दुनिया के लोग हिंदुस्तान में अपना नसीब आजमाने आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो, आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा। दोस्तों, आज हमारी मेट्रो कोचि, हमारी वंदे भारत ट्रेन विश्व के लिए आकर्षण बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें आत्मनिर्भर बनना है हमारे एनर्जी सेक्टर में। हम कब तक एनर्जी के सेक्टर में किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे? और हमें सोलार का क्षेत्र हो, विंड एनर्जी का क्षेत्र हो, रिन्यूएबल के और भी जो रास्ते हो, मिशन हाइड्रोजन हो, बायोफ्यूल की कोशिश हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाने की बात हो, हमें आत्मनिर्भर बन करके इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज प्राकृतिक खेती भी आत्मनिर्भर का एक मार्ग है। फर्टिलाइजर से जितनी ज्यादा मुक्ति, आज देश में नैनो फर्टिलाइजर के कारखाने की नई आशा लेकर के आए हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती आत्मनिर्भर को ताकत दे सकती है। आज देश में रोजगार के क्षेत्र में ग्रीन जॉब के नए नए क्षेत्र बहुत तेजी से खुल रहे हैं। भारत ने नीतियों के द्वारा स्पेस को खोल दिया है। ड्रोन की बहुत दुनिया में सबसे प्रगतिशील पॉलिसी लेकर के आए हैं। हमने देश के नौजवानों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्राइवेट सेक्टर को भी आह्वान करता हूं, आइए हमें विश्व में छा जाना है। आत्मनिर्भर भारत का यह भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में भारत पीछे नहीं जाएगा। हमारे लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, हमें उस करके हमें दुनिया में जाना होगा। हमें स्वदेशी पर गर्व करना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम बार बार
लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है। इनोवेशन की ताकत देखिए, आज हमारा यूपीआई भीम, हमारा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक की दुनिया में हमारा स्थान, आज विश्व में रियल टाइम 40% अगर डिजिटल फाइनेंशियल का ट्रांजैक्शन होता है तो मेरे देश में हो रहा है। हिंदुस्तान ने ये करके दिखाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है। आज मुझे खुशी है, हिंदुस्तान के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में विकसित हो रहे हैं। गांव के नौजवान बेटे बेटियां कॉमन सर्विस सेंटर चला रही हैं। देश गर्व कर सकता है कि गांव के क्षेत्र में 4 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर का तैयार होना और सारी सेवाएं लोग गांव के लोग उनके यहां लेने के लिए आदी बन जाए, ये अपने आप में टेक्नोलॉजी हब बनने की भारत की जो ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट है, जो सेमीकंडक्टर की ओर हम कदम मांड रहे हैं, 5G की ओर कदम मांड रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा रहे हैं, ये सिर्फ आधुनिकता की पहचान ऐसा नहीं है। 3 बड़ी ताकतें इसके अंदर समाहित है। शिक्षा में आमूलचूल क्रांति, ये डिजिटल माध्यम से आने वाली है। स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल क्रांति डिजिटल से आने वाली है। कृषि जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल से आने वाला है। एक नया विश्व तैयार हो रहा है। भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए, और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, ये डेकेड मानव जात के लिए टेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है। भारत के लिए तो ये टेकेड जिसका मन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आईटी की दुनिया में भारत ने अपना एक लोहा बनवा लिया है, तो ये टेकेड का सामर्थ्य भारत के प्यास है। हमारा अटल इनोवेशन मिशन, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर, हमारे स्टार्टअप एक नया पूरा क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर लेकर के आ रहे हैं। स्पेस मिशन की बात हो, हमारा डीप ओशन मिशन की बात हो, समुद्र की गहराई में जाना हो या हमें आसमान को छूना हो, ये नए क्षेत्र हैं जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बात को न भूलें, और भारत ने सदियों से देखा हुआ है, जैसे देश में कुछ नमूना रूप कामों की जरूरत होती है, कुछ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की जरूरत होती है, लेकिन साथ साथ धरातल पर मजबूती बहुत आवश्यक होती है। भारत की आर्थिक विकास की संभावनाएं धरातल की मजबूती से जुड़ी हुई है, और इसलिए हमारे छोटे किसान, उनका सामर्थ्य, हमारे छोटे उद्यमी, उनका सामर्थ्य, हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, रेहड़ी पटरी वाले लोग, घरों में काम करने वाले लोग, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग, बस सेवाएं देने वाले लोग, ये समाज का जो सबसे बड़ा तबका है, इसका सामर्थ्यवान होना भारत के सामर्थ्य की गारंटी है। और इसलिए हमारे आर्थिक विकास की ये जो मूलभूत जमीनी ताकत है,
उस ताकत को सर्वाधिक बल देने की दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पास 75 साल का अनुभव है। हमने 75 साल में कई सारी सिद्धियां भी प्राप्त की हैं। हमने 75 साल के अनुभव में नए सपने भी संजोए हैं, नए संकल्प भी लिए हैं। लेकिन अमृतकाल के लिए हमारे मानव संसाधन का ऑप्टिमम आउटकम कैसे हो, हमारी प्राकृतिक संपदा का ऑप्टिमम आउटकम कैसे हो, इस लक्ष्य को लेकर के हमें चलना है। और तब मैं पिछले कुछ सालों से अनुभव से कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा आज अदालत के अंदर देखिए, हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति किस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में देखिए, हमारी नारी शक्ति किस मिजाज से, समर्पित भाव से अपनी गांवों की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस में देखें, हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेलकूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं, बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। और इसलिए ये सारे हिसाब किताब से ऊपर है, सारे आपके पैरामीटर से अतिरिक्त है। हम इस पर जितना ध्यान देंगे, हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा करके देगी। वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाएगी। इस अमृत काल में जो सपने पूरे करने में जो मेहनत लगने वाली है, अगर हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी, व्यापक रूप से जुड़ जाएगी, तो हमारी मेहनत कम होगी, हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी, हमारे सपने और तेजस्वी होंगे, और ओजस्वी होंगे, और दैदीप्यमान होंगे। और इसलिए आइए साथियों, हम जिम्मेवारियों को लेकर आगे बढ़े। मैं आज भारत के संविधान के निर्माताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, तो उन्होंने जो हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिया है, उसके स्पिरिट को बनाते हुए, उसकी भावनाओं का आदर करते हुए, हम कंधे से कंधा मिला करके इस अमृत काल में चलेंगे, तो सपने साकार होकर के रहेंगे। कार्यक्रम भिन्न हो सकते हैं, कार्यशैली भिन्न हो सकती है, लेकिन संकल्प भिन्न नहीं हो सकते। राष्ट्र के लिए सपने भिन्न नहीं हो सकते। आइए हम एक ऐसे युग के अंदर आगे बढ़े। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, केंद्र में हमारे विचार की सरकार नहीं थी, लेकिन मेरे गुजरात में हर जगह पे मैं एक ही मंत्र लेके चलता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, भारत का विकास हम कहीं पर भी हो, हम सबके मन मस्तिष्क में रहना चाहिए। हमारे देश के कई राज्य हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका अदा की है, नेतृत्व किया है, कई क्षेत्रों में उदाहरण काम किए हैं। ये हमारे फेडरलिज्म को ताकत देते हैं। लेकिन आज समय की मांग है कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। हमें विकास की स्पर्धा की जरूरत है। हर राज्य को लगना चाहिए वो राज्य आगे निकल गया, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा।
उसने ये 10 अच्छे काम किए हैं, मैं 15 अच्छे काम करके दिखाऊंगा। उसने 3 साल में पूरा किया है, मैं 2 साल में करके दिखाऊंगा। हमारे राज्यों के बीच में, हमारी सर्विस, सरकार की सभी इकाइयों के बीच में वो स्पर्धा का वातावरण चाहिए जो हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास करे। मेरे प्यारे देशवासियों, इस 25 वर्ष का अमृतकाल के लिए जब हम चर्चा करते हैं, तब मैं जानता हूं चुनौतियां अनेक है, मर्यादाएं अनेक हैं, मुसीबतें भी है, बहुत कुछ है। हम इसको कम नहीं आंकते हैं, रास्ते खोजते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 विषयों को तो मैं यहां आज चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा अनेक विषयों पर हो सकती है, लेकिन मैं अभी समय की सीमा के कारण 2 विषयों पर चर्चा करता हूं। और मैं मानता हूं हमारे इन सारी चुनौतियों को कारण, विकृतियों के कारण, बीमारियों के कारण इस 25 साल का अमृतकाल, उस पर शायद अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए, तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा, आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान मान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है,
व्यक्त भी होती हैं, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। हमने देखा पिछले दिनों खेलों में, ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजेवाद की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक, उस देश तक तो पहुंच जाते थे। जीत हार से उन्हें लेना देना नहीं था, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्ण पारदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा, आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में
भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है और परिवारवाद से मुक्ति होती है, भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है, तो ये नतीजे आते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये ठीक है, चुनौतियां बहुत है। अगर इस देश के सामने करोड़ों संकट है तो करोड़ों समाधान भी है, और मेरा 130 करोड़ देशवासियों पर भरोसा है। 130 करोड़ देशवासी निर्धारित लक्ष्य के साथ, संकल्प के प्रति समर्पण के साथ, जब 130 करोड़ देशवासी एक कदम आगे रखते हैं ना, तो हिंदुस्तान 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। इस सामर्थ्य को लेकर के हमने आगे बढ़ना है। इस अमृत काल में, जब ये अमृत काल की पहली बेला है, पहली प्रभात है, हमें आने वाले 25 साल को एक पल भी भूलना नहीं है। एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, और तभी आजादी के दीवानों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तभी 75 साल तक देश को यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, उनका पुण्य स्मरण हमें काम आएगा। मैं देशवासियों से आग्रह करते हुए, नई संभावनाओं को संजोते हुए, नए संकल्पों को पार करते हुए, आगे बढ़ने का विश्वास लेकर के आज अमृत काल का आरंभ करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अब अमृत काल की दिशा में पलट चुका है, आगे बढ़ चुका है। तब इस अमृत काल में सबका प्रयास अनिवार्य है, सबका प्रयास ही परिणाम लाने वाला है। टीम इंडिया की भावना ही देश को आगे बढ़ने वाली है। 130 करोड़ देशवासियों की ये टीम इंडिया एक टीम के रूप में आगे बढ़ करके सारे सपनों को साकार करेंगे। इसी पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, वंदे, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश से आलोकित आपके संबोधन के लिए और भारत की नई जय यात्रा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi addressing the nation, talking about the government, its policies and what it has in store. And here the pale blue of a monsoon sky, seeing the rising and collective aspirations of a nation. देश के लिए विजन भी और नए डिसीजन भी, इन महत्वपूर्ण संबोधनों के दूरगामी प्रभाव हम सब ने देखे हैं। हालात बदलने के लिए सोच बदलना बेहद जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक संबोधन लाल किले की प्राचीर से The Prime Minister takes his leave.
Ceremonies conclude, but celebrations continue. The most powerful way for us to celebrate, of course, is to live the values that democracy stands for. And as we step into the 76th year of our independence, the completed figure of 75 leaves us with a responsibility greater than ever before. Have we achieved what we envisioned for ourselves? If we've made progress, have we managed to ensure that the most needy have also been included? If we are achieving scale in implementation, what is the quality that we have been able to deliver? Times are changing very rapidly. Relevance of what we have achieved to the advancements made have never been so critical as it is today. Agility, mobility, flexibility and transferability. These are the abilities most in demand today, and as a fast developing economy, we need to constantly adapt. लाल किले पर मुख्य समारोह में राष्ट्र को संबोधित करने के पश्चात अब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से प्रस्थान कर रहे हैं। आज यहां चारों ओर तिरंगे का रंग छाया है। देश के नगर नगर, गांव गांव तिरंगे से सजे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण एक ऐसा खास मौका होता है जिसमें देश की दिशा की झलक भी होती है और महत्वपूर्ण नीतियों की शुरुआत भी। प्रजातंत्र में संवाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है और पूरा देश इस अवसर की प्रतीक्षा करता है। And this is the outer side of the Lahori gate. The Prime Minister with his carcade will soon exit from this gate. These are two mechanized elephants as a part of the special decorations today, and this is a zoom out shot of the same place. Doordarshan's specially positioned cameras to give you the best angles possible, the best experience of viewing this celebration. India is like no other land in the world. It harbors so many creeds since time immemorial. And today we have evolved into a multifaceted nation whose character has different tones, but the ultimate composition is forever one. And days like today, when the Prime Minister of the nation addresses the nation from the ramparts of Red Fort, we resolve to rededicate ourselves to the country. इस बार लाल किले और आसपास की जो सजावट है वो नए आयाम छूती हुई। हमारी आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्र को संबोधित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। इस बार का समारोह और भी यादगार इसलिए बन गया है कि जन जन की इसमें भागीदारी है। लोगों ने इस बार अपने घरों पर तिरंगे फहराए हैं, तिरंगा यात्राएं निकाली हैं, उनमें शामिल हुए हैं। दर्शक दीर्घाओं के निकट प्रधानमंत्री की कार धीमी होते हुए As the Prime Minister's carcade takes the gentle curve around the moat and reaches the front part of the fort, we can see it coming to a halt. It has become customary also for the Prime Minister to go and meet these young people here. India, a young nation, maybe old in its wisdom, but a lot to learn, and very, very young, waiting to reap till 2030 the democratic dividend. And these are the 792 NCC cadets being applauded and lauded by Prime Minister Narendra Modi. प्रधानमंत्री ने तालियां बजाकर स्वागत किया है इन तमाम एनसीसी कैडेट्स का, जिन्होंने आज भारत का मानचित्र बनाया है। एक अलग तरह की ऊर्जा का एहसास इन युवाओं को। कौन नहीं चाहता कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री के नज़दीक पहुंचें, और प्रधानमंत्री स्वयं इनके नज़दीक आते हैं और उनको ये एहसास कराते हैं कि उन्हें यानी युवाओं को
आने वाले 25 वर्षों में जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष होंगे, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। A very special moment for all these young boys and girls, young adults coming from different parts of the country. NCC cadets invited from all the districts in the country, seeing their Prime Minister up close as he literally and figuratively takes a trip around the country. बिल्कुल ऐसा लगता है एक एक राज्य से गुजरते हुए प्रधानमंत्री सबसे मिलते हुए पूरे देश का भ्रमण सांकेतिक रूप में, और जबरदस्त उत्साह यहाँ पर युवाओं में, युवा शक्ति को जागृत करने का और जीवन भर उनकी यादों में संजो कर रखने का ये अवसर। प्रधानमंत्री स्वयं इनके बीच। Infectious smiles and infectious energy. Pictures being captured for posterity. I think a memorable moment not only for all these young people here, but also for the Prime Minister. His ability to connect with them, to collect their wishes, have conversations with them, and we can see that interaction. Pure delight writ large on their faces. प्रधानमंत्री जिस भाव से इन युवाओं से मिले हैं और जब भी यहाँ आते हैं और इन छात्रों और युवाओं से मिलते हैं, उनके लिए एक कभी न भूलने वाला अवसर बन जाता है। शायद कुछ अलग तरह की गतिविधि। So the energy being translated literally into dance. The Bhangra, the Gidda, folk dances from the land of Punjab. I think famous the world over. हाल ही में प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव की बैठक में कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव युवाओं के लिए संस्कार उत्सव है। ये देश के लिए योगदान करने के लिए उन्हें कभी न कम होने वाले जुनून से भर देगा और उनमें उत्साह और ऊर्जा का संचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री The balance between the principles of change and continuity, very, very visible in the country. And here, these are the young people who are going to bring about change and carry on continuity. Change which brings in fresh ideas, helps us keep pace with the times and takes into account newer sensibilities and needs, and continuity on the other hand, allowing us to be rooted and strong with a sense of belonging to something bigger than us. Yes, and that is India. And at the historic Red Fort, which stands regal and strong as a symbol of continuity, changes in our 76th Independence Day celebrations are evident at the venue. एक एक करके देश के सभी राज्यों से गुजर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो मानचित्र बनाया है एनसीसी कैडेट्स ने, एक नया विचार, नई तस्वीर, नए रंग और भारत की संस्कृति की झलक एक बार फिर। Such excitement, adjusting off the foot bells. There starts the dance.
हर राज्य अपने पारंपरिक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गुजरात का गरबा, युवाओं के बीच में उत्साह भी, आश्वासन भी, आशीर्वाद भी। युवा पीढ़ी को और क्या चाहिए? They say touch has a way of lingering long before the image is gone. And yes, these are touching moments indeed. India is not just a nation state, it has always stood out as an example of making the seemingly impossible become possible. Tradition, philosophy, ideas and growth all have coexisted and co-flowered with a seeming randomness but larger design. And here we see a larger design. Tolerance, inclusivity and respect have been valued and incorporated in the Constitution given to us by our visionary leaders. In fact, dissent has made us progress, collaboration has helped us grow, and belief in our nationhood has kept us together. And this is nationhood expressing itself. बहुत व्यस्त होते हुए भी प्रधानमंत्री जब युवाओं के बीच हैं तो एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होने देते कि इतनी व्यस्तता में से भी जो समय निकाल रहे हैं वो इन युवाओं के लिए यादों में संजोने जैसा, बहुत सहज रूप से और इतनी देर तक इन युवाओं के साथ समय गुजारने के पश्चात अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। A satisfied Prime Minister, a satisfying conclusion and a happy conclusion to a joyous celebration as India steps into its 76th year of independence. अलग अलग दीर्घाओं में जो लोग यहाँ मौजूद, उनमें उत्साह, हम संकल्प से सिद्धि की भावना के साथ अमृतकाल से गुजर रहे हैं। देश के युवाओं में नया जोश है, उनकी आंखों में नए सपने हैं, बच्चों के सामने प्रेरणादायी कहानियां हैं। अगले 25 वर्षों में देश को सफलता के शिखर पर पहुंचाने का ये अमृतकाल है। हर जन, हर मन देश की माटी का कण कण देख रहा है यही स्वप्न। ये संकल्प हमें सिद्ध करना है, इसे हम मिलकर सिद्ध करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। वंदे Good morning to everyone, and a very, very happy 75th Independence Day. What a momentous occasion for us to be bringing this live coverage to you. Our hearts absolutely swelling with pride. The Prime Minister
putting the agenda for the country for the next 25 years in a very heartfelt address where he touched the main points. He was not going into micro of schemes, but if there was a speech that really put the large agenda, the 5 points that the country should consecrate itself to for the next 25 years, addressing the next generation, talking about the target for India at 2047. We have a lot of ground to cover while analyzing the Prime Minister's speech. But we are also on this wonderful, wonderful morning going to be going across live to our reporters in different locations. And we have 3 locations live already. And we have Shawan, who is with the Fire and Fury Corps, and he is there at Leh. We have with us Alisha, who is reporting from Goa's naval area, that is at the INS Hansa, where the homage is being paid to the martyrs at the war memorial there. And of course, we have Varshini, who is reporting today from the cellular jail at Port Blair. So we're going to go to all these locations only to give you as wide a sense as possible of our people across this entire country are coming together to celebrate Har Ghar Tiranga today. First across to you, Shawan. Shawan is, ladies and gentlemen, at the Hall of Fame in Leh, where the flag is being hoisted in the presence of the Lieutenant Governor, top army officers, and there's a museum which is being constructed by the Indian Army there in memorial of the Indian soldiers who laid down their lives in the Indo-Pak wars. So Shawan, first, over to you. Over to you, Shawan, in Leh. Well, in fact, Arnab, this is undoubtedly a very proud moment for all Indians, because where I'm reporting from is, remember, the supreme sacrifices that have been made by our soldiers. In fact, the place that I'm standing right now holds a lot of significance, because what you see is the Hall of Fame, which essentially means that all the fallen soldiers right from 1947 till date have been remembered here. And today, in a short while from now, the wreath laying ceremony is going to take place, where Lieutenant Governor R.K. Mathur will be present. Along with him also would be the 14 Corps Commander Lieutenant General Anindya Sen-Gupta, who's going to be here. And after that, this is where we're given to understand the signature table, where they're going to be here for a short while. What's very important is that this particular sector, Arnab, has been extremely crucial for India, especially given the fact that in the last 1 year, we have been able to see right in the eye of the Chinese only because of the supreme sacrifice that has been made by this particular sector. The only reason why in a short while from now you would see this particular area, if I can ask Surendra Rawat to just show you the stone here, inscribed by the names of all our fallen soldiers, the supreme sacrifices that they have made, and the treacherous place that they have been operating from. Let's not forget that this is perhaps one of the most difficult sector that our soldiers have been operating, and not to forget the highest battlefield, which is not very far away from where we are basically broadcasting. All that put together, this sector becomes extremely crucial. And perhaps on the 76th Independence Day, today, for every Indian, they should remember that if tonight we go back to sleep peacefully, it's because of these very soldiers that you see behind me, who have been protecting our borders. And this very border, let's not undermine the fact, has been one of the most challenging in the history of independent India, Arnab. Absolutely, Shawan. That's Shawan. He's live from Leh, and the strategic significance. If I can just go full frame to those pictures coming in from Leh, the strategic significance of that event that Shawan is reporting live from is so important, because over the last couple of years, the way the Indian Army has really proved its strength and shown itself more than capable of handling every untoward incident, every challenge that is thrown at us from that location. Ladies and gentlemen, the Hall of Fame there contains weapons from the Kargil War, along with the various arms and ammunition captured by the Indian Army during the war. So that is Shawan, and when that event goes live in some time, we'll be going across straight. So ladies and gentlemen, we hope you stay with us today. Also joined this morning, I have with us Anupam Kher, well-known actor, I would say a very proud citizen
of this country, like all of us are this morning. Anupam Kher, good morning. Good morning to you, and a very happy Independence Day to you. And I have also with us General KJS Dhillon. General KJS Dhillon, having served the country gallantly through many years, is someone I consider one of the foremost voices, the best defense experts of this country. So good morning to you as well, General Dhillon. Great to have you with us. I'll be coming across to both of you, gentlemen, in just a while, but I can't keep Alisha waiting. And Alisha, ladies and gentlemen, is reporting from Goa's naval area, and that is where there is going to be a parade at the INS Hansa. Homage will be paid to the martyrs by the wreath laying at the war memorial at INS Gomantak. So over to you to give us a flavor of what's happening there. Over to you, Alisha. Well, yes, Arnab, I'm reporting from INS Hansa Air Base, which is known to be India's one of the biggest naval air base. And we are here at the parade has already been done by the Indian Navy. And importantly, we're talking about the Hansa because, as I already mentioned, that it is known to be India's biggest naval air base. And the military air base has a civil enclave that operates as Dabolim Airport. And rather happy faces, because today it's not only me, Arnab, but every Indian has breathed the air of freedom because of the efforts of a great freedom fighter. And which is why we know even after that at this parade there will be a homage to our martyrs at Writhaling at War Memorial, that is in INS Gomantak, and the War Memorial at Indian naval ship Gomantak was constructed in memory of 7 young gallant sailors and other personnel who laid down their lives on 19th December 1961 in the Operation Vijay, undertaken by the Indian Navy for liberation of Anjadev Island and territory of Goa, Daman and Diu from the Portugal rule. Yes. So we are reporting live from the INS Hansa. The parade has already been done, and from some time from now there will be the homage to the martyrs by laying at War Memorial in INS Gomantak. Yes, Alisha, we will be coming to you, and today is a wonderful day to remember every achievement. We talk about the many challenges that this country faces. This country faces and will continue to face many challenges, but sometimes we must also look back and celebrate the many achievements of this country. The achievements of this country in science, technology, overcoming natural disasters, as the Prime Minister said, turning on and making sure that we actually use our human capital, transformation of the Indian economy, the challenges that we've had in the security sector. There's so many things to celebrate, and my friend Gaurav Arya joins me this morning. So Gaurav, to you also, happy Independence Day and a very, very good morning to you. First to Anupam Kherji. Anupam Kherji, you must have heard the Prime Minister's speech. I was transfixed. Because this was an agenda for the next 25 years. It was a positive speech. He talked about going back to our roots, but more importantly, he brought in us that absolutely positive feeling that we can, if we come together, turn things around even more, go into fifth gear as it were, and make this country a developed country sooner than people had hoped or people were imagining. What do you think, Anupam Kherji? What was your takeaway? अर्नब, पहले तो सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। और मैं बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूं कि आपने मुझे चुना है जनरल धिलन के साथ और मेजर गौरव आर्य के साथ। ऑफ कोर्स आप तो हैं ही, और इट्स अ वेरी वंडरफुल फीलिंग दैट आई एम अमंग these wonderful people who I have greatest respect for. I think the Prime Minister's speech was phenomenal in terms of it, जो उन्होंने जोश भरा है। You see, हमने बहुत सारी स्पीचेस बहुत सारे पुराने सालों में, मैं देश से 8 साल छोटा हूँ। मैं 1955 में पैदा हुआ था और देश आज़ाद हुआ था। देश पैदा हुआ था 1947 में। तो मैं और देश साथ साथ बड़े हुए हैं। और आप मुझे इसका बड़ा भाई कह लो, देश का छोटा भाई कह लो, या कुछ भी कह लो, तो हमने सारे दुख सुख सब साथ में देखे हैं। 62 का वॉर, 65 का वॉर, 71 का वॉर, ये सब साथ में देखा है। लेकिन आज जिस शिद्दत के साथ प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, उसमें एक 70 साल के जवान को, मैं अपने आप को कहता हूँ, एक फिर से दोबारा से एक जोश भरा है। और वो जोश दिल से निकलता है और दिल तक पहुँचता है। प्रधानमंत्री की जो स्पीच है वो दिल से निकलती है और वो दिल तक पहुंचती है, हर हिंदुस्तानी के दिल तक पहुंचती है। उन्होंने एस्पिरेशनल इंडिया की बात की, उन्होंने आने वाले जो स्त्री के नारी शक्ति की बात की, उन्होंने जो स्पोर्ट्स पीपल के बारे में बात किया, उन्होंने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाई,
वो हर बार एक नई चीज लेकर आते। उन्होंने जो हर कस्बे में, हर डिस्ट्रिक्ट में 75 कुएं बनाने की बात की, वो बहुत ही वो 100% जब हम 100वां वर्ष मनाएंगे स्वतंत्रता का तो हम उस तक पहुंचाएंगे। और उनका कनेक्ट जो है वो यूथ के साथ इतना जबरदस्त है कि मुझे पूरा यकीन है कि जो उन्होंने जो बात की, जो आज के जो 25 साल के नौजवान हैं या नवयुवतियां हैं, वो जब 2047 में जाकर 100 साल पूरे हो जाएंगे तो वो वही नागरिक 50 साल के होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि देश जो है उन्नति की पराकाष्ठा पे पहुंचेगा। It is such a wonderful thing to be listening to the Prime Minister because he connects with people and he speaks about the future of India, he speaks about the problems in India, he speaks about what we need to overcome, and he infuses this amazing feeling of patriotism and the welfare of the country, welfare of the nation. That is what is most amazing thing about it. And I have never seen something like this happening in the past. एक रटे रटाए तरीके से वो शिद्दत से आते हैं। किस तरह से वो एनसीसी के कैडेट्स के साथ बातचीत की, किस तरह से उन्होंने पंजाब के या गुजरात के लोगों को उन कैडेट्स को डांस करने को बोला। मुझे लगता है कि वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट है उनके लिए, और वो मोमेंट आगे जाकर वो ये स्नोबॉल करेगा, स्नोबॉल करता हर इंसान को। जो उन्होंने एस्पिरेशन और चेतना की बात की, मुझे लगता है वो कमाल की बात है। और भ्रष्टाचार 100% हम लोगों को, हम नागरिकों को उनका साथ देना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यू नो द बिगर थिंग, ये तो बिल्कुल आपने जो कही पूरी तरह से एग्री करता हूं, मगर एक और बात है जो उन्होंने चंद मिनटों के अंदर उन्होंने जो कही कि नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का अवसर है हमारा, और उसको लेके जो केंद्र बिंदु है जिनको उन्होंने 5 प्रण कहा, अनुपम खेर जी 5 प्रण, ये गौरव आर्य आपने सुना होगा, 5 प्रण की बात कही, विकसित भारत की बात कही। और सबसे बड़ी बात जो कही जिस पर हमें आज सोचनी चाहिए गौरव, वी मस्ट थिंक अबाउट इट, जब उन्होंने कहा कि आज किसी भी कोने में गुलामी का एक भी अंश बचना नहीं देना है हमें। बिल्कुल, वी मस्ट नॉट बी चेन्ड by all the shackles of colonialism, by all the shackles of slavery. We have to free ourselves from it. And he talked about the national education policy being a step in this path. But that was very important because at the core, he's inspiring the country. He's saying in order to move ahead, you must unchain yourself from all the negativities of the past, whether that is the colonial mindset or whether, for that matter, Gaurav, it is corruption. I think he addressed the broad theme. What did you think? What are your first thoughts, Gaurav? Arnav, first of all, thank you for inviting me on such an illustrious panel. We have Anupam Kherji, we have General K.J. Dhillon, both of whom I look up to and hugely admire. Arnav, I think what the Prime Minister said, if I may use a term that you use very frequently, and if I may expand it a little further, de-Lutinize our minds. I think that is what he was saying. That get rid of mental slavery. Physical slavery we have achieved, but mental slavery is still there, and that is something which we need to get rid of. And one of the points that he mentioned in the 5, which is very close to my heart, and I've written about it earlier also, Arnab, is the fact that, duties of citizens. So far, we have been speaking on fundamental rights, which are extremely important. There is no doubt. They're extremely important. But what about our duties? What can I do for the country? So far, we have only been asking what the country can do for me, or my family, or my people. But what can we as citizens do for our country? Where is that sense of sacrifice? Where is that sense of giving? Where is the sense of saying that my country is bigger than me, my country is bigger than my family, and I will stand up for the country and be counted? Arnab, I think this was one of the points. He mentioned 5 points, He mentioned resolve of a developed India. Erase all traces of servitude, be proud of our legacy, strength of unity, and then duties. Duties of citizens, and he said including the Prime Minister and the Chief Minister. And I think this one point of duty stood out for me, Arnab. Absolutely it did. And it's all across. The Prime Minister did not avoid the issue of individual responsibility. The Prime Minister spoke, he said, नागरिकों का जो कर्तव्य है. He spoke about citizen responsibility. And in fact, he passed on the responsibility to the citizen of taking all these agendas forward. And today, the amazing thing, we have Zeenat also joining us live from Srinagar, going to be going to her in just a moment. But I have just been told that the army
it's been said that the government of India, this announcement came, has instituted the 75th Independence Anniversary Medal, General Dhillon, through the presidential notification for all armed forces personnel born on strength on 15th August 2022. And I think this is a great, this is a great move by the government to bring all armed forces personnel together, so we all remember that they were serving in some form the nation on the 75th anniversary of independence. General Dhillon, a happy Independence Day to you. Your thoughts on what the Prime Minister spoke about first in that speech, and your thoughts generally on this wonderful day. Good morning, Arnab, and happy Independence to you. And good morning, Anupam Kher sir, Major Gaurav Arya, and all the viewers of Republic TV. Wishing a very, very happy independence and 75 years of independence to all of you. Today, I heard the Prime Minister's speech from the ramparts of Red Fort, a very comprehensive and which touched all aspects of life and all citizens of India. May it be in the terms of women empowerment, may it be in terms of languages of India and respecting each and every language, may it be the various regions of the country which are producing for the overall comprehensive national power. And even he touched upon each and every person who contributed for the independence, from the freedom fighters to the soldiers to the scientists and even the gram panchayats and जो पिछड़े वर्ग हैं, आदिवासीज हैं, उन्होंने उनके लिए खास तौर के ऊपर उनका जो मेंशन किया है, I think that's a very, very great and touching point. India is strong not because of India's economy is strong, not because of India's military is strong. Those are one aspects of overall national power. India is strong because India's citizens are strong. Every citizen of India contributes to the nation. Only defense forces are not the image of the nation or the strength of the nation. Defense forces only fight on the border or control the situation internally wherever terrorism or things like that are there. Every Indian is there for the nation to fight for. And 75 years is a very small time in a nation's history. But 5,000 years of civilization and culture, that is what makes us strong. Prime Minister set the agenda for the next 25 years. May it be in terms of Atmanirbhar, may it be in terms of technology development, research, Anusandhan, as he said. And this agenda for the young generation, who would after 25 years would be, say, 50 years of age, is what will lead the nation into the future. And we are already at the top. We are going to be the toppest after 25 years. Absolutely. General Dhillon, we are now going across. Thank you so much for initial comments, and please stay on because Anupamji, we have a lot of ground to cover. You know, I was enthralled. I have seen the Prime Minister's speeches over the years. He's a fantastic orator. He speaks from the heart. It's unstructured. You don't know what he's going to say next. You almost are weighing on every word. But what I found so wonderful about today's speech is that the Prime Minister spoke about how the world looks at us, how we look upon ourselves, our expectations. He spoke about an aspirational India. He spoke about Samuhik Chetna, the collective consciousness, and then he spoke about how the world is looking at us. So if you actually see the Prime Minister's speech, and viewers, I would encourage you truly to listen to the Prime Minister's speech maybe a second time. Because in the hurly-burly of our politics, we don't often get a full sense of the government's vision. And I've always said that the Prime Minister has a clear vision for the country that goes beyond what we see on a minute-to-minute basis. And you should therefore look at the things he said to start with. Then he spoke about the Panch Pran. He spoke about individual responsibility. And then he also spoke about Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan and Jai Anusandhan. So he has a clarity about the use of technology as a catalyst for India's growth. It's a very broad vision. It's a very broad vision, and we are truly blessed. We're truly blessed to have a Prime Minister with the grandness and straightforwardness of strategic vision to take the country forward. And right now we'll go across to Zeenat from Srinagar, ladies and gentlemen, where she's at Lal Chowk. And there's somebody very interesting standing next to her, Anupam Kherji. We all know how proud we feel today.
and all the changes that have happened. We take the people of Jammu and Kashmir with us. So it's over to Srinagar, where Zeenat will be going live from different parts of Srinagar today and eventually at the Sher-e-Kashmir Cricket Stadium. Zeenat, over to you. Thank you, Arnav, for connecting with me here at Srinagar. Interesting is here that let's meet a man who has come all the way from Gujarat holding a tricolor, and he has also painted tricolor on his body. And then you see a tattoo of Indian Army. You can see the helicopter. Then you see a tank, the soldiers standing. He has actually portrayed the picture of Indian Army. And as we have the guest, Lieutenant General KGS Dillon, he can tell you more that how it feels holding a tricolor at the Lal Chowk, because Lal Chowk before the abrogation of Article 370, and particularly how the situation was there before Article 370 was abrogated. It was very difficult for anybody even to come near to this place, because usually the restrictions would have been put on place. But now you see the people coming from different parts of the country, not only holding the tricolor, but also shouting Bharat Mata Ki Jai, Jai Jawan, Jai Kisan, and all other slogans. That tells you that how the situation on ground changes. I spoke to a few of the women coming from different parts of the country here, who said that is because of the sacrifice made by the Shama Prasad Mukherjee and the way the Prime Minister Modi is leading the country. That all has made it possible for the people coming from different parts of the country now to hold and hoist the tricolor here at the historic Lal Chowk. Showing you the pictures from the historic Lal Chowk, where a man coming from the Ahmedabad, Gujarat, holding not only the tricolor but also shouting slogans about how he feels about the country that has diverse culture. We see the secularism on ground, and also how the country is so rich when it comes to about the ethos. We talk about the culture, we talk about the patriotism, and how the people of the country are connected from Kanyakumari to Kashmir. So these are the pictures live from the Gantaghar, where a person coming from the Ahmedabad has literally portrayed the pictures, the tattoos of Indian Army, how the Indian Army is rich as far as its infrastructure, the patriotism slogans, and then the holding the tricolor here at the Gantaghar Lal Chowk. Yes or no? Absolutely brilliant, and I think it warms our heart. Anupam Kher, I'd like your thoughts and Gaurav Arya's thoughts. It warms our heart today to see the pictures of the Tiranga so proudly, so fearlessly, I would say, Gaurav, so fearlessly, so openly being waved at the Lal Chowk today. I'd like Anupam Kherji's thoughts first, and then Gaurav, your thoughts. It's phenomenal to see Har Ghar Tiranga campaign, especially in Kashmir, जहाँ कुछ साल तक लोग चुपके से जाते थे, including our Prime Minister. He had to hide himself many years back and तिरंगा फहराने के लिए. It's wonderful to see not only तिरंगा और भारत माता की जय, जय हिंद, ये सब नारे लगते हुए कमाल का फीलिंग है. कमाल की जो campaign, since we are talking about this campaign has really reunited the country a little more strongly. It is so wonderful to walk on the streets of Mumbai or to sit in the car and see that every house has a jhanda, and Prime Minister was very right that how it put people together. I want to talk about how we were made to feel complex if you talked about Tiranga. How we were made to feel that if you talk about in a Hindi that you are not the most happening person. I think आज जो उन्होंने बात की, मैं उस पर वापस आ रहा हूँ कि वो उन्होंने एक जो हीन भावना जो हमारे में पैदा की गई थी हमारे ही शासकों द्वारा, हमारे ही लोगों द्वारा, कि अगर आप हिंदी में बात करते हैं, अगर आप पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं, अगर आप नेशनलिज्म की बात करते हैं, you are not cool. But I think being patriotic is the coolest thing. Putting a jhanda in his hand, I think this guy is the coolest guy in the country today. Absolutely. I think saying Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai, Vande Mataram is the coolest thing in the world, and that is what youth has felt it. I have done a show recently which will come tomorrow, which we have decoded the Prime Minister's speeches in the last 75 years. You must see it, even though it's not on your channel, but you must see how the Prime Minister in the previous speeches have spoken about without any feeling, with great respect to them. I'm not taking away from the fact that they were Prime Minister of our country and they thought about our country, but the way they have made people feel that, there is nothing to feel proud of. It's okay, it's all right. Nobody made it. Mr. Modi's speech makes me proud of being an Indian. Mr. Modi makes me feel that I am wearing a T-shirt which has India on it.
मैं अपने झंडे को अपने दिल में लेकर, अपनी छाती पे लेकर चलता हूँ, मेजर गौरव आर्या एंड जनरल ढिल्लन एंड अर्नब। तो मुझे ये भावना जो आज के यूथ में लोगों ने पैदा की है, जो आज के यूथ में होगी, ये सबसे बड़ी, ये भारत का बदलाव है, ये अमेजिंग है। कश्मीर में इस तरह का वातावरण होना 370 के बाद, मोटरसाइकिल्स पर, ये सब देखिए। अभी कश्मीर में पीछे भी जितने लोग हैं, आप कह सकते हैं कि ये आदमी तो गुजरात से आया, लेकिन पीछे देखिए आप, बिना हर जात के, हर धर्म के लोग खड़े हैं जो झंडा लहरा रहे हैं और शायद भाषण दे रहे हैं और शायद भारत माता की जय बोल रहे हैं। ये फीलिंग जो है ये बहुत जरूरी है और ये वापस आई है। और ये मुझे हिंदी बोलने में गर्व है, मुझे झंडा लगाने में गर्व है, मैं जय हिंद बोलने में गर्व है। ये भावना वापस आई है जो आजादी से पहले, और जैसे जैसे हम आजाद तो हुए थे, हम देश आजाद हुआ था, लेकिन गुलामी की जंजीरों में फिर भी जकड़े हुए थे कि अंग्रेजी आती है तो ठीक है। अगर मैं बॉम्बे में आया तो मुझे लगा मेरे को एक्टिंग तो आती है लेकिन अंग्रेजी नहीं आती, तो पीपल नेवर यूज्ड टू टेक मी सीरियसली। तो ये भावना जो जागी है अर्नब, मैं आपका शुक्रगुजार करता हूं कि आपने मुझे इस शो पे बुलाया। मुझे अपने स्कूल में जाकर झंडा फहराना है, तो मुझे आपसे आज्ञा लेनी पड़ेगी क्योंकि बहुत जगह झंडा फहराना है मुझे। नहीं, आप बिल्कुल जाइए स्कूल में। एंड आई रेसिप्रोकेट द सेंटिमेंट अनुपम जी, व्हेन आई वाज ड्राइविंग टू द स्टूडियो टुडे, मुंबई की सेनापति बापट मार्ग में आप जाएं और वहां पे हर घर से इतने झंडे थे, मुझे लगा कि आई शुड टेक अ पिक्चर ऑफ दिस and then show it to the people who keep talking about the definition of patriotism, the definition of nationalism, what is nationalistic, what is not, and waste their time doing that, because there is a domino effect. अनुपम जी, आप इसको बात को जो आप कह रहे हैं, जो ये युवक वहां पे खड़ा है लाल चौक में, जो मुंबई के सेनापति बापट मार्ग में है, जो दिल्ली में है, निजामुद्दीन में, कोई भी है, today that feeling has come out in people's hearts. And that is our achievement, Anupam ji, of Har Ghar Tiranga. That's why today we have put this reporting team from Kashmir, Leh, Kanyakumari, Nathula, Gujarat, because I really want these images to go across the country so people feel that this is not something which is forced. Every home, every shop, every office, every street corner, people are feeling that sense of pride in the tricolor. It's being unfurled, hoisted with great pride. And this is the mood of the country, Anupam ji. This has become the mood of the country. जाने से पहले मैं उन लोगों के बारे में बोलना चाहूंगा जो कहते हैं ना कि हम अपना पेट्रियटिज्म अपने स्लीव पर लेके नहीं, जो अंदर से खोखले हैं, जो अंदर से झूठे हैं, उन्हीं को ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है। आज बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं झंडा कहाँ है, झंडा कहाँ लगाया है पापा, झंडा नहीं लगाया है। He feels smaller that बाकी लोगों के, मेरे स्कूल के बाकी बच्चे हैं। So thank you very much. Thank you, Anupam ji. Thank you. Wonderful to see you today. Thank you very much. जी बिल्कुल, भारत माता की जय। बिल्कुल। I want Gaurav Arya to come in right now, and I'm also joined by Abhishek Kapoor, who was at Red Fort, and he's going to be joining us live from the Red Fort. He's there live, and there is Aneri. Aneri is going to be joining us from Kanyakumari. In just a moment. But Srinagar के उन visuals को देखते हुए मैं चाहूँगा गौरव आर्या अपने point of view रखे. We bow our heads in gratitude today to all the people who have come out there and who are celebrating unitedly with determination. एक तरह से this is a message that's being sent out across the country, isn't it? The people of India are sending a message. We don't want narrow definitions anymore. We don't want to be divided. The mood in the country is changing. Gaurav. Arnab, absolutely. I remember it was on the 6th of April 2017, and I had gone with the Republic TV crew. We were shooting at Lal Chowk, and we had planned for Patriot to unfurl the tricolour. We were almost arrested there. I was put inside a police gypsy, and my crew their cameras were almost confiscated. CRPF stepped in, and then we were released after half an hour. I remember those days. And today, it gladdens my heart, Arnab. I mean, there is no emotion. I mean, there are no words that can describe the emotion. It gladdens my heart when I see the tricolour at Lal Chowk. This was the place where it was, quote unquote, forbidden to talk about India. It was forbidden to say Jai Hind here. The tricolour was forbidden. I don't know who had forbidden it, but it was forbidden. And we tried it. We went there. And Arnab, I don't have much to say except one thing. Today, and we must acknowledge our colleagues, and I'm proud to be Zeenat's colleague. And I must publicly say that she's the bravest girl in Kashmir, Arnab. As a soldier, I want to tell Zeenat that, Zeenat,
You have the heart of a soldier. Absolutely. बहुत हिम्मत है इस लड़की में, बहुत हिम्मत है ना. She does the kind of stuff that will, you know, it knocks your socks off. And I mean, salutes. And she does it on a daily basis, and she's reported on the changes with such absolute strength and commitment and conviction. She is a true nationalist. And I have Abhishek, who's been watching very carefully. You know, Gaurav, the amazing thing about Abhishek is he looks at everything through a micro and macro perspective. He'll give you a grasshopper's view. He'll give you a bird's eye view. He has a fantastic spread of, you know, when it comes to understanding India's political history. So Gaurav, many people want to hear Abhishek's analysis of what the Prime Minister said. But Abhishek, because I've just got a signal right now, I'll keep you on hold because I think both of us want to go across to Mechuka in Arunachal Pradesh. And the most amazing thing about this location, viewers, it gives me great pride, viewers. When we launched Republic, we said nation first. And today it is our privilege. Privilege is the only word. It's our absolute privilege to be in a position today where we'll remember that on the 75th year of India's independence, we tried our best to connect parts of the country that had not been connected in previous broadcasts. And Anirudh, you know, our Northeast Bureau Chief, is reporting from Mechuka in Arunachal Pradesh. And viewers, this is the first time. This is the first time that a live broadcast has ever been made possible from there, you know, in 75 years. So Anirudh is at the location where the flag hoisting will take place by the Indian Army. This is a very, very forward position in the Eastern Theatre. And the Jawans posted here go through high altitude training, circuit training. And this is one of the areas which had come under direct attack from the Chinese in the 62 war. And all the locals there probably remember those days. So Mechuka has an advanced landing ground. It is proof of our defense capabilities. It shows the infrastructure building that has happened. And today the Indian forces present there will be celebrating the 75th Independence Day with Anirudh. So Anirudh, over to you. Yes, Arnab, it's a great privilege to be here, and we are really thankful for the Indian Army and also the Signal Corps who have made this live broadcast possible. First time in the history of India, on the 75th year of independence, as we step into 76th year of independence, we are live from here. And as you can see, a colorful performance is still on by the 13 Grenadiers. And yes, the 13 Grenadiers happens to be one of the oldest platoon in the history of India, raised in the year 1465, and we would like to speak to the soldiers here. There are local public also who have come in to join the celebrations along with the Indian Army. We also have with us Arnab war widows who are here to salute the might of the Indian Army and to give a sense of patriotism from the easternmost locality of India. We have with us Colonel S.C. Basera, who is the commanding officer of 13 Grenadiers here. Sir, what message would you like to give on the 75th year of independence today to the people of India? On the occasion of 75th Independence Day of India, we want to give message to the India that Indian Army is always there for the country. This complete country is our nation. We are always there with you. We are guarding the nation, and we convey our best wishes to the country for the better progress. Sir, despite all the oaths and challenges, you are always here. We have been here for the last more than 72 hours now. There have been no communication, but your people have made it possible to do a live broadcast. How would you like to define this defying moment in the history, sir? Actually, the Indian Army, various regiments and battalions, they've got different traditions. And the troops, they come from various parts of country. They got integrated by unity in diversity. And we always, Indian Army always follow that we go against all odds. Because of that, this live broad telecast could have been possible. Indian Army always follow that credo of Chetwood credo, where we say that welfare and defense of country comes always first. We always follow that Chetwood credo and we get integrated.
the Naam, Namak and Nishan mantra is always guiding principle for the Indian Army that keep motivated the troops and the jawans of our battalions and the units. As it is said that our tricolor flies high not because wind blows but only because of the last breath of each and every soldier who laid down their life. We have wife of Sunil Ekka from 2nd Arunachal Scout who laid down his life while patrolling the LSE on 5th of July 2021. यानी एक्का जी हमारे साथ है. आज यहाँ से आप देश के हर एक नौजवानों को, देश के उन बहादुर जवानों को और जिन्होंने सर्वस्व बलिदान दिया है उनके परिवारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी आप यहाँ इंडियन जो हमारे इंडिया में है जवानों और उसको यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी आज तक आप लोग ने इतना सेवा किया है या इंडिया का ना, तो वैसे ही आगे भी करते रहिए. और हमारे यहाँ जो जितने भी इंडिया में वीर नारी है उन सबको वही कहना चाहती हूँ कि आप, क्योंकि आप लोग पता ही कि इंडियन आर्मी के वाइफ को कितना प्रॉब्लम उठाना पड़ता है हर चीज़ को, तो वही चीज़ को आप लोग वैसे जैसे भी अगर आपका पति कोई शहीद हो गया है तो हिम्मत मत आ रही है कि कल को इंसान को वो कहने मत दीजिए कि उसका पति तो ये हो गया वो हो गया, बोल हिम्मत से रहिए, वही कहना चाहती हूँ. Very cheerful moment. We have another wife of martyr Komi Size. He was also from Arunachal Scout. He laid down his life on 20th of February 2020 again while guarding the LSE. क्या संदेश देना चाहेंगे आज देश के हर एक नागरिक को यहाँ से? ये कहना चाहते हैं कि अब लोग हिम्मत रहिए ना, और ये 75 आज़ादी अब सभी को ये शुभकामनाएं. क्या बोलेगा सर? Yes, Arnav, it's really this moment bring tears to our eyes, and for anyone who questions the patriotism of the common people of this country, who questions why the tricolor should be hoisted, these people from the LSE here in Mesuka has a reply to them, Arnab. Absolutely. I apologize, viewers. The technical quality of the pictures was not very good, but I'm sure that we all soaked in the emotion of that historic broadcast from Mechuka. I shall be going to Kanyakumari and Port Blair in just a minute, but very briefly, I'd like to go across first to Red Fort to Abhishek Kapoor, who is at the Red Fort. Abhishek, I thought the Prime Minister's speech really captured every single aspect, but I think the most important was the first of his focus areas on making India a developed country, and everything else was rolling into that, whether it was shedding our colonial past, pride in our cultural heritage, responsibility of the citizen, unity. Everything really rolls into his primary vision of making India a developed nation. Your thoughts, please. Your analysis. Oh no, I'll keep it short. You know, it was sort of a manifesto for 2047 for the nation, for the society, for every citizen. So when he said Panch Pran, dream big, no slavery mindset, pride in heritage, unity, and that's something he mentioned 11 times in his speech. Then citizens' duty. Essentially, he was telling everyone that from here on till 2047, it's for everyone to get involved in nation building. He used the word aspiration and aspirational society 7 times and said that it's not just aspirational society, but impatient society, and the governments really have to keep pace to not let those aspirations down and to not let that impatience change the governments. So those were a couple of important points that I thought the Prime Minister wanted everyone in the society to understand. Also, adding Jai Anusandhan to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Now look at it this way. Jai Jawan, Jai Kisan was given by Lal Bahadur Shastri. Jai Vigyan was added by Atal Bihari Vajpayee. And Jai Anusandhan, which is significant because as a nation, we have traditionally not invested much on research and development. So Prime Minister, they're saying that the crux of India becoming developed society lies in we investing in innovation and research and development. Every society which has become developed
has been preceded by a phase of innovation. So I think Prime Minister there underscoring what needs to be done over the next few years till 2047, till we become a properly developed and proud nation. So I will keep it short, Arnab, because those pictures from across the country are more important. But that's my understanding of what the Prime Minister really said today to the nation from the ramparts of the Red Fort. But he also asked, I think that's very well put by you. But one point, viewers, the Prime Minister also, there was one point in his speech where he said, I am asking you for help. And that point, Abhishek, was where he spoke about the fight against corruption. He said, we cannot compromise with this anymore. He in fact said, we have reached a very critical point in the fight against corruption. And there was no looking back, and I need your support. I think, Arnab, yes, absolutely. In fact, he said that this is the decisive phase in which we are going into, and he said that he wants the nation behind him. So I think he was hinting, or not, given the cases that are going on. He mentioned that there are people who don't have homes, and then there are people who don't have a place where they can keep their ill-gotten wealth and cash. Obviously, he was talking about perhaps in the back of his mind, the cases that have come up, the investigations that are going on. And when he mentioned decisive phase, it's likely or not that a lot of action would be happening on that front. Yeah, but he rolled the responsibility to the citizen. And he said that I have to intensify the fight against corruption. We're in a critical phase in the fight against corruption. And he spoke about people who, even after being convicted, got the support of their political lackeys. He asked for a change of mindset. And therefore, I think that we've seen these sort of debates around agencies. I think he put it in a larger perspective of the larger battle that we have. Live reporting happening, I can see from Khajuwala viewers. From Khajuwala, we have Amardeep who's reporting live. Can I just cut across to that for a moment and let's see what Amardeep is saying, and from then we'll go to Port Blair. जी बताइए. That's Amardeep. Amardeep, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अर्नब बोल रहा हूँ. आप खाजूवाला में हैं और ये करीब 20 किलोमीटर दूर है इंडो पाक बॉर्डर से. जी, आप वहां के माहौल पर जरूर आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे. जी बोलिए अमरदीप जी. देखिए लगातार खाजूवाला पे सर आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे चंद किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर और बॉर्डर के आसपास सिविलियंस को शामिल किया है बीएसएफ के जवानों ने. अक्सर इनके हाथों में बंदूक रहती है, लेकिन आज जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है तो यहाँ पे भारत माता की जयघोष के नारे हैं, सुर के तराने हैं और बच्चों के साथ में वो महिलाएं शामिल हुई हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में किया. यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में ये पहली बार हो रहा है आयोजन, जिसका बीएसएफ ने तमाम तरीके से इंतजामात किया है और बॉर्डर पर एक माहौल बनाने की कोशिश की है. यहाँ पे ये वो चेहरे हैं जो बॉर्डर के इर्द गिर्द रहते हैं और यहीं पर बीएसएफ जवानों का साथ भी देते हैं. लेकिन जब बात आज आज़ादी के दिवस की हो, स्वतंत्रता दिवस की हो, आज़ादी के अमृत महोत्सव की हो, तो यहाँ पे समझ में आता है कि आज़ादी का महोत्सव जो है वो चार चांद लगाने का काम बीएसएफ के जवान न सिर्फ वो करते हैं, बल्कि आम लोग जो आज इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, वो भी करते हैं. दूसरी तरफ संगीत के तराने जो हैं बीएसएफ के वो जवान जिनके अक्सर हाथों में हथियार रहते हैं, वो आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत यहाँ तमाम लोगों के साथ में गा रहे हैं, बजा रहे हैं और जिस तरीके से दिल दिया है जान भी देंगे, वो तराना मैं सुनवाने की कोशिश करूंगा अपने दर्शकों को, रिपब्लिक के तमाम दर्शकों को. दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए. हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए. दिल दिया है जान भी देंगे. फैंटास्टिक अमरदीप. आप देखेंगे कि तमाम वो लोग जो सिविलियंस बॉर्डर इलाके में रहते हैं उनको शामिल किया गया है और तमाम लोग यहाँ
बहुत ही फैंटास्टिक माहौल है वहाँ पे दोस्तों. That is Amardeep reporting from the Khajuraho border in Rajasthan. And in January this year, it was decided that the BSF Jawans there will have a beating retreat ceremony like the one which take place in the Atari border. And viewers, this is just, we are trying to bring all parts of the country together. And फैंटास्टिक. मैं फिर से वापस आऊँगा. बहुत शानदार समारोह है, बहुत जोश वाला माहौल है वहाँ पे. अमरदीप, थैंक यू जी. And I'm going across straight to Port Blair to Varshini, who is reporting live, ladies and gentlemen, from Port Blair. And that is, she's going to be at the Netaji Stadium in Port Blair. I think I'll just hand it over to her out there. There's going to be the presentation of medals, lot of things lined up, and the cellular jail, ladies and gentlemen, you would know has been declared a national memorial in 1979 out there, and this is the place where Vinayak Damodar Savarkar, Bakuteshwar Dutt, Diwan Singh Kalepani, Yogendra Shukla were all imprisoned. This is the place where the infamous jail was constructed by the British in around 1900-1906 to keep political prisoners in hostage. I'd like to go across to straight to Varshini there in Port Blair. Varshini, over to you. Well, Arnav, we are in the infamous cellular jail, as you mentioned. This is definitely a very proud moment. You can take a look at the number of people who are visiting here on this Azadi Ka Amrit Mahotsav to pay respects to the freedom fighters or revolutionaries who are the reason behind the life that we are living peacefully in India today. You can take a look at the cells right there. They are huge. And in these cells were very, very important leaders from our history were isolated, brutalized, they were tormented here. These walls, these bricks, have seen the sweat and blood and souls of all the freedom fighters. And just before a few minutes, the Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar Islands had come here. Admiral D.K. Joshi had hoisted the flag, and now they moved on to the Netaji Stadium to conduct more cultural activities on the occasion of the 75th Independence Day. And this is definitely a very, very proud moment. As you mentioned, Veer Savarkar was here. He was fighting here for all the prisoners, not just for him. And he spent more than a decade here going through all the brutality just so that the future generations could enjoy the peace and the freedom that we are having currently. And these hugely built walls are giving us the feeling, we can feel what kind of torment they would have gone through back then. And this has now been declared as a national memorial, and we hear that 2 wings have been removed, just the remaining parts are here. And you can see a lot of statues, a lot of inscriptions written here and there. The people who've been here, all of the information is available. The people are here. You can see from school children to college students to families and friends coming here to pay respects to those leaders who lost their lives and who spent their lives here in torment just so that India could have its freedom and move forward. And that is why we are standing here very proudly presenting from here, reporting from here, where you can see the fire still burning. Every day we hear that the fire keeps burning to keep the souls alive, the souls that fought for us, to keep them alive. And this is definitely a proud moment to be here on Azadi Ka Amrit Mahotsav, to be talking about the people and talking about this very important spot in the history of India. Absolutely, Varshini, absolutely. I think it is, you're doing a great job there. It's also your privilege to be there, Varshini, on such an important day, because this is where it was Kalapani. I look forward one day to visiting Port Blair myself. I have not done that, and I have not been to the cellular jail. Maybe one day I will get the opportunity to be there at that and pay my respect to all the freedom fighters myself. While we are bringing those pictures to you, I want to go back to General Dhillon. General Dhillon, pictures are coming in from INS Gomantak. Pictures are coming in from Port Blair. I'd like you to say a little bit about whether we built our, we talk about the next 25 years, our military infrastructure, our defense capability, our power projection capability
not just in the region, but globally, General Dhillon. Our military infrastructure, right down from Leh, where we were reporting some time back, to Port Blair, our military intelligence capability, how are we placed and how quickly can we move? Thank you. Before I answer your question, I would like to say all the locations which you have sent, very, very remote, very difficult locations, I've had the honor of being to all of them. May it be Lal Chowk, may it be in Chuka in the east, may it be INS Hansa or Port Blair Cellular Jail. Wow. One has been there and one has paid the respect to all the soldiers and the citizens who made these places part of India today. Having said that, I would like to say one more thing about Lal Chowk and Zenith, which Gaurav also referred to. When 370 was abrogated on 5th of August 2019, I was a Corps Commander in Kashmir. And you would remember, your viewers would remember the statement by a former Chief Minister कि अगर 370 गया तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा कश्मीर में. Yes, I remember. And today I am proud we made it happen. आज वो तिरंगा बहुत खूबसूरती, बहुत बुलंदी से लहरा रहा है कश्मीर के श्रीनगर के सिटी सेंटर में, जो लाल चौक में. ये हमारे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है और तिरंगे के लिए एक बहुत गौरव की बात है. Now, having said this, now I come to the answering your question. The military infrastructure, starting from Leh Ladakh, going to the northeast, Andaman Nicobar and other island territories, and on the western and northern borders, Indian Army, Indian Navy, Air Force, the defense forces combined together, go through a very, very rigorous process of modernization. We have ways and means to assess what our strategies are, what enemy strategies will be after 15 years, what is the technology which is in-house available, what is the technology which is available abroad and can be researched and developed in-house in the next 15 years. So overlapping the technology availability and which can come in next 15 years over the strategy of the next 15 years, we make something called long-term perspective plan, in which the low-hanging fruits, as we call it, which are easily available technology or in-house technology, are acquired immediately. Where the gestation period for research and development is more, that technology is designed, as Prime Minister himself said today, Anusandhan, research and development is, money is allocated, and that research continues. And with the present government, the focus and the emphasis on Atmanirbhar Bharat has become the bedrock of development and modernization of defense forces. The 300 negative list which Prime Minister talked about, these 300 items we will not import, we will develop in-house. Since I have been a Director General of Perspective Planning and have 4 tenures in Perspective Plan and a tenure in Weapon and Equipment, I am aware of the hard work which is going in and the government support which is available. So today and in the years to come, Indian Defense Forces are well equipped with the latest technology, with the latest state-of-the-art weapon systems, and more than important point is because of the harshness of the terrain and the weather on our borders, especially in the north, the infrastructure development which is taking place is a world-class infrastructure for the comfort of the boys, for the fighting facilities, and for the upkeep and maintenance of the equipment, which is a very, very sophisticated equipment. For them also, the sheds, the underground sheds, it is works going on, and it all is possible because we decided to depend on ourselves and not on imports. We are on a flight in the modernization of defense forces. Yes, thank you very much, General Dhillon. And those viewers are pictures from the celebrations which are at the parade ground. The parade ground, ladies and gentlemen, in Chandigarh. We've just seen some paratroopers just touching down there, and while the celebrations are going on, perfect touchdown. These pictures are coming from parade ground, and Republic is bringing you pictures from every single part of the country. We'll also be going to Atari
in just some time, where we have where there's going to be the greeting of the retreat, the exchange of the sweets, the strategically placed Grand Trunk Road, not far away from there, in the Atari border, ladies and gentlemen. We'll be going across to Srijita in just some bit. But as I promised you, viewers, and waiting for a long time to go live from Kanyakumari, ladies and gentlemen, I'm joined by Aneri from the southernmost point, from those pictures of the parade ground in Chandigarh. Let's go live on Republic to Aneri, who is the southernmost point of the Indian peninsula there, and she's the meeting point of the Indian Ocean, the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Over to you, Aneri. Well, that's right, Arnab. As Republic is reporting live from Kanyakumari, this is the very point, the southernmost point of India. And this very point, as we continue to report from here, the Vivekanand Rock Memorial is the last point of India. And, well, we have been seeing across India, as Prime Minister Narendra Modi has also given out a message of Har Ghar Tiranga here in Kanyakumari. As we traveled all through the way, we see that every household here has a national flag hoisted atop of their house. And also we have been seeing that there was a lot of ceremonies, a lot of programs which were held here at the Vivekanand Rock Memorial here. And this is the particular point where we are reporting from, where the three seas, three oceans meet: Indian Ocean, Bay of Bengal and the Arabian Sea. This is the very point where we see that all the three oceans meet. And also at the same time, the Indian Army had unfurled the national flag. The 75-foot national flag was unfurled by the Indian Army on the 11th of August as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, where we see that a very, very proud moment for all of us here as we continue to report. And also a strong message which has been given by Prime Minister Narendra Modi from the Red Fort also, and in regard with the Har Ghar Tiranga campaign, which has been one of the success programs, if we can say, as every household here in Kanyakumari has a national flag unfurled on the top of their house. And definitely now we also see that in some time from now there will be a program which will be here held at the Gandhi Museum as we continue to report from Kanyakumari, where the local leaders will be unfurling the national flag and also celebrate the 75th Independence Day. Absolutely, viewers, that's Aneri in Kanyakumari, and with the largest reporting team in the country, bringing you coverage from across the nation about how nationalism has seeped the nation, and the nation, viewers, is seeped in nationalism. The most amazing part about this morning is that we have, as I welcome Sonal Mansingh, one of India's legends from the world of culture. We saw the Prime Minister talk there about us becoming a developed country, but he also spoke about pride in our virasat, cultural pride in our heritage. And I'd love to talk to Sonal Mansingh about that moment I have the audio connection. But before that, let me go across to our reporter Sandeep. And Sandeep is in Nadapet, ladies and gentlemen. And Nadapet is in Gujarat, and it is right next to the international border. And this is in the Ran of Kutch region. Republic is working hard to bring you pictures from all over, from Arunachal Pradesh, Ran of Kutch. We saw Port Blair, Kanyakumari, we saw Srinagar there. And now from Nadapet, which, like the Wagah-Atari border, ladies and gentlemen, is a border tourism area, and it provides us an opportunity to witness the functioning of a BSF post. There's a Seema Darshan parade which is held here in the evening, and I'd like to go across to Sandeep. Sandeep, over to you, Sandeep. Arnab, yes, I'm at Nadapet, and this is just next to Indo-Pak border, just 20 kilometers here, and this place has been developed for border tourism, in fact. And now you can see in the visuals, the place where I am, the flag is hoisted, and the people out here, you can see out here, they are so excited, and the enthusiasm they have for today's Independence Day. You can see in the visuals. We'll try to speak to the people out here to get their reaction. Where have you come from? I'm from Mumbai. You came from Mumbai. What's your reaction in regards of you coming out here at Nadapet, celebrating India's independence, 75th independence?
It's a proud feeling moment for all of us. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. You just heard the Josh is very high, and before I go anywhere else, we'll show you Har Ghar Tiranga campaign. That is the slogan given by Prime Minister Narendra Modi. This old lady out here will try to speak to her. कैसा महसूस कर रही हैं आप आज आज़ादी की 75वीं जो है सालगिरह है, कैसा क्या कुछ कहेंगे? बस बरोबर, कहीं नहीं। अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा। बहुत प्राउड फील करती हैं आप? हाँ, सारा लगा। प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने सुना आज? हमारा मिस्टर आया था। So you just heard the lady. Look at the enthusiasm she has. Look at the feeling she has for being an Indian. So definitely a matter of patriotism out here at Nada Bet. Remember, there are several temples also located in the border areas of Nada Bet. And now, as we have Tannod temple located in Jaisalmer, we've been told that there is a Nadeshwari Mandir, there is a Nadeshwari temple, wherein there were at the time of 1971 war, when the mortar shells were sent from in fact Pakistan, they used to not blast, in fact, and that is the miracle of this place. And in fact the Ran of Kutch, you can see in the visuals, you can see out there how people are enjoying this day, how proud they are to be an Indian. क्या कहेंगे आप? देश आज 75वीं जो है वो सालगिरह मनाने जा रहा है। हम आपकी क्या सोच है उसको लेकर के? आज प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जैसे जय जवान था, जय किसान था, उसी तरीके जय अनुसंधान का नारा जो दिया है, रिसर्च को लेकर के, इंटरवेंशंस को लेकर के, इनोवेशंस को लेकर के नारा दिया। क्या कुछ कहेंगे? अच्छा है, प्रधानमंत्री ने जो भी किया है हमारे देश के लिए, वो सब राइट है उसके लिए। भारत की इस सीमा पर आप आई हैं, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, कितने करीब से आपने बॉर्डर को देखा? बॉर्डर को हमने 0 पॉइंट से देखा हुआ है, और हमारे देश के ये फौजी जो इसके लिए सेवा कर रहे हैं वो सच में Indian Army is sacrificing their lives, and in fact the BSF officials securing the borders there for India's safety, for the citizens' safety, and in fact these people are out here to cheer them, to celebrate the 75th Independence Day. We'll speak to few of the officials. जब भारत की आज़ादी की बात आती है, जब 75वें स्वतंत्रता दिवस की बात आती है, क्या महसूस करते हैं आप? अपना गौरव महसूस करता है। गर्व महसूस होता है। एक देश के जवान के नाते आपको अपने परिवार की याद नहीं आती? You can see he is speechless. He cannot say anything because he is working day and night for the safety and security of the people. We'll speak to few more people out here. क्या कहेंगे? कितना उत्साह है आपके मन में? आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा, भारत माता की जय। So Arnab, you just heard the enthusiasm, the love they have for the country, the patriotism, the feelings of the people. So definitely you just heard their reaction, and this is the moment to enjoy. This is the moment to say Jai Hind. This is the moment to say Vande Mataram. This is the moment to say Bharat Mata ki Jai. Yeah, absolutely. And Sandeep, as I am seeing all those pictures come in, Sonal Mansingh is watching, General Dhillon are watching this, my friend Gaurav is, we're all smiling, we are feeling happy because somewhere I'm getting a feeling, Sonal ji, ki what used to be a celebration centered on Red Fort or centered on the political capitals of India, or where the chief ministers unfurl the tricolor, has now become a public event. सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो प्रधानमंत्री ने जिस बात की चर्चा की, उन्होंने कहा कि सामूहिक चेतना का एक तरह से पुनर्जन्म हुआ है. What is the translation? He said a reawakening of the national collective consciousness he spoke about, and I'm seeing it.
Because people are going, people are congregating, people are taking pride in a housing society, not just in an army cantonment, what General Dillon said. But everywhere people are congregating and taking pride, ये बहुत बड़ी चीज है. तो Happy Independence Day to you. What are your thoughts, Sonal Mansingh ji? सबसे पहले आना salutes to the country, to the Prime Minister, to the 130 crores of our brethren and sisters. Salute to you for this grand celebration on television, and thank you for inviting me. The Constitution says it is by the people, for the people, of the people. But the translation in reality is what we are watching today on ground. That it is by the people, for the people, of the people. ये संस्कार का महोत्सव है, ये देश की चेतना को झकझोर देने वाला महोत्सव है, और ये महोत्सव ऐसा है कि जिसमें बच्चा बच्चा से बूढ़े तक और हर एक पीढ़ी के लिए यहाँ आदर दिखाया गया है, और जीवन का कोई क्षेत्र बचा नहीं जिसको प्राइम मिनिस्टर ने छुआ नहीं हो, चाहे वो बच्चों के खिलौने हो, चाहे नारी सम्मान हो, चाहे सेना हो, चाहे विज्ञान अनुसंधान हो, और चाहे संस्कृति हो. हर एक क्षेत्र को प्रधानमंत्री ने इस तरीके से छुआ कि वो स्वर्ण बन गया, सोना बन गया. आगे 25 वर्षों के लिए नक्शा उन्होंने खींच दिया है. यहाँ टस से मस होने की जगह नहीं है, मात्र आगे बढ़ने की चेतना, जागृति, जोश, जुज्बा है. मैं तो मेरी आई थिंक देश की छाती आज 56 इंच की हो गई है भैया. देश की छाती 56 इंच की हो गई है. एब्सोल्युटली. और जो उन्होंने कही, जिस बात के बारे में आपको पूछना चाहता, तो उन्होंने हमारे विरासत पे, टू टेक प्राइड इन आवर कल्चरल हेरिटेज की बात कही. वो बहुत बड़ी बात है. उन्होंने 5 जो प्रण की बात कही, उनमें तीसरा है टू हैव प्राइड इन आवर विरासत, आवर कल्चरल प्राइड, टू बी प्राउड ऑफ व्हाट वी आर. And he also said, how long will we seek a certificate from the West or certificate from others about what we are? I'd like your thoughts on that as well. एकदम उन्होंने खीला ठोका है, सर पे हथौड़ा मारा है. गुलामी की भावना से उभर जाओ, अब एक क्षण गंवाने की नहीं है. हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारे आदर्श उन्होंने गिना दिए. वसुधैव कुटुंबकम से लेकर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे हो, उन्होंने सारे कोटेशंस वहां दे दिए, जिसके ऊपर भारतीय सभ्यता हजारों वर्षों से खड़ी है, चली आ रही है और चलती रहेगी. ये सनातन संस्कृति के मूल उन्होंने आज दिखा दिए एक बार फिर से लाल किले की प्राचीर से. मुझे अत्यंत गर्व है कि उन्होंने संस्कृति को इतना सम्मान दिया, क्योंकि यदि संस्कृति नहीं तो देश की अस्मिता भी नहीं. संस्कृति इज द आइडेंटिटी ऑफ एनी कंट्री. मैं तो क्या कहूं, शब्द नहीं मेरे मुंह में. इस प्रधानमंत्री को देखकर, उनकी वाणी को सुनकर लगता है सरस्वती उनकी जिह्वा पे बस गई है, और उनके तन मन प्राण में भारतवर्ष की मिट्टी मिली हुई है. उस मिट्टी की सुगंध उनकी स्पीच से आती है. धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो. Absolutely fantastic. Sonal Mansingh ji, aap jaiye mat, because your thoughts, the Prime Minister, as Gaurav, Sonal Mansingh says, hitting the nail on the head, as it were, with the key points. If only you soak every word that he has said out there, Gaurav, he has laid the agenda out for the country. And lastly, being the responsibility of the citizen, but most importantly, the single point agenda of making India a developed nation. If there's one takeaway, viewers, if you're watching this broadcast today and you were to ask yourself, what is all of this leading to? Where is the Prime Minister putting the direction towards when he talks about aspirational society, samuhik chetna, collective consciousness, the world looking at us? It is only and only one aspiration, Gaurav, making India a developed nation. And in our lifetime. And what greater aspiration can anyone have? And we are so close to it. We are perhaps a few steps away. We've been through the most difficult parts of this transition, from being a developing to now hopefully a developed nation. It's a question of the few steps, but he also spoke about the discipline it will take to achieve that, Gaurav. No, absolutely, Arnab. And this whole thing about India being a developed nation, and he gave a timeline and he also gave a roadmap. He also gave us the nuts and bolts, how to do it.
we cannot move forward unless we are constantly thinking about the past, in the sense that, you know, if our minds are chained in the shackles of slavery. This is what he spoke about. He also said that, you know, you have to be proud of our legacy, our glorious past. We take inspiration from our past and then move forward. Everything leads to that one point that Prime Minister said, that make India a developed country, you know. Resolve to make India a developed nation, that public resolve. Then he said strength of unity, because he understands. He understands and he wants to communicate to the rest of India that, you see, unless we are united, we are not going to make it. We have to make it together. Yes. All 130 crore of us, without exception. Absolutely. And I think the last thing, duties. So asking for rights is good. It is there in the constitution, it's a right. But unless we all understand, 130 crore of us, that it is our duty, our solemn duty to make India great, it will not happen. So I think everything leads to that. All these points that he has given, they lead to one single goal, to make India. I would go further and say make India an absolute superpower, a global superpower. You know, we talk so much of the present day problems. Sometimes I think we should look back. Viewers, I strongly suggest that for ourselves and for the generation above us, but more so, Gaurav, for the generation younger to us, we must talk about how far we have come. What did we inherit? Where did the British leave us as a nation? The British left us as a nation with very low literacy. Today we are 78% literate because of our efforts, despite being undermined by the British. The British ruined the health of the people of this country. We had a life expectancy of 32 years only in 1947, Gaurav. Sonalji's 32 years. Today it's more than 70. That is how we were undermined. A great nation. Today we contribute 7+% to the global economy. At the time of our independence, we were only 3%, because the British, they sucked the life of our economy. They ruined our country. They left us in famine and left us with a partition. And look where we've come from there. So I think if we were to take the message of the Prime Minister, I would add one small thing to it. Please, let us look back at how far we have come in 75 years. It was incredible. People said we would not even be together. And look here, from Atari to Goa, we are live here on Republic. How proud we should feel. And I think we won't have to wait 25 years. I say superpower by 2030, General Dillon, I always say. And I say developed country within the next 10 years. It is in today, when you fly from Heathrow to Mumbai, you feel you entered a developed country. You see our airports, you see the infrastructure. We're almost there, General Dillon. Almost there. What do you think, General Dillon? Brief from you before I go to Alisha. Briefly from you, General Dillon. Absolutely. Absolutely. And the way Republic is covering from all corners of the country and bringing them together for a person sitting anywhere in Delhi or Hyderabad, Kolkata or Bangalore, the ब्यूटी गुलदस्ता जो हमारा हिंदुस्तान है, गुलदस्ता है, उसमें फूलों की जो खुशबू, जो महक, वो आज मेरे को देखने को मिल रही है. और क्योंकि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में 42 साल रहा हूँ, यहाँ पे आई मेट एंड आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्रीज. द नेम्स यू आर टेकिंग, India is a world in itself. We have all the religions, we have all the people, all the cultures, all the languages, all the cuisines. Yes. We are a world in ourselves, and we should be proud of it, and we are. We are, General. We are so proud, General. We are so proud. And I'd like to go to Alisha next. This is a wonderful opportunity for the broadcast viewers. Alisha to Goa. Alisha, over to you. Alisha. Well, yes, Arnab, we are really very proud, and as already mentioned, something today, we breathe the air of freedom. I am reporting now from INS Gomantak, and where we can see that Indian Navy is has given from the Vrit laying. It has already been done, but you know, this memorial is something dedicated to the Indian Navy brave hearts who liberated Andajiva Island from Portuguese occupation on 18th December 1961. And on 9th December 1961, Lieutenant Arun Adito and Lieutenant Neol Keman, along with 68 sailors from the gunnery school at Kochi, formed the landing party that was tasked to liberate the Andajiva Island from Portuguese occupation
on 16th December 1961, the landing party set sail from Cochin, whilst embark on board INS Trishul and commenced their assault on Andajeev Island soon after sunrise on 18th December 61. You know, the team has really faced stiff opposition from the Portuguese detachment. But in the ensuring battle, 7 sailors made the supreme sacrifice before the island was liberated by on 18th December. And that is the same land we have been reporting for. We saw there was, with laying the homage to the martyred, a brave heart who was given, they have been given, they were waiting and they were given a memory. It's an honor. It's an honor to those brave hearts who liberated this island, Andajeev Island, from Portugal occupation. And as already mentioned, it was the team really faced a stiff opposition from the Portuguese detachment. And in the ensuring battle, that 7 sailors made the supreme sacrifice before the island was liberated on 18th December. We, it's a very proud moment for us to, if I can speak, sir, it's a very proud moment for us. And today, where we are saying, we're talking about Goa specifically, how can you put a light on this war moment? See, every breath we take of freedom is because of the braves who gave their life for us. We rest on their laurels. It is them, they who have done it for us, and it is our duty to honor them and to remember them on every occasion. And this was one of the occasions wherein, in this memorial, which is of course a memorial to the liberation of Goa, that we honor the martyrs who ensured that Goa was liberated and became part of India in December of 1961. Sir, if I even talk about, under the urges of Azadi Ka Amrit Mahotsav, even Indian Navy has been taking a part, going to, home to home for this, specifically this Har Ghar Tiranga. So if you can talk about the initiative that has been taken. So as you would have seen all over the base, we have got the national flag flying proudly from every building. In fact, every house all across the Goa naval area has got the national flag, and it is being flown proudly. We all live for that flag to be fluttering proudly and freely, and that is our duty, that's our job, and when we see it, it just fills our chest with pride. Thank you so much for speaking to us. Yes. I'll come back to the studio, but I would just want to show this visuals. It's in the memory of those who laid down their lives on 19 December 1961 for the liberation of Andajeev Island during Operation Vijay. These are the brave heart who sacrificed their life for the liberation of Andajeev Island, and this was during the Operation Vijay. Yes, Absolutely. Back to the studio. Fantastic. Thank you very much. Thank you, Alicia. And going straight to Anamika, she's reporting live from the Atari border. That's our reporter, Anamika, and that is where the iconic beating the retreat ceremony will take place. वहाँ पे बारिश हो रही है, Anamika. आप मुझे सुन पा रही हैं? तो वहाँ पे तो बहुत माहौल बनता है. हम खुद वहाँ पे जा चुके हैं पहले, और ये जो बिल्कुल एक तरह से ग्रैंड ट्रंक रोड पे स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड अटारी बॉर्डर में आज कैसा माहौल है, उत्सव का माहौल होगा वहाँ पे, और क्या क्या समारोह होने वाले हैं उसके बारे में जरा हमारे सारे दर्शकों को बताएं. अनामिका, इन अटारी. बिल्कुल जी सर, यहाँ पर करीब 3 से 4 बजे के आसपास प्रोग्राम शुरू होंगे. इस बार प्रोग्राम में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, जिसको लेकर करीब 12 बजे के आसपास कंफर्मेशन होगा. लेकिन अभी फिलहाल यहाँ की मैं तस्वीर दिखा दूं कि कितनी खूबसूरती से ये पूरी जगह सजकर तैयार है तिरंगे के रंग में. वैसे तो यहाँ हर रोज सेरेमनी होती है, लेकिन आज की सेरेमनी बेहद खास है. 15 अगस्त है, और क्योंकि अमृत महोत्सव आजादी का पूरा देश मना रहा है, प्रधानमंत्री भी लगातार लोगों से अपील करते रहे हैं. ये जो हम दिखा रही हूँ इस वक्त में इंडिया, ये जो बॉर्डर है जहां इंडिया लिखा हुआ है, इस पूरी बिल्डिंग को, इस पूरी जगह को तिरंगे की लाइटिंग से पूरी तरह से तैयार किया गया है.
खूबसूरती से इसे सजाया गया है। अंधेरा होगा तो उसको तो देखा जाएगा, लेकिन अभी जो खूबसूरती यहाँ निकल कर आ रही है, हमने जो यहाँ तैनात जवान हैं, जो गार्ड्स हैं, उनसे भी बात की। उनका ये कहना है कि आज हमें 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी खुशी हो रही है। हम आज जो महसूस कर रहे हैं, हम शब्दों में उसे बयां नहीं कर सकते हैं। यूं तो हम यहाँ हर रोज खड़े रहते हैं, हर रोज यहाँ पर हम जश्न देखते हैं, सेरेमनी देखते हैं, लेकिन इस बार का जश्न, इस बार की सेरेमनी बेहद खास होने वाली है। उसमें क्या खास होगा वो तो बताऊंगी, लेकिन अब ये तस्वीर दिखा रही हूं उस गेट की, जो गेट उस सेरेमनी के दौरान खुलता भी है। इंडिया का गेट जहां इस वक्त हम खड़े हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का गेट। कल पाकिस्तान ने भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। मैंने जब यहाँ गार्ड से बात की तो उनका ये कहना है, जो यहाँ गार्ड्स या जो सिक्योरिटी में या बीएसएफ के जवान हैं, मैंने उनसे बात की तो ये सब कह रहे हैं कि आज की जो तस्वीर निकलकर सामने आएगी, उस पार से लोग, सीमा पार से लोग भारत की तस्वीर, भारत की खूबसूरती, भारत का जश्न, भारत के लोगों का उत्साह, उनका गौरव देखेंगे। वहां से आंखें फाड़कर देखेंगे तो तस्वीर आज निकलकर सामने आएगी। बारिश बहुत ज्यादा है और मैं जब सुबह यहां पहुंची थी तो करीब मेरे आने के पहले से ही करीब 3 बजे से ही लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, जो उस सेरेमनी को देखना चाहते हैं। बहुत दूर दूर से, बिहार से, कर्नाटक से, देश के अलग अलग कोनों से लोग यहां पहुंचे हुए हैं। लोगों के जोश को इस तरह से समझा जा सकता है, उनका ये कहना है कि यहां 25,000 लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन अगर परमिशन मिलती है, हमको जगह नहीं मिलेगी, हमें खड़े होकर भी सेरेमनी देखना पड़े तो हम खड़े होकर भी, बारिश में भी उस सेरेमनी को देखेंगे। तो आज जितना उत्साह देश के दूसरे कोनों में लोगों में है, उससे ज्यादा उत्साह आज यहां आने वाले लोगों में भी है। और जो यहां पर बीएसएफ के जवान हैं, उनकी बातों में भी वो उत्साह देखा जा रहा है। आपसे कुछ देर पहले वो तमाम जवान डांस कर रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना है कि आज का जो दिन, आज की जो तस्वीर पूरा देश देखेगा, देश के बाहर दूसरे लोग देखेंगे, उनको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूरे साल अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हर घर तिरंगा, उनकी अपील 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा, और 2 अगस्त से तमाम रैलियों के जरिए लोगों को जागरूक भी किया गया। वो जागरूकता पूरे अमृतसर में देखने को मिल रही है, और बॉर्डर पे तो हमेशा से लोग जागरूक रहते हैं, बीएसएफ के जवान, और उनकी जागरूकता से हम सुरक्षित हैं। और आज उनका कहना है कि आज का जो जश्न होगा वो पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। हाथों में तिरंगा लेकर जो महसूस होता है वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। और उस वक्त जब सेरेमनी शुरू होती है और उस सेरेमनी के एंड होने तक जो उत्साह होता है, जो जोश होता है, वो पूरे दिन, या हम कभी अपनी बातों में जब उसको लाते हैं उस उत्साह को, तो हम हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं वो बताने के लिए। और आज की तस्वीर इस वाघा अटारी बॉर्डर से बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि कार्यक्रम भी अलग होने वाले हैं, जोश भी 2 गुना 3 गुना होने वाला है। देखिए, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कार्यक्रम के लिए, और 15 अगस्त का मौका है तो भारत की तरफ से भी मिठाई दी जाती है। भारत की तरफ से भी देखिए गेट खुल चुका है, गेट खुल चुका है, भारत की तरफ से मिठाई दी जाती है। जो जिस सेलिब्रेशन की मैं बात कर रही थी, जिस जश्न की बात कर रही थी, उसकी शुरुआत तो सुबह से ही हो चुकी है, लेकिन देखिए दोनों ही देशों के बीच किस तरीके से मिठाई का आदान प्रदान होगा एक दूसरे को। हम पाकिस्तान को आज मिठाई खिलाएंगे, और आज उसी तरीके से वैसी ही तस्वीर, वैसा ही सहयोग दूसरी तरफ से भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बता रहे हैं, ये हमारे जवान भी बता रहे हैं कि इस दिन का इंतजार 15 अगस्त, 26 जनवरी या आज के दिन का इंतजार हमने पूरे साल किया है। हम अब एक दूसरे से जब बात करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन करते हैं, तो सब भूल जाते हैं कि कितनी कड़वाहट या किस तरीके से शब्दों के जरिए एक दूसरे पर शब्दों के जरिए तमाम बातें कही जाती रही है। देखिए, तैयारी शुरू हो चुकी है उस जगह पर जहां पर मैं इस वक्त खड़ी हूं, अटारी वाघा बॉर्डर पर। जो तस्वीर बिल्कुल अलग निकलकर सामने आने वाली है, बेहद खूबसूरत तस्वीर आज ये निकलकर सामने आने वाली है। अभी से जिस जश्न की शुरुआत हुई है, वो जश्न आज शाम तक चलने वाला है, 7 बजे तक, जब वो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होगी, वो परेड शुरू होगी। अब दोनों देशों के जवान, देखिए वो जो लाइन है, एक व्हाइट लाइन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जवान है, पाकिस्तान के रेंजर्स हैं, और इस तरफ भारत के जवान जो तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी देर में स्वीट एक्सचेंज होगी, और भारत
ये बताएगा कि किस तरह से हम आजादी के 75 साल तो पूरे कर चुके हैं। हम ये बता रहे हैं कि भारत किस तरह से आजाद है, 26 आजाद है, किस तरह से मजबूत है। और आज प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि हमको अपने 5 कर्तव्य याद रखने चाहिए, और वो कर्तव्य केवल देश का कोई एक नागरिक नहीं या किसी एक ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है या केवल आम नागरिकों के लिए नहीं है, वो कर्तव्य उन वीआईपीज के लिए भी है, उन सभी लोगों के लिए है जो देश में रह रहे हैं, जिनको देश के लिए ड्यूटी निभानी चाहिए। अभी फिलहाल जो तस्वीर मैं दिखा रही हूं, वो तस्वीरें देखकर यहां खड़े होकर बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एकदम मतलब ऐसा महसूस होता है इन तस्वीरों को देखकर। ऐसा लग रहा है कि अगर आप यहां नहीं आए, आप इन तस्वीरों को नहीं देखा, तो आप आजादी के जश्न को तो मनाते हैं लेकिन उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। इन जवानों की बातों में, जो यहां पर गार्ड्स हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं, जो महिला सुरक्षा कर्मी हैं, उनसे जब हम बात कर रहे हैं, उनके शब्दों में भी, उनके चेहरे पर भी वो उत्साह साफ दिखता है। हम थोड़ी देर में उन लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो बेहद खास है, बेहद अलग है। देखिए, तैयारी लगातार चल रही है और थोड़ी देर में भारत की तरफ से पाकिस्तान को मिठाई दी जाएगी। भारत एक सक्षम राष्ट्र है, भारत एक ऐसा राष्ट्र जो पाकिस्तान को समय समय पर यह बताता रहता है, ये दिखाता रहता है कि आप हमसे निकले हैं। और आज भारत जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के सामने जिस मजबूती के साथ खड़ा है, वो बेहद अलग है, वो भव्य है। हम अपनी बातों के जरिए ही नहीं, बल्कि हम अपनी ताकत के जरिए भी हम पूरे विश्व पटल पर अपने आप को कितनी मजबूती से रखते हैं, कितनी मजबूती से अपनी बातें रखते हैं। प्रधानमंत्री जब जाते हैं, दूसरे देश के प्रतिनिधियों के सामने खड़े होते हैं, फिर चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, वहां खड़े होते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। जो तस्वीर उसको निकलकर सामने आती है, वो पूरे देश का सीना गर्व से भर देती है। अब देखिए, शुरुआत हो चुकी है। कल 14 अगस्त का दिन था जब पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, लेकिन भारत का स्वतंत्रता दिवस अलग है क्योंकि पाकिस्तान भारत से ही निकला है और 75 साल पूरे हो चुके हैं। आजादी का अमृत महोत्सव एक तरफ, पूरा देश। अनामिका, अगर मैं ये विजुअल्स देखूं तो वील स्टे फुल फ्रेम विद द पिक्चर्स। मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट something very interesting is happening, Gaurav. On the borders, हुसैनी वाला हो, अटारी हो, और अभी हमने रान ऑफ कच्छ भी देखा, जहां जहां पे हमारे बॉर्डर्स में, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स में जब ये समारोह होते हैं, पब्लिक इवेंट्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग भारत की ओर से पार्टिसिपेट करने आते हैं। एंड यू आर सीइंग नाउ देयर इज गोइंग टू बी द फॉर्मल एक्सचेंज ऑफ स्वीट्स। आई वांट गौरव टू डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एट द अटारी बॉर्डर. Gaurav, maybe you want to describe this, then I'll continue. Gaurav, over to you. Absolutely, Arnab. This is a ritual that happens every year. Exchange of sweets. On the Indian side, there is Atari, and on the Pakistani side, there is Wagah. So when we colloquially refer to it as Wagah border, basically it is the Atari-Wagah border. And here you have people, you have officers of the Pakistan Rangers, and on our side you have officers and men of the Border Security Force. And this is, you know, they're exchanging mementos and sweets. Looks like a packet to me, Arnab. I think they've given sweets to the Pakistani Rangers, and the Pakistani Rangers will reciprocate and you know, also give BSF sweets. And this is a ritual that has happened even in the toughest of times when you know, the relationship between both the countries was at its lowest, except for I think one odd exception when it did not happen. This has been continuing for quite some time. They sort of stopped it, I think, for a while when COVID was there, because there was no parade happening at that point in time at the Wagah Atari border. But it's back, and these are the images. You know, Arnab, beyond simply exchanging of sweets, this is an affirmation by soldiers on both sides that there should be decency in conflict. We are enemies, and in war our soldiers have killed their soldiers have killed our soldiers. But like they say in the Indian army, dushmani mein bhi sharafat honi chahiye. There should be decency in conflict. And when we fight to the death. But when we are not fighting, I mean, they're behaving like good human beings. There is the handshake,
and we have a BSF officer shaking hands with the Pakistani Ranger officers. Again, the shake of the hand, and exchanging gifts, and this is how this ceremony. It's a short ceremony, Arnab. Yeah. It's a short ceremony. It's a ceremonial, thing that takes place, and this is just to affirm that we are standing. And this is not a hot border, by the way. This is the international border, Arnab. So it's not like there is firing happening here, and it is a ceremonial border also, apart from being the international border. But the optics are good, and it makes a lot of sense Gaurav, to do this once in a while. I'll add one thing. जैसे आपने कहा दुश्मनी में भी शराफत होनी चाहिए, but there is when I see these pictures, and what is evident to us is, look where genuine democracy takes a nation. And while we see these pictures, look where we are and look where Pakistan is. We are the world's third largest startup ecosystem. Absolutely. We have set the ball rolling. We are the third largest economy in terms of purchasing power parity. We contribute 7% to the global GDP. And if we have a 10-11% growth rate, we'll become the second largest economy in the world by 2030, 2031. And look at where we are and look at where Pakistan is. And that's because of our outlook, our approach to life, our approach to governance. We look at our stock markets, look at our companies, look at our unicorns. We are 3.1 trillion. We'll be a 5 trillion economy, right? And we will be overtaking Japan as the second largest economy by 2030. Second largest economy in the world, right? We are the indispensable partner for the Indo-Pacific. Look at us geostrategically, Gaurav. From Central Asia to Southeast Asia, we are an arms exporter. We're a weapons exporter. Look at where we are placed, and look at where we will be placed in the global community of nations. So while extending the sweets and hands of friendship and all is all right, it's very good. But I think it's moment for us to also think about the course a country takes determines the outcome. And we are seeing the outcome in our lifestyle. So I couldn't but miss that comment out there as I see these pictures. It's food for thought, viewers. And I go across to Srinagar next. Wonderful pictures coming in from Srinagar, and the change in mood there is also very apparent. I'd like to go across to Zeenat. Zeenat, over to you. What's happening behind you? See, Arnab, as my VJ can show you the visuals from this Sher-e-Kashmir cricket stadium here, and the contingent of J&K police, NCC, CADA. In fact, the students from different schools are here to pay their respects and to celebrate the 75th year of the independence. We are seeing an address from the LG Manoj Sinha, who talked about the situation in Jammu and Kashmir and how after the abrogation of Article 370, how Kashmiris particularly feel free, because earlier it was never possible on the land of Kashmir, where people would say Bharat Mata ki Jai, or for that matter they say Jai Hind or Jai Jawan Jai Kisa. But now all these slogans are being raised by the Kashmiris. In the morning showed you the visuals from the historic Gantaghar, where the tricolor was unfurled by the group of youngsters, and similarly the people are coming to the place. So these are the visuals from the Sher-e-Kashmir cricket stadium, where right now the parade is on. Parade from the Jammu and Kashmir Police, ITBP, CRPF, NCC cadet, and all of the people and the locals have also come to witness the historic parade, because this time it is all free and there is no restrictions on the ground. And we are seeing after the abrogation of Article 370, the mobile phones, the internet is not shut. So that way it is a relief to the people of Jammu and Kashmir. And now we are seeing also the women of the Jammu and Kashmir police being the part of the parade. LG Manoj Sinha is also present here in the stadium. So these are the glorious moments and the glorious pictures coming from the Sher-e-Kashmir stadium, where there are no restrictions and all. This is definitely a relief to the people of
J&K after the abrogation of Article 370, when the restrictions are not in place, the mobile phones have not been shut, the internet has been shut. Similarly, as Manoj Sinha was addressing the audience here, he talked about how the situation in J&K has changed after the abrogation of Article 370. Now in Kashmir, there are no hartal calls, is no stone pelting. We are seeing people, and particularly the youngsters, holding the book and the pen, and they are more into the technology. Because if we talk about the Amarnath Yatra that witnessed a big attack in 2018, this time the Amarnath Yatra, there were yatris, some 3.75 lakh in number, who paid their obscene and Amarnath came, and this time the Yatra once again was an incident fee. Not only the police, the security forces were taking care of the security measures, but now this time the locals were providing a huge support, and we are seeing that the atmosphere, yes, the hawa jo hai wo badal rahi hai, it is changing, the air is changing, the situation is changing, and also the peace on ground can be seen. It is quite visible, because these are the pictures from the stadium where the biggest parade of the Kashmir Valley is taking place. Although at district headquarters, the DCs and other people are holding the parades, they are addressing the audience. But one of the biggest parades coming from the Srinagar city is from this very location. We are not seeing, apart from the LG administration, we are seeing the locals, the school-going children, and in some time from now, also the cultural programs will begin here. That will tell you that how important and how rich is the history of Kashmir, and they will be displaying their art, they will be singing because Kashmir has witnessed a lot of bloodshed in the last 3 decades because of the Pakistan-sponsored terrorism in the Kashmir. But we now see the things have definitely changed on ground. You can see the youngsters, the young kids of the Kashmir Valley being the part of the parade. Today my VJ is showing you the visuals of this J&K police school. This is the police school of the Jammu and Kashmir police. The students of this school are paying the rich tributes and also the part of the parade today. Absolutely, that is Zeenat. That's so heartening to see. Young contingent there at the Sher-e-Kashmir Stadium in Srinagar, where with absolute pride and unison you can see the marching troops out there, change of mood, fitting response to all the people who said the situation in the Kashmir Valley will not change, and how it is changing and how much for the better. We saw pictures from Hussainiwala. Gaurav, over to you. Another ceremony there at Hussainiwala. Can you tell us the significance of this location and what we are seeing on air, please? Gaurav. No, absolutely, Arnab. This is again just like the one that happens in Wagah, Atari border, Hussainiwala again in Punjab, Arnab, and what you're seeing is this Jawan from the Rangers of the Pakistan Army exchanging sweets, and both sides will deliberately put tall soldiers there, because it's also, if I may say, a bit of showing to the other person who we are. And you'll also have these very tall, 6.5 feet tall, 6 feet 8, 6 feet 9 inch tall BSF Jawans over there. And this is there from Hussainiwala for a bit, but we are getting other pictures from other locations that were constantly coming in on our live feed. The pictures from Hussainiwala should be coming back in some time. In these places, sometimes the bandwidth is just a little bit patchy. But I'd like to go back to Amardeep and Khajuwala, to keep a string of lives on this Monday morning. Amardeep, from Khajuwala, ladies and gentlemen, which is 20 kilometers from the Indo-Pakistan border. Amardeep. देखिए सर, बिल्कुल रिपब्लिक के दर्शकों को बिना किसी देर के मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं और जहां पर लोग बीएसएफ के जवानों के साथ में गुनगुना रहे हैं। अनवर, क्या गुनगुनाना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो अर्नब सर को मेरी तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। अर्नब सर के लिए और रिपब्लिक टीवी के समस्त दर्शकों के लिए मैं ये गाना गुनगुनाना चाहूँगा हमारे बीएसएफ की तरफ से। कोड देना। बिल्कुल। तलवारों पे सर बार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है,
तब जाके कही हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी जमीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महबूब रहे तेरी आन सदा, चाहे जान में ये रहे ना रहे। है मेरी जमीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो सरसों से भरे खलियान तेरे, जहाँ झूम के भंगरा गाना। ओ देश मेरे, जल्दी से गा दीजिए अनवर, जल्दी से हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं आपके साथ गुनगुना रहे हैं और हमारे दर्शक। बिल्कुल सर। ओ देश मेरे, ओ देश देश मेरे तेरी शान से के, आप भी गाइए। ये धन है क्या, कोई धन है क्या, आप भी गाइए। बिल्कुल आपके लिए तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साथ में सभी गाइए गाइए गाइए। सर आपको गाना पड़ेगा। गाइए। ओ देश मेरे, ये एक मिनट। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके, कोई धन है क्या, क्या तेरी से टरके, तू धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग में मेरा मैं तेरा परिंदा। हे अर्जी दीवानी जहाँ मर्जी धुनी बानी, एक रोज मेरे श्री है शाम हो। कहीं याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, हर जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सज के, धन है क्या तेरी शान पे सज के, रोशन हवा में जिंदा, तू जाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी मुखातिब करा देता हूँ। तमाम लोग सुर में सुर मिला रहे थे। आज कितना बड़ा दिन और अमृत महोत्सव को किस तरीके से देखते हैं? आज वाला दिन बहुत बढ़िया दिन है। 15 अगस्त का आजादी दिन है, स्वतंत्रता दिवस है। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे मातृ शक्ति है जयघोष के बीच में, वो मातृ शक्ति जिन्होंने तिरंगा यात्रा पूरी की, न सिर्फ तिरंगा यात्रा पूरी की बल्कि यहाँ पे है ना, सबसे बड़ी चीज है कि बॉर्डर चौकी चौकी जाकर के इस मातृ शक्ति ने तिरंगा भेंट किया है। क्या कहेंगे आज आजादी के अमृत महोत्सव के दिन? भारत माता की जय। जी 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 जी। स्वराज का अभिनंदन, ध्वज का वंदन, इस थीम को लेके पिछले 2 दिनों से जोधपुर प्रांत की 75 बहनें बॉर्डर के जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर की 75 चौकियों पे प्रत्यक्ष जाके जवानों को ध्वज प्रदान किया है, उनको रक्षा सूत्र बांधा है, ध्वज प्रदान करके जनगण मन किया है
और अपने देश के आज़ादी के लिए जो शहीद हुए ऐसे अमर बलिदानियों के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है, स्वतंत्रता के अमर सेनानी, वो पुस्तक भेंट करी है और राष्ट्र सेविका समिति की परिचय पुस्तक भी दी है। इस प्रकार से 2 दिन में 75 चौकियों पे जाके तनोट से लेके हिंदूमल कोट तक यह यात्रा एक साथ शुरू की गई और एक साथ कल इसका समापन हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में जो है लाल किले से दिया था, उन्होंने महिलाओं का जिक्र किया, उन्होंने सशक्त महिलाओं का जिक्र किया, तमाम उन महिलाओं का जिक्र किया जो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, गतिशील भारत को बनाने में योगदान दे रहे हैं। जी, हमारे राष्ट्र सेविका समिति संगठन भी 1936 में जिसकी स्थापना हुई थी, ये पूरे भारत सहित विदेश की भी 40 स्थानों पर काम कर रही है। ये विश्व का सबसे बड़ा महिला संगठन है और ये महिलाओं को स्वशक्ति बनाने के लिए तो भारत माता की जयघोष, बीएसएफ के जवान, महिलाएं, बच्चे, तमाम वो लोग जो आजादी के अमृत महोत्सव में आज शामिल हो रहे हैं, दुश्मन देश को आंख दिखा रहे हैं। जोश बहुत हाई है और यही कहेंगे कि बिल्कुल जोश सबका हाई है। और आपको सुन के, हमारे जवानों को सुन के बहुत अच्छा लगा। अमरदीप, आपकी और एक टैलेंट है, पता चला कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो आपको हमारे चैनल के सब लोगों के लिए भी अलग से परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। That is right from Khajuraho, ladies and gentlemen, to Jallianwala Bagh, where our reporter Priyanka is live from the Jallianwala Bagh Memorial Park, ladies and gentlemen, which carries a horrific scar of our freedom movement. We can never forget what happened there in 1919, ladies and gentlemen, when General Dyer fired upon an innocent crowd. Over to you, Priyanka. Over to you, Priyanka. Arnav, I was listening into those very colorful pictures coming in, but let's take a step back because, as you pointed out, this is an event from our history which is actually a very horrific incident. We are here at the Jallianwala Bagh Memorial itself. Let me show you where we are exactly. This is one particular Amar Jyot that has been established, which is in memory of the people that had lost their lives in 1919 when this very place where they had been sealed off in the Jallianwala Bagh, and of course they had been shot at continuously for 10 minutes, and the casualties had gone more than 1,000 people that had lost their lives. And of course even today in the UK it is maintained that the casualties were about 379 or so, but we see the names. You can see, Arnav, the names of the people who lost their lives engraved. This is in honor of the martyrs of the Jallianwala Bagh massacre that took place on 13th April 1919. Arnav, let me describe the entire ambience here. Let me describe the entire scene, the entire emotions here as well. We are here where people are, going inside the Jallianwala Bagh, trying to go, and just on today, the significance of them visiting here is to also take a step back and recall what really the history had been of this particular place. And this is also in lines with the kind of speech, in fact, the Prime Minister's speech as well, where he had said the colonialism of the mind. And of course, this is something that is very important. This particular event in history is extremely important to recall, to remember, to never forget that this is something that had happened as well. Let's make our way inside, Arnav, and we will try to get in all the visuals because, there are several places where the bullet marks are still there. All of that, which is a reminder of the kind of incident that had taken place in April in 1919. And of course, we are seeing how the people had been captured here, people had been trapped here, and for 10 minutes continuously, they had been shot upon as well. And we will be bringing you all those visuals of the wall where these bullet marks have also can be found, the well in which several of the people had climbed in, they had jumped in to save their lives. And that is the kind of incident that had taken place here in Jallianwala Bagh in April in 1919. And of course, we are also showing you the Smarak, the Jallianwala Bagh Memorial, in fact, we are showing you right now. And you can see today the significance of this day where hundreds of people are pouring in to remember what really our history had been, what really had gone on here
in 1919 as well, how the Indians had also fought in the freedom struggle. And this particular incident of the Jallianwala Bagh is noted as by many as a very tipping point, as a decisive point where the Indians in fact had a realization that they need to fight and that this was an atrocity against them. And even though on paper we had seen that the Britishers had maintained that there is minimal force being used, but it was not so, and that was something that came out in the open in the Jallianwala Bagh incident when they had been shot upon as well. So we are seeing the people that are pouring in here, all of them trying to remember, trying to take a minute and remember the kind of incident that had taken place here in 1919. And no, well, I'm just seeing these pictures here, and it's quite clear to me, Gaurav, that we have lots of people visiting the memorial on this Independence Day. And I think the fact is, again, we underline the fact, Gaurav, that this has become a public commemoration. And we don't have to rewrite our history. All we have to do is we have to remember our history. And remember our history with pride. Remember Bhagat Singh, remember Udham Singh, who avenged what happened at Jallianwala Bagh and who was hanged for it. And who went smilingly into the gallows to take revenge for what happened at Jallianwala Bagh. Also to remember, Gaurav, that the arrogance of the British haven't really apologized for Jallianwala Bagh yet. It's 2022, I don't think it takes much for the British to just issue a formal apology, which they wouldn't. Absolutely, Arnab. Arnab, the two names that you mentioned, you mentioned Shahid Azam Bhagat Singh, you mentioned Shahid Udham Singh. Arnab, you see, these are the real heroes who have been hidden from us for such a long time. And Indians have been kept away. Shahid Bhagat Singh is a passing mention in our history. What a shame. Shahid Udham Singh is a passing mention in our history books. What a shame. And Arnab, these are the heroes who will propel modern India to greatness. Because like the Prime Minister said, take pride in our past. This is our past. Chandrasekhar Azad is our past. Bhagat Singh is our past. Chhatrapati Shivaji Maharaj is our past. Maharana Pratap is our past. Maharaja Ranjit Singh is our past. But we have been taught history that is convoluted. Which is why, this feeling of inferiority sometimes. That, we need a certificate from the West. When Washington Post says something, it's okay. When the New York Times publishes something, then it's okay. That is precisely. And so why not the Republic Media Network, Arnab? No, the point is today, we are proud. Of course, and when the Prime Minister says we don't need a certificate from anyone, I completely understand. In fact, we need to remind ourselves and the future generations who are growing up in a very privileged environment, given the fact that we have achieved so much economically. We need to look back, and can I bring the pictures from Jallianwala Bagh back and think about what it represents in terms of the brutality of the colonial countries. The brutality of the colonial countries who today talk about the Commonwealth. There is nothing common about the wealth. There was never anything common about the wealth. And we need to remind ourselves that this is an example of Western fascism. The British were fascists, and there is no doubt about that. The sooner we remind ourselves about that, rewrite our history to remind the people of India, the future generations, of what we have suffered as a nation at the hand of these brutal powers. Ladies and gentlemen, I'm going to take maybe a short break at this point of time, and when I come back, we will look at the political significance of some of the things the Prime Minister said. We'll run some clips, and of course, we have to go live to many other locations. So it's been a wonderful morning. I'd like to thank General Dhillon, who has been with us. This has been wonderful being with you. Gaurav, don't go away, and I'm not going away anywhere because we have so much ground to cover, so many places to take you live to. Back in just a bit. मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया है, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है दोस्तों। उनको आज मैं सलाम करता हूं।
show you the flags behind me. Even every single household is putting the flags on their homes, and in fact this is happening. Single household is putting the flags on their homes, and in fact this is happening from past almost 10 days. The people are coming out by their own in their own residential areas for Har Ghar Tiranga rally, and in fact making their groups, spreading the message that the entire nation is standing in one line. The entire nation is standing in just one line, and that is the जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें झकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है, और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। सदियों से हमारी माताओं बहनों के त्याग बलिदान के कारण परिवार नाम की जो व्यवस्था विकसित हुई, यह हमारी विरासत है। इस विरासत पर हम गर्व कैसे करें? हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नारी तो नारायणी कहते हैं। हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। हम वो लोग हैं जो हर कंकर में शंकर देखते हैं। यह हमारा सामर्थ्य है। हर नदी में मां का रूप देखते हैं। पर्यावरण की इतनी व्यापकता, विशालता, ये हमारा गौरव। हम विश्व के सामने जब खुद गर्व करेंगे तो दुनिया करेगी। भाइयों बहनों, हम वो लोग हैं जिसने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। हम वो लोग हैं
जो दुनिया को कहते हैं एकम सत विप्रहा बदौ वदंती, आज जो होलियर देन दाव का जो संकट चल रहा है, तुझसे बड़ा मैं हूं, ये जो तनाव का कारण बना हुआ है, दुनिया को एकम सत विप्राधा बहुधा वदंती का ज्ञान देने वाली विरासत हमारे पास है। जो कहते हैं सत्य एक है, जानकार लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, ये गौरव हमारा है। हम लोग हैं जो कहते हैं यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, कितनी बड़ी सोच है। जो ब्रह्मांड में है वो हर जीव मात्र में है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, ये कहने वाले हम लोग हैं। हम वो लोग हैं जितने दुनिया का कल्याण देखा है, हम जन कल्याण से जग कल्याण के राही रहे हैं। जन कल्याण से जग कल्याण की राह पर चलने वाले हम लोग जब दुनिया की कामना करते हैं तब कहते हैं सर्वे अपनी सुखिनो संतु सर्वे संतु निरामया। सबके सुख की बात, सबके आरोग्य की बात करना, ये हमारी विरासत है। और इसलिए हम बड़ी शान के साथ हमारी इस विरासत का गर्व करना सीखें। ये प्राण शक्ति है हमारी, जो हमें 25 साल के सपनों पूरा करने के लिए जरूरी है। दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है, ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके क्या जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है, एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है। And ladies and gentlemen, welcome back. We now have our political debate on the Prime Minister's speech. Well, I can only say there should be occasions when there should be no politics. But we don't live in an ideal world. Pawan Verma, good to have you with us. We have Ghansham Tiwari with us of the Samajwadi Party. Mr. Pawan Verma resigned recently, I think day before yesterday, from the Trinamool Congress, and there is no real suspense on his next destination. Some people say he's going to be back with Nitish ji, but anyway, he continues to be a prominent voice in our national political fabric. And to take them on will be Dr. Sudhanshu Trivedi, Member of Parliament of the Rajya Sabha, senior national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. I want to start with Pawan Verma. Pawan ji, the Prime Minister is spot on the broad framework. I feel he's laid out a very grand vision for where we should be 25 years from now. He's spoken about individual responsibility, pride in cultural heritage, unity, responsibility of the citizen, and he's talked about a Viksit Bharat. But he has also talked about the things that pull us back. And principle there is the fight against corruption. I know that the opposition parties have been trying to politicize the action against the corrupt recently. But the Prime Minister has called on the people. And he has said that we have reached a very critical point, Nirnayak point in the fight against corruption. And he has also said, Mr. Verma, I have to intensify the fight against corruption. So if the opposition parties thought that by criticizing the agencies that will stop, I don't think so. In fact, I think the sense I get is that the fight against the corruption, prosecution against the corrupt will only intensify despite all opposition pressure. That's the sense I got. What's your takeaway from that? First of all, Arnab, I completely endorse what you have said, that there are some occasions when we celebrate a milestone,
rising above partisan politics. And today is one such day. Today is the 75th anniversary of our independence. We have reasons to be proud of the fact that we have not only survived as an independent nation, but have survived as a democracy and made significant strides in many diverse fields. Let me also say, the Prime Minister was, as usual, at his eloquent best. And he spoke in this speech in particular. This speech was full of idealism. It was not one of making grandiose promises. We will double farm incomes by the next 2 years. But it was about idealism. And some of the points he mentioned, I fully support. For instance, this point that he said of Gulami. Gulami, as I understand it, and I hope the Prime Minister meant it in that form, is from any vestige of colonially imposed inferiority. You know, the success of colonialism lies not in your physical subjugation, but in the colonization of your mind. And while the countries become independent, it takes a long time to get rid of that sense of heenta, that sense of lack of pride in who we are, in the attempt to emulate the ruling power or what it represents. So therefore, I think that these are important points he made on unity, integrity, on paying due, taking note of our grand heritage. Having said that, you have first raised the issue of corruption. I think the Prime Minister has touched an important point. We have to take a strong and resolute stand against corruption, especially in politics. But I do believe that this important message will carry greater credibility if the pervasive perception is not that it is somewhat selectively targeted against the political opponents of the regime. Now, you will say I am politicizing it, but I want to say to you, I'm talking perhaps of perceptions and also of facts. Let me give you an example. Since 2014, there have been 609 cases against political leaders. Of these, 570 draconian laws and other provisions of the law have been slapped. 570 out of 609, only against those who are the political opponents of the regime or are critical of it. Then, there is a perception, while I fully support the Prime Minister on his muhim, his campaign against corruption, that those who join the BJP are somehow cleansed of what their corruption was. Let me give you the example of Himanta Biswa Sarma. Nothing personal, but the BJP carried out a sustained campaign against Himanta Biswa Sarma for his involvement in a water supply project in Guwahati. They published a booklet on his many corruption allegations. And they said that we will take this matter to the CBI. Mr. Sarma changes sides, joins the BJP. The BJP forgets about its own promise or resolve to take it to the CBI. Mr. Sarma is seemingly cleansed and he is now the Chief Minister of Assam. Let me take another example. You have the case of Suvendu Adhikari. He was interrogated by the BJP in his involvement in the Sarda Narda scam in 2014. After he has joined the BJP, there has been no further interrogation. And he is today the leader of opposition of the BJP. I can give you more examples. Mr. Yediyurappa, against whom were many serious charges, he was made a chief minister in spite of it. So what I am saying is that when we speak of corruption, we support the Prime Minister.
But it should not be perceived as a corruption being pursued only against those who are political opponents, and it should include that rare capability of looking into the mirror yourself. So, since you raised corruption, I'll end here. There are other issues I want to speak on. Okay. You know, I would let those two specific instances be responded to by Sudhanshu Trivedi. My only counter comment at this point, and I'm not putting this as a question to you, just an observation before Sudhanshu Trivedi responds to you. This definition of political opponents is very sweeping and very broad, Mr. Verma, and the danger is it can end up including a Nawab Malik, who is believed to be holding on to properties or properties associated with people linked to Dawood Ibrahim. It can end up including, for example, a Rana Ayub, who would be a quote-unquote, in your definition, a political opponent of the government, but who collected money in the name of COVID and then put it in individual bank accounts. So the clear counter would be, do people who qualify as political opponents of the regime, do they get a free hand? Or should the cases of corruption prior 2014 be disregarded? These are just two counter thoughts of mine, but Sudhanshu is dying to respond to you. Sudhanshu Trivedi, please. Arnav, first of all, I would like to say we have just completed the 75 years of independence, and Prime Minister has asked that the task is still remains to be accomplished. What task? We have got the power, we have got the government, but have we got the Swaraj, the concept of Swa? We have to get out of the colonial mindset. And there are n number of things of colonial mindset. But since Pawan Verma ji and also Mr. Tiwari is an intellectually oriented person, so I would like to say the biggest fundamental colonial mindset which we have to get rid of is, which was a concept of our nation. Sarzamine Hind par aqwam alam ke firak kafile baste gaye Hindostan banta gaya. We have to set aside these rubbish ideas that the people keep on settling, and that's how India was created. No, we were the cradle of civilization. We were the beginning of civilization. Himalay ke aangan mein pratham use kiranon ka de upahar. Usha ne has abhinandan kiya aur pehnaya hirak har. Jage hum lage jagane vishwa lok mein fir phaila alok. Vyomtam punj hua tab nasht nikhil sanskriti ho uthi ashok. Jaishankar Prasad ji has said, we have started the civilization, knowledge and all light in this entire world. That's why the name of our country is Bharat. Now, coming to the political allegation. Though it was not an appropriate day for political allegation, we could have done it from tomorrow onwards. But I would like to say, Pawan Verma ji has raised a very appropriate point. Cases against political opponents. Sir, I would like to give you one example that the Congress party in their manifesto have said that they will remove the sedition law because this has been grossly misused. And you know, after 2019, which was the first government which has used the sedition law, it was Rajasthan government. Against whom? Not against terrorists, but against the MLAs. And whose MLAs? Their own MLAs. The Congress party's MLAs and ministers. And now the people are trying to say that this should not be misused. And as far as the corruption allegation is concerned, with due humility, I would like to ask, before 2014, when we were not in power, all the allegations of corruption was on the other side. Whether it was 2G, it was not allegation on us, CWG, coal, all things, allegation was not on us. They were always under the eyes of suspicion. I have to intervene for a minute just to take the pictures live. And viewers, this is the President of India, so I have to intervene. Can we go full frame to the pictures? Ladies and gentlemen, the President of India, the Commander-in-Chief of our armed forces, is for the first time at the National War Memorial. This is a presidential precedent. This is a very, very significant moment. I'd like Gauravaria back on this. We're taking the live pictures from DD, ladies and gentlemen. And you see the Defense Minister Rajnath Singh and the service chiefs accompany President Draupadi Murmu to the National War Memorial. Let's cut to these pictures live for a moment with the ambience.
and the President shall be laying a wreath, taking steps towards laying a wreath at the National War Memorial in the heart of the national capital, ladies and gentlemen, near India Gate. A very, very important event. This is not a convention, let me tell you. This is a presidential precedent being set today. And precedents are generally honored. So while we see Draupadi Murmu for the first time at the National War Memorial, this becomes a precedent for the future. On a day when the Tiranga is uniting the country, this gesture by the President of India towards our armed forces will go very, very far. And the President going forward, laying the wreath, paying homage, and taking a step back as the armed forces in all their glory stand and pay salute. Over to you, Gaurav. You're seeing these pictures. As I just said, this is a first. This is a precedent. Can you just place the significance of these visuals to our viewers, Gaurav? Absolutely, Arnab. Thank you very much. This is President Draupadi Murmu, Supreme Commander of the Armed Forces, paying respects at the National War Memorial. For our viewers, the National War Memorial has the name of all the martyrs after 1947. Since India became independent, and has over 25,000 names. What you saw, the music played on the trumpet, was the last post. The last post is played to remember those who laid down their lives in the line of duty. And the trumpeters were a team from the Army, Navy and the Air Force here. Everybody at attention at Savdhan, remembering the martyrs who laid down their lives. And this is where you see the memorial. This is an aerial shot of the memorial, and in the distance you see the India Gate, where all the people who laid down their lives in the British Indian Army, the Navy and the Air Force in the First World War and the Second World War. Here, the Army Chief, the Navy Chief and the Air Force Chief behind the Supreme Commander of the Armed Forces, President Murmu, at the National War Memorial. These pictures coming to you live, ladies and gentlemen, on Republic. We are covering all parts of the country. You've seen our coverage. We've gone to Port Blair, we've gone to Leh, we've gone to Arunachal Pradesh, we've been to Atari, we've been to Hossainiwala, we've been to Kanyakumari, we've been to the Ran of Kutch, we've of course been to Srinagar, and we have been to Nagapet in Gujarat. So we're bringing you these live pictures from different locations. I think this is a remarkable gesture. I think it's very important. And I think it is what the true significance of these visuals and this gesture and this what I think will be a precedent for the future will be the honor that we give to our armed forces in every aspect of our country's life, every moment, every celebration. Once again, live pictures, then we'll go back to the debate.
President now making her way back, greeting some of the dignitaries who are present there, including the Defence Minister of India, Rajnath Singh, the three service chiefs, saluting them and then heading back. Thank you for cooperating with that to all our panelists while we brought you that live broadcast. And now I go back to Sudhanshu Trivedi, who is responding to Pawan Verma's introductory comments. Sudhanshu Trivedi, some points were made by Mr. Pawan Verma. You can please resume your arguments. Please, go ahead. And now, though after watching this movement, I, not with a full mood, I want to respond, but still, sir, the question was raised, so I want to just respond. In the last 75 years, sir, forget about on the various ministers and the leaders. If there was an allegation of corruption on the prime ministers, it was not under our government. You remain for the first time, during Indraji's regime, the Nagrawala case, there was a suspicion of doubt. Then Rajiv Ji's regime, Bofor's case, direct allegation on the Prime Minister. Then P.V. Narasimha Rao, he has to appear in the court of law on various allegations of corruption. And during the Manmohan Singh's government, the famous caged parrot word came for what? When coal is scammed, the CBI was to file the affidavit and they said that it was called by Prime Minister office officials, PMO's officials to it. So it means all the time the allegation was on the others, whether we are in power or they are in power. So it is the basic fundamental question of corruption. It's not the question of getting cover. And one more thing, Prime Minister has said, कि भाई हमें भ्रष्टाचारियों को महिमा मंडित करने से भी रोकना होगा. क्यों? There was several times an allegation, then उसको glorification, and it is also connected to परिवारवाद. जब परिवारवाद, भाई भतीजावाद या जातिवाद आता है, that lays the legitimacy of justifying corruption. Right or wrong, my man is strong. So that's why Prime Minister has put both the things together. That if the youth wants to come up and should get a clear-cut, open, transparent, equally available opportunity to usher in every field, then these two menaces, the corruption and the family fiefdom, should be done away with. This is nothing to do with politics. If we want to make India next 25 years our legitimate due, we are there by 2047, sir, not to become the superpower of the world. China may be rising to dominate the world, but we are going to rise to motivate the world. And the first example was after 2014, जब योगा दिवस आया, तो आज बताइए क्या है? चाइना का राइज होता है, हर आदमी घबराता है कि मुझे दबा न ले. योगा है. Forget about nations, even persons get motivated for both their health and spirit. So that is just but a glimpse. Or 2025 mein one more thing. Today we are the only country which gives a message that we do not want to dominate, subjugate or annexation. From where? राम मंदिर जिस दिन बनकर तैयार होगा, भगवान राम ने जब लंका का विजय प्राप्त किया, has he done annexation? No. Has he done subjugation? He has not appointed any of his deputy or viceroy. Has he forced Lanka to have any contract, means domination? No. It is just the set of values that has been established and then you go ahead. That's why even the entire geopolitics of the world, our ancient virasat, जो उन्होंने बोला, वो हमारी विरासत ही दुनिया को वो प्रेरणा देगी. That's why this was a very pious, very appropriate and a very epoch-making era in which we are entering, which Prime Minister has called Amrit Kal. Yes. You know, I also must mention here, viewers, we saw pictures of the National War Memorial. I don't want to politicize this, but we must remember that the Vadra Congress had opposed the setting up of a National War Memorial near India Gate. They said it should be a hangout zone. This is a change in mood, a change in perspective. We cannot disregard it. But I'd like Ghanshyam to come in at this stage. Ghanshyam, see, the argument that Pawan Verma made, why are BJP leaders not getting arrested or why are they not being caught for corruption is the broad argument. But you see, there has to be a case. There is nothing called some opposition leaders when they were in power have been found to be corrupt. Hence, we need to catch an equal number of people from the ruling party. That logic does not work. In fact, on the case of Himanta Biswa Sarma, a point raised by Pawan Verma, where Mr. Verma forgets to mention that there is no document, no evidence.
No electronic evidence, no physical evidence, which has been found even in the Congress time to prove any financial benefit to him. But it has become part of folklore. So there is no evidence. There has been no evidence. The agencies earlier or now have not found any evidence. The individual has joined the investigations, is a witness, is cooperating, but it becomes part of the narrative. Hence, therefore, this question of being equal on corruption does not hold, Ghanshyam, because you cannot compare this prime ministership with the prime minister of Manmohan Singh. Manmohan Singh legitimized corruption. Manmohan Singh said corruption has become necessary because he said it's a compromise of coalition politics. These were his words. So we can't equalize the two, but yes, please, Ghanshyam. Arnab, a very happy Independence Day to you, my fellow co-panelists, and every one of your viewers. And let us hope with determination and self-belief that our joint efforts will make the country developed. Our joint efforts will build a better nation for the future generation. As far as the Prime Minister's speech is concerned, I was just looking at the first speech. If you look at the Government of India website, it gives you the first speech of the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru ji. Do you know, Arnab, how many minutes did he speak? You know how long that speech is? And does anybody know here? The speech is 4 pages. 4 pages. Prime Minister Jawaharlal Nehru spoke 17 times. Indira Gandhi spoke 16 times. Lal Bahadur Shastri spoke 2 times. And you look at all those speeches, and they were brief speeches. The point I am trying to make is, when you have substance, you speak with brevity and clarity. If the Prime Minister of India had substance, in 10 minutes he will say that in 2014 I promised this, here is the delivery. Here is the black money, 15 lakh rupees. Here is the 2 crore jobs. Here is the bullet train. Here is the doubling of farm income. Here is the house for every individual. Here is the proof of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. Instead, there is a 90-minute lecture. And there's a media revision of this 90-minute lecture. There is a saying, नाम बड़े और दर्शन छोटे, या बड़ा बड़ाई ना करे बड़ा न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टकामा मोल. Every one of us went to school on 15th August and on 26th January, we celebrated Independence Day and we brought that celebration home with the sweets. There was never a display that show me, I doubt you, you have to prove your nationalism. This government has instilled a doubt in every citizen's mind and they have given a license to BJP that they will come and give you the certificate of nationalism. What have they done? What have they achieved in these 9 years? Has the poverty reduced? Do Indian youth feel that they will get jobs? They tell the parliament that 22 crore jobs youth applied and 7 lakh got jobs. And you talk about corruption, Arnab? Please tell us, where are you right now? You must be in Mumbai. Do you think the government in Maharashtra was made out of charity? The neighboring Goa government is made out of charity? Gujarat, the election was won out of charity? And these legislatures who went to Assam, your home state, did they go and conduct charity? BJP is today at the core of corruption in India. They in their blinded mission to become the richest party in India and the richest party across the world, they have become the core of corruption. Look at Transparency International. So I think it is important at this stage of the nation, when everybody listens to the parliament, to the Prime Minister, that he speaks truth. We don't want our Prime Minister to be a hollow man whose words do not matter. We want him to speak with brevity, with clarity on words that matter. And as far as Pandit Jawaharlal Nehru ji is concerned, in 1934, his book Glimpses of World History came. Letters written from Naini jail, Bareilly jail, to his daughter, speaking about how women in India will build the new India. What are we talking about? He's repeating what was said in the first speech, कि मैं प्रथम सेवक हूं. 75 years later, he's repeating the idea of women leading India 90 years later. And we are here to sit and clap and forget what he said 8 years back, 9 years back, 5 years back, 6 years back. I think it is important the Prime Minister faces the truth in this nation if we want to build the nation forward. Okay. Now, if you finished before Sudhanshu speaks and Abhishek comes in, I would like to say a few things. 3 things, in fact.
Yes, this country has changed, Ghanshyam, and it's changed a lot. Because prior to 2014, you know what the mindset was which was allowed by the previous government? तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा. And that was seen to be freedom of expression. Allow me to complete. It was seen to be freedom of expression. If you questioned it, you were told it's an aberration. You were told it did not happen. So I think it was a complete compromise with the sovereignty of this country which was allowed, which nobody would dare to today. Second point, corruption. Ghanshyam, you mentioned corruption. You mentioned the corrupt. We are today in the 8th year of the Modi regime. Let me remind you, because you may not have been in politics then, but I was in journalism. By the 6th year of the UPA government, the stench of corruption was nauseating. The dirt and stench of corruption, uski boo, sahi nahi ja rahi si. CWG, 2G, Devasisro, a prime minister who shamelessly sat in a press conference and said, these are some of the compulsions of coalition politics, who institutionalized corruption and cravenly became a situation where he was agreeing to the acts of Sonia Gandhi, who was busy taking first-class upgrades from Vijay Mallya, and a prime minister returning from a foreign trip saying, we have to save Kingfisher Airlines. You talk about corruption. You have no idea how neck deep and dirt there was as far as corruption was concerned. And now, let me lastly come to the issue of sovereignty and national pride. A government, a bunch of politicians who compromise the country's security. The one thing you promise not to give up. You talk about coalition governments. I.K. Gujral, who committed the sin of dismantling all our foreign intelligence assets. Whose women fancy was he running to? Did the Congress not support him? Did I.K. Gujral ever take acceptance for ruining our sovereign interest? Did the Congress ever apologize for not building the infrastructure right up to China and ensuring, do they have any right to talk about what's happening in the borders? In fact, I would say it will take us some time. But if we all work together, we will be able to undo the dark deeds prior to 2014 in a quicker way than possibly has been possible so far. Now, Sudhanshu can respond. I had to respond to Ghanshyam Tiwari because Ghanshyam, remember, the Bharat Tere Tukde Honge angle did not happen without 70 years or less than say 70 years of allowing it to happen. The Burhan Wani sympathizers did not creep up overnight. Gautam Naulaka did not celebrate Mannan Wani in Aligarh Muslim University overnight. It was allowed. And today, as much as what we talk about, you want to talk about where we are. I'm surprised you're a young politician. You don't know where we are. As a country, Ghanshyam, we are the first country to succeed in maiden interplanetary mission. Were you not there? We're the first country. You don't know where we are, the 5th largest nominal GDP. 3rd in purchasing power parity terms. The only economy of this scale to defy every single global economic trend. You talk about where we are. You know where we are, but the problem is, Ghanshyam, you are not there. You know where we are. You are not there. You are not in power. You talk about where we are. You know exactly where we are. In the global narrative, Pawan Verma knows where we are when it comes to climate change. When it comes to the G8, the G20, he knows where we are and where we will be also in the future. Problem is, can you be generous enough to say, even if we are not there, we will take pride in where the country is. Now it's over to Sudhanshu, and let Abhishek and Sudhanshu take the debate forward. I'll step back, otherwise I'll continue for a long time. Yes, please. No, Arnav, before responding to what Ghanshyamji has said, I would like to say 2 sentences. When I have seen this war memorial, the thought came in my mind. हमें तो हिस्ट्री में यही पढ़ाया गया ना कि हमारा इतिहास सिर्फ हारने का है. The fact of the matter is, we are the country who defeated Alexander, then subsequently Seleucus, then Demetrius, then Menander, all the Greek invaders. Then we defeated Shaks, then we defeated Parthians, then the Huns, which have squandered the entire Europe, has got such a befitting reply by Samudragupta here, they got defeated. Then the Arabs,
which has squandered the entire Middle East. They got defeated by Bappa Rawal. Then these Turks, they got defeated. Then the Afghans got defeated. Then the Mughals came and they took around 600 years, 712 Muhammad bin Qasim came, 1527 when Babar tried to control. Then Dutch, then Portuguese, then Britishers. Such a long time of struggle for fight, and still we survived, only surviving civilization of the ancient world. The war memorial gives me an inspiration. That's what the country we were. Now coming to the allegation, he has said when the substance is there, it's a very small thing can be said. Yes, Jawaharlal Nehru ji has said 14th, 15th August night, tryst with destiny, sir. But I would like to remind 1.5 to 2 million people were massacred. And 1.5 to 1.75 crore people have left their home. This is the biggest exodus in the documented history of the mankind. और दुनिया की बड़ी से बड़ी blood revolutions में इतना खून रक्तपात नहीं हुआ. Even when Moses moved from Egypt to Judea, ये 1.5 करोड़ लोगों का उल्लेख नहीं है. तो ट्रिस्ट ऑफ द डेस्टिनी हमारी ये थी, जो 1.5 से 2 मिलियन लाशों के ढेर और 1.5 से 2.25 करोड़ बेघरबार हुए लोगों की सिस्कियों पे टिकी थी. दिस वाज द सब्सटेंस ऑफ ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी. So that's why if we want to do politics, its situation is different. As far as Modi ji is concerned, from where we have come, sir? अभी अर्णव ने बताया भारत तेरे टुकड़े होंगे, छोड़ दीजिए. ये बताइए मौत का सौदागर 2007 और मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा 2014. Then just few months back, मौत की कामना, फिर हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, क्या क्या नहीं बोला गया. And still you look at the person who has not taken even a leave for one day and relentlessly working for the country. इसलिए जो आपने बोला था ना, मैं रहीम का दूसरा दोहा सुनाता हूं. जे बड़ेन को लघु कहें, नई रहीम घट जाएं, और गिरधर मुरलीधर कहें, महिमा बदलत ना है. इसका मतलब बड़े व्यक्ति को, जो मोदी जी के लिए आप करने का प्रयास कर रहे हैं, छोटा सिद्ध करने का कितना भी प्रयास करिए, वो छोटे नहीं होते. भगवान कृष्ण को इतना बड़ा पर्वत उठाने वाला गिरधर कहिए या छोटी सी मुरली उठाने वाले मुरलीधर, उनसे कोई प्रयत्न नहीं पड़ता. एज फार एज करप्शन इज कंसर्न, सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसमें एक ऐसे नेता भी हुए, गायत्री प्रजापति, जो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन से इन ए स्पैन ऑफ 1 decade हैज बिकम द ओनर ऑफ 150 crore ऑफिशियली डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी विदाउट डूइंग एनी जॉब, विदाउट डूइंग एनी बिजनेस. एंड स्टिल इफ समबडी वांट्स दैट द केसेस, आई वुड लाइक टू रिमाइंड, ये 2G का केस मुलायम सिंह जी पे कब विड्रॉ हुआ? जब 2G पे UPSC की रिपोर्ट जिस दिन डिस्टर्ब की गई, विद इन 72 आवर्स द केस वाज डाइल्यूटेड. एंड सेकेंड, जब न्यूक्लियर डील का समर्थन किया इन जुलाई 2008, द केस वाज सब्सिक्वेंटली विड्रॉन. So everybody knows the history where even we were not in power, still the charge of corruption was on your party. And still when we are in power, you try to put an allegation that why it is not equal. अरे मैं तो कह रहा हूं, हम पावर में नहीं थे तब भी इक्वली नहीं था. हमारे किसी नेता पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं था. तमाम स्टेट्स में हम पावर में थे, उसमें भी किसी के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं था. There are two things, wild allegation and substantive allegation. If there is a substantive allegation, definitely it will happen. और मदद करना जानते क्या होता है? In the last few months of UPA1 government, Ottavio Quattroci's Red Corner notice was virtually done away with in Argentina, जहां हमारी extradition treaty नहीं थी. Instead of reissuing the Red Corner notice, rather than we have immediately transformed all the money in the account of Quattroci. गजब था साहब fight with corruption. हमारे ऊपर एलिगेशन था क्या? मतलब बजाय उस पर दोबारा रीकेस करने के पैसा भी फटाफट कर दिया गया. इसलिए मैं कह रहा हूं आज की डेट में छोड़िए, आज की डेट में हम आगे बढ़ने की बात करें और ये हम समझें कि व्हाट वर द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री. एंड आई वुड लाइक टू से, हम ये नहीं कहते कि हमने नहीं पाया, बहुत से हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने भी बहुत कुछ किया है. अटल जी की पंक्ति के साथ मैं बात समाप्त करने का प्रयास करता हूं. 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है. रावी पर ही कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष हुआ था. 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है. स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें. Okay, I want Pawan Verma to respond and then Abhishek to take this forward. Pawan Verma,
You got the point. I don't need to paraphrase what he just said. Your response, please. First of all, I'm glad that Sudhanshuji quoted Atal Bihari Vajpayee. He is aware that I have a very high level of respect and admiration for him. And I had the great privilege of translating, on his request, his poetry from Hindu into English. And I think that he is a very apt person when he ends those lines by saying, "Jo paya hai usko khoye, aur jo khoya hai usko paye." Now, I will just add to this. I'm happy the Prime Minister quoted two Mahavakyas of a kind from our past civilizational history, which is great. I have a book called The Great Hindu Civilization. The Vasudhaiv Kutumbakam. It's a remarkable thought in the time when it was enunciated. And it speaks of a perspective which is, in spite of differences, inclusive, tolerant, accommodating, plural. We need to ask today, and I don't mean it always as a criticism, today is not the day. Are we today a more inclusive republic? Or are we riven by completely unnecessary and sterile divides based on, for instance, religion? The Prime Minister used another of the great sayings, Ekam Satya Vipraha Bahuda Vadanti. This is the greatness of our civilization, where we accept differing points of view without necessarily seeing them as an enemy of each other. Sudhanshuji is aware, I'm sure Ghanshyam is also, that Adi Shankaracharya and Mandan Mishra sat and had a debate on their differences. Ours has been a civilization of Sabya Samvad, civilized discourse. Again, we need to introspect. Today, have we become too brittle a republic? I'm not making an individual criticism, where immediately anyone who disagrees is either conflated with being an enemy of the nation or anti-national, or often put behind bars. So where is in Ekam Satya Vipraha Vadanti? The truth is, one wise people call it by different names. Where is that sense of eclecticism, that sense of plurality, that sense of understanding that there can be differences which can be resolved through civilized discourse? So on that issue, I wanted to say I'm happy the Prime Minister spoke of the pride we must have in our past. We must ask ourselves, are we implementing it in the manner in which it should be done? Yeah, I just one small point and then I hand over to Abhishek. One small point I can't resist, but I'll hand over to Abhishek. I want to respond to what Pawan Verma I know, said. surely, but allow me one small intervention. Pawanji, it's all right to talk about, the need for free speech. I'll only address that aspect where you talk about free speech. Anyone who speaks against is considered an enemy and put in jail. I would like to remind you, I've had the rather pleasant experience of being put in jail by a government which you supported, intellectually and politically otherwise, only because I took them on. And you know exactly what the Congress MVA government did out here. So I will not get into that because that government's gone. Its own dark deeds have brought it down. I would also like to humbly remind you, if you do a check, Pawan Verma, you will find the maximum number of cases against journalists in terms of FIRs and summons are in the state of West Bengal, by the way. And you have been leading member of the Trinamool Congress till day before yesterday. The maximum number of cases against journalists and summons, FIRs, court cases, harassment is in the state of West Bengal. It's got institutionalized where the police has been used and is being used today as an arm of the state. I don't know any media house that is not in court or in a police station. So, it's easy to talk about it, but in practice, I would like to bring to your attention that this is one aspect. Secondly, I will also address one more thing, sir. Another party which you had a proud privilege of being a part of, the JDU.
Sir, I don't want to make it a personal issue. But you talk about the rule of law. How can you have the rule of law yesterday where Bahubalis are back on the road? You can check for yourself. On his way to Saharsa jail, immediately after the Mahagathbandhan government took over in Bihar, Bahubali Anand Mohan stayed in a Khagadia government guest house. The man should be in jail. He was let out from jail within 24 hours of the RJD joining the government out there. Last time when we spoke about how Lalu spoke to Shahabuddin in jail, we were told we had a political agenda. What is the agenda here, sir? Anand Mohan is staying in a government circuit house. Is this why we pay taxes? What I'm simply trying to tell you through these examples, sir, that lofty arguments against the government on the ground. Can we have gangsterism? Can we have the media targeted? Can we have journalists put in jail? Can we have media houses summoned? Can we have the Jungle Raj back? This is just what I wanted to say. Over to Abhishek and Sudhanshu to take it forward. Abhishek. Arnab, just 2 quick points on the issue of corruption that was raised by Mr. Pawan Verma. Number one, Prime Minister was speaking about corruption as a phenomenon about which society should take a position. Now, the last strong Prime Minister before Narendra Modi, sometime in 1970, said that corruption is a global phenomenon. Now, here is a Prime Minister who's saying that you don't only have to dislike corruption, you have to dislike corrupt also, and create a situation where there is no premium or no acceptability of corrupt as much as corruption as a phenomenon. So I think Prime Minister was broad-basing the debate. He was not really boxing it in some kind of partisan politics on the issue of corruption. And that's the point I wanted to make. Ghanshyam wants to respond to that. Pawan Verma suggested that maybe there is an element of politics in it. Arnab, again, because you are in Mumbai, around you is Goa, Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat. Any of these states, the government was formed without corruption? It's a BJP government? Just please answer for the viewers. No, 1 second. What was the argument there? Did you say the government of Gujarat was born out of corruption? Can you please elaborate? I thought it was born out of an election. So you are accepting other governments? No, I didn't. You said the government of Gujarat is born out of corruption. No. I'm asking you a straight question. Did you say an elected government is born out of corruption? Will you say the 2014 verdict is a corrupt verdict? What are your thoughts? No, but why are you saying what? Can you elucidate? You gave me a lecture for 5 minutes on Independence Day. I ask you a simple question. I'm asking you around where you are sitting right now and including that state, and you can't answer with a straight face. I have 1 minute, Ghanshyam. First of all, Ghanshyam, don't get answer worked it, up. Please. You gave me a 5 minute lecture. Don't get worked. You tell me, around you there are 6 states, and any state stands against corruption? Okay. Please answer it. Ghanshyam, I'll respond to you. If you stop shouting, please. It's Independence Day. I'm not shouting at you. We can debate very favorably with each other. The point of the matter is, Ghanshyam, I'll tell you one thing. There is a person called Nawab Malik. His property is associated with the Dawood Ibrahim group. Now, what happens is when governments are formed, I'm answering you. I'll answer you very elaborately. When governments are formed without any ideological agenda, but for the sheer purpose of coming together, then nobody goes against Dawood Ibrahim's property. You're deflecting. Okay, I'm not deflecting at all. Karnataka. I'm not deflecting at all. But if you were to go, if you were to go Gujarat, Rajasthan, Gujarat, Rajasthan, Karnataka, both Rajasthan and Karnataka governments have been elected. What is wrong with Rajasthan? What is wrong with Karnataka? One place Congress, one place BJP, they get elected. Is it anyone's problem that you couldn't get elected? Did you remember how BJP tried to break the government to Rajasthan? Was it No, 1 minute. The government is... Union minister was caught in that quagmire? I'm sorry, those are allegations of Ashok Gehlot against Sachin Pilot. There's an inner party squabbles. Can I say one thing? Just fact. My point is... Ghanshyam, you're not giving me a convincing reply. To put a fact, not an allegation. To move the nation forward, let us not have one-sided speeches. We hear one-sided speeches from the Prime Minister. But let us not on a media platform hear your only strong argument. I believe your central argument today has been the Prime Minister gave a 80+ minute speech. I don't know what you wanted. You wanted a speech on an SMS mode? Well, I wanted him to speak about. So I got you wanted him to come and give a PowerPoint presentation and leave? The joke on WhatsApp is a 1 minute joke is Notebandi.
A 2-minute joke is अच्छे दिन. A 4-minute joke is सबका Okay, साथ सबका I'll विकास. ask you. And an 8-minute Okay, joke is बहुत हुई महंगाई की I'll बात ask you a बात question. मोदी सरकार. Kancham, 1 second, please. 1 second. I'll just ask you a question. 1 minute. Kancham, first of all, we're talking. Don't get angry. Kancham, No, I'm not angry. do you use cash? Do you use cash in your financial transactions, or do you use digital payments? Well, depends on whether BJP is engaged in that transaction or not. I don't think BJP uses digital No. payments in I'll their tell you. I'll tell you. I don't know why you're getting defensive. I use only digital transactions. The problem, the fact is, the demonetization you spoke about, implemented with great amount of suddenness on November 8th, right? 2017 is a watershed moment, because after that, Ghanshyam, we've all willy-nilly moved to digital payments. You can talk about it. Why does the Prime Minister not speak about it? It's a great achievement. You want the Prime Minister to enumerate his achievements? He's afraid of talking about demonetization. Well, the Prime Minister has spoken When was about the last time you heard demonetization the many Prime times in the Minister speak about past. success of No. demonetization? Okay, I'll let now Sudhanshu is dying to come back. Sudhanshu. He was speaking about the future today, or no? He did not speak about any of the schemes of the past. I just want to put forth a fact. Arnav, Ghanshyam Tiwari ji has said that he is sitting in Mumbai, and you are also sitting in Mumbai. And I would like to remind, sir, the allegation of corruption was not allegation. It was the Mumbai Police Commissioner who has put an allegation on the Home Minister of the Mumbai for Vasuli. Can you give any example in the entire history of the India when the police chief has put an allegation on the Home Minister? गुजरात गजब है साहब, आप कहने लगते हैं दिस इज नॉट एन एलिगेशन बाय इटसेल्फ. और ये तो वही वाली बात थी कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, कोई जमानत पर रिहा है, कोई ये फरार. एंड बाय अ पार्टी which has said the corruption is a global phenomenon in 70s. Abhishek has explained. Rahul Gandhi has said poverty is a mindset. And you represent a party. लड़कों से गलती हो जाती है. There's such a type of parties who try to not only blatantly cover up but institutionalize the corruption and crime, and the blatant examples from their own officers, bureaucrats and ministers are coming. But still, if you are trying to put allegation on us, sir, the people of the country is not fool that you are trying to think. That's why आपका आजम का गढ़ भी गया और आजमगढ़ भी गया. Your family fiefdom of your party has gone, family fiefdom of Congress has gone. अमेठी भी गई, आजमगढ़ भी गया, रामपुर भी गया. अब आप क्या कहेंगे? ये करप्शन की वजह से गया? नहीं जी साहब. This is by the political determination of the people. Now they have become wise enough, well informed, because it is the age of communication and information. So they have become well informed, and now it is not easy to hoodwink the people on one flimsy pretext or the other. आप एक राज्य का नाम नहीं बता पाए महाराष्ट्र के आसपास जहां पर आपने बिना करप्शन की सरकार बनाई हो. आप एक मिनट अर्नब भी नहीं बता पाए. एक मिनट मैं तो आपको एक मिनट one minute. No, I want to answer on Maharashtra. One minute. When you see, no, one minute. Just पवन वर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें कही थी, उस पर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं. सुनिए, डिस्कशन तो होता रहेगा ये सब एलिगेशन. पवन वर्मा जी ने आदि शंकराचार्य जी का उल्लेख किया था. उन्होंने कहा था वसुधैव कुटुंबकम. ये वसुधैव कुटुंबकम जैसी कहावत सिर्फ संस्कृत और भारतीय भाषाओं में, दुनिया के किसी और कंट्री में नहीं है. एकम शब्द इब्रा बहुधा वदंती सिर्फ हमारे यहां है. बाकी जगह तो कहा गया व्हाट आई हैव सेड, इफ यू डू नॉट बिलीव यू आर डेस्टिन्ड टू हेल. और दूसरी जगह कहा गया व्हाट आई सेड यू डू नॉट बिलीव, सर तन से जुदा. सिर्फ हमारे यहां कहा गया एकम शब्द इब्रा बहुधा वदंती. इस पे गर्व करिए. और आपने मंडन मिश्र का उल्लेख किया. व्हेन देयर वाज अ शास्त्रार्थ बिटवीन आचार्य शंकर एंड मंडन मिश्र, सर, who was the chief judge, who was the jury? The wife of Mandan Mishra, Uba Bharti. I challenge anybody who is watching this telecast. दुनिया में कोई संस्कृति बताइए, कोई कल्चर बताइए, कोई सिविलाइजेशन बताइए जहां फर्स्ट there was a discussion allowed on religious texts. Second, when the discussion was allowed, then the lady was having authority to become the jury, and still they want to say कि महिलाओं के साथ हमारे यहाँ पढ़ने नहीं दिया था, अन्याय नहीं किया सकता था. That's why Prime Minister had said, come out of this colonial mindset of the Macaulay and Marx. I have one point just last to say to Pawan Verma. Pawan Verma used the phrase inclusiveness, and he spoke about an unnecessary and sterile divide. I completely agree with you, Mr. Pawan Verma. In the future, there must be, and in the present, there must be no unnecessary and sterile divide. And I am completely aware that the Prime Minister used the word Ekta 11 times in his speech today.
And you will agree with me, and I'm sure we will all hold hand and agree, there will be no divide when I hope very soon the Prime Minister takes the very necessary step of enforcing what was promised in the Constitution by having a uniform civil code. Believe me, Mr. Verma, you will agree with me, then there will be no divide in this country. You want to remove divide in this country, Mr. Verma, then the Prime Minister owes it to the country to bring in a uniform civil code and not waste any time in long debates over it. Quick response, Arnab? Yes. In fact, the Uniform Civil Code is mandated by the Constitution as a desirable end. But I leave this question, and I am not getting into politics of it. Why has the BJP government in 8 years not brought a draft of what that civil code can be? Twice there was an initiative to introduce a bill. The BJP government withdrew it. I recall the Chairman Law Commission writing to chief ministers for their views, and many of them saying, we are willing to consider this and should also. But please tell us from which religion, what you will omit in order to have a draft available for discussion on the Uniform Civil Code. That has also not come so far. I think I agree with you. The sooner it comes, the better. And I'm sure you'll be among the greatest supporters of a uniform civil code. We all should be. Because this divisive politics, divided legal system cannot work. This has been an aggressive but very interesting debate. I wish you all a very happy Independence Day. May we in our diversity come together and move towards greatness. Thank you so much, Ghanshyam and Pawan Verma. Abhishek, stay on, and Sudhanshu Trivedi as usual. Thank you. Thank you. And ladies and gentlemen, we promised to go live to multiple locations. And the next location we will be going across to is very interesting. Before I go to Suchetkar in Jammu and Kashmir in just a moment, I would like to take you, ladies and gentlemen, to the Anushilan Samiti, where we have Republic Bangla's Ramakrishna Sinha. Just a little bit about why we are going to this location. The Anushilan Samiti, ladies and gentlemen, was established in 1902, and it was headed by Borindra Kumar Ghosh, younger brother of Sri Aurobindo Ghosh. The Anushilan Samiti existed through the first 3 decades of the 20th century. It propounded the revolutionary cause for ending the British Raj. And it is necessary, and Ramakrishna can tell us more about it, that today when we talk about the rewriting of history, do we mention every nationalist, every revolutionary? We don't. But a number of nationalists were involved at various times with Anushilan Samiti, namely Aurobindo Ghosh, Bhupendra Nath Dutt, who is the brother of Swami Vivekanand, Deshbandhu Chittaranjan Das, Surendranath Tagore, Bipin Chandra Pal, and to tell us more about the mood there and the significance of this place, over to you, Ramakrishna. Ramakrishna Sinha of Republic Bangla. Happy Independence to all our viewers. I must say one thing, that to remember this morning, I'm just standing in front of Anushilan Samiti. You can get the views of the members of Anushilan Samiti right now, and I must tell my viewers to remember those days when the freedom fighters were fighting to achieve the Swaraj. And I must say, Barindranath Ghosh, Aurobindo Ghosh, and in 1902, all were fighting to achieve the Swaraj for India. And this is to remember the bloodshed. The young generations were involved on those days to get the Swaraj on those days. I must talk to those people who are in front of me. They are right now. They are the members of the Anushilan Samiti right now, and I must say that they will describe all the histories over this Anushilan Samiti. Please. We have started. Journey was started in 1902, led by Satish Chandra Bose and Pramodanath Mitra. They are the founder of this Anushilan Samiti, and vice president was Sri Aurobindo Ghosh and Sri Barin Ghosh. In 1905, it was spread to
now Bangladesh, and they have at that time they had at least 500. I want to ask you one thing. That is, the freedom fighting movement was divided in two parts. And one is just one is this part of Bengal, and other is in Bangladesh. Now Bangladesh. Okay. And Chattogram Ostragar Lunthan was a achievement from this Anushilan Shomiti. And many freedom fighters are nurtured from this Anushilan Shomiti. And many young generations were involved on those days. And I must tell you one thing, that is a history of Kolkata police. That department was basically like a Scotland Yard, and their torturing, their torture was very pathetic to the freedom fighters on those days. And I must ask the torture. Can you remember that how they torture the freedom fighters of Bengal on those days? That is unthinkable. You cannot think how they have been tortured, even in the police custody. So you know the police, they are more than 4-degree torturing. They are even for 4-degree tortured. Okay, I must show the lane where all the freedom fighters were involved. How they do exercise, how they did exercise, used to exercise. Ramakrishna, can you hear me, Ramakrishna? I must Ramakrishna, ask my person to Ramakrishna, can you hear me? Can you hear me? Yes. There is a, हमारे जितने दर्शक हैं, आप अगर थोड़ा हिंदी में भी बोलें, because lot of viewers are joining in Hindi also. ये अनुशीलन समिति की जो importance है, ये बहुत ही historic significance है. और I want to tell our viewers that the problem in the writing of history is we have not recognized the role of the revolutionaries. Problem has been the revolutionaries have been called terrorists by the writers, Congressy writers of the history texts. But शायद आप ये इस बात पर बात कर सके कि अनुशीलन समिति और उसके साथ गदर पार्टी, इसके बाद ही 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट हुई और तभी एक तरह से जागरूकता बढ़ी देश में. उसके बारे में भी अगर आप कुछ थोड़ा बहुत कह सके, इस सिग्निफिकेंस के बारे में, इनके रोल के बारे में. एकदम उस दिन जब 1902 साल से ये अनुशीलन समिति का मेंबर्स एक साथ इकट्ठा हो रहा था, उस समय के बाद 1915 और 1920 all are recognized. Everyone in the members of this society is called the terrorist on those days. हम एक बात आपको पूछना चाहेंगे, क्या थोड़ा ये बात बताएंगे, क्या टेररिस्ट बोला जाता था उस समय? Actually, Anushilan Samiti started as the physical development of the young generations. Now then, at the time, the English people tortured Indians, so they provoked themselves with this to lay out the English people. Now, धीरे धीरे ये लोग English people के against एक छेड़ दिया. इससे उसका नाम बताइए, क्या गद्दार पार्टी और अनुशीलन समिति, इसका तो बहुत डिफरेंस था. बहुत डिफरेंस है. अनुशीलन basically started with the development of the young people to resist the torture of this English people. Now धीरे धीरे ये तैयार हो गया कि हमारा स्वाधीनता चाहिए, स्वराज चाहिए हमें. तो वो लोग स्टार्ट किया धीरे धीरे जो against the English people. So English people call them terrorists. They are terrorists. Because of that, they are against our law, against our will. So they are terrorists and they tortured them. Right. Unbelievable. Right. Just then open their nail from their hand. Not even the only male people, even the females also, they do these things. Hello. Because Anushilan Samiti was considered with male and female both. Okay. Really, those days are really
really is a Absolutely, absolutely, Ramakrishna, absolutely. And I'm so glad that you could be live from that location. Viewers, I'm going to Ishandev Chattopadhyay next, who is in Suchetkar. And Suchetkar is in Jammu, and it served as the road to Sialkot during the pre-partition era. Last year, in 2021, the BSF unfurled a 131-foot high flag post which was visible everywhere, and they say you can see it also from Sialkot. So that is the BSF's Octroy border outpost from where Ishandev is live. Ishandev, over to you. What's the mood in Suchetkar? At first, my good wishes for the Independence Day to you, Arnav, and to all of our viewers. And Arnav, this is the situation here. It has been raining incessantly from the last evening here, and the tallest national flag, tallest tricolor, which you were mentioning, we are just standing in front of that. This morning, just at 9 o'clock in the morning, the DIG of Jammu sector, Mr. Surjit Singh Sekho, he came here and he hoisted the national flag in front of this tallest tricolor here, and through that, the celebration of the 75 years of Indian independence has started here. Many people from the local villages, from the local areas, from the towns nearby, and from Jammu came here to take part in the celebration of this 75 years of independence here. The BSF officials, the BSF Jawans, all were on a standby mode here. After the hoisting of the flag, there was a short speech by the DIG, and then they paid their homage to the martyrs here at the Amar Prahari Smarak. And if I could say, if I could show you that just behind this black wall, just behind this tallest tricolor, there is a gate at the India-Pakistan border, which gate opens into Pakistan. And at about 10:30 a.m., the officers, the BSF officials went outside that gate, went towards Pakistan and shared sweets with the Pakistani Rangers, because yesterday there was Pakistan's Independence Day, and they shared sweets with our BSF officials, and today in a reciprocal mode the BSF officials opened that gate, went towards Pakistan, and they shared the sweets there. But on this day of jubilation, on this day of elation that India is at 75, the BSF is not forgetting its duties, and the DIG in an exclusive interview to Republic Network has said that a new challenge has come in front of BSF. That is a drone challenge, because the infiltrators are now trying to supply weapons and drugs through drones, and that's why BSF is also developing new means and new strategies so that they could face this new challenge at these borders in Jammu and Kashmir and all the other areas. Absolutely. We look forward to coming to you live more, and now I'd go across to Kolkata, where in the middle of the beautiful Maidan there is the Victoria Memorial, and I'm just going to be going across to the Victoria Memorial. But before that, just one quick point which I want to make out here, viewers. I don't know if the visuals are there, but the Victoria Memorial was at one point of time supposed to be a symbol of India's colonial rule, and it was all about commemorating Queen Victoria. And today, yesterday night, I don't have the visuals here, but maybe Bishaka can tell us more about it. The memorial was illuminated in the colors of the tricolor. So it was looking beautiful, the entire memorial in the colors of the tricolor. You can tell us more about it. And what was the mood today along Red Road? Bishaka, over to you. Arnab, first of all, happy Independence Day to you and all our viewers. And the thing is that Kolkata, as you know, that it has so many colors for everyday occasions. But now, when it's 15th August, now when it actually we have entered the Amrit Kal of independence, as our Prime Minister Narendra Modi said. And yes, we are in tricolor only. The color of Kolkata is just this color. This is our tricolor, and this is clad in tricolor only. When I came here, I was standing on my standby mode before coming live to you. I'm clad in this
this attire, as you can see that I'm clad in tricolor. But some people came, and you can see them. You can see them. They are holding tricolor in hand. They came and they saw that I didn't have a flag in my hand. They handed it to me, and I'm still holding it. And they have so many flags, and this is the way they are actually making this project mission, this mission, Har Ghar Tiranga mission, a total success, where you know that politically it had been so much countered, and after everything, when it's 15th August, when it's our Independence Day, Arnab, I am standing in front of the Victoria Memorial, which is actually officially Netaji Memorial right now. You were talking about the yesterday pictures of tricolored Victoria Memorial or Netaji Memorial, as you can say right now. It was illuminated with these tricolors, but now when it's daytime, it is not illuminated. Well, as the building you can see it's white, but there is tricolor in front of it. It is flying high, and in front of that, whoever is coming, they are saying Jai Hind, they are saying Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai. This is the only slogan we have in Kolkata right now. Irrespective of any political party, of any political ideologies, it is the only slogan we have in Kolkata, in all our country, throughout the country, and people are just holding this flag high. As you can see, this flag is the only thing that makes us so proud of, and we are seeing that so many people are coming. Every time they are handing, they are just giving them the flags, and they're distributing the flags. So much successful in Kolkata also after the political turn. Exactly, they are distributing the flags to those who are not with any flag. Yes, in Bengal politics, Vishaka is always so polarized, and it is so heartening to see the colors of the tricolor unite everyone there today. So we forget all political differences, and I stand corrected. It's not the Victoria Memorial, it's the Netaji Memorial. And I would say, Vishaka, that it's a symbol of the conquest of the people. Victoria Memorial was the conquest of a colonizer who thought that this symbol would be there as a symbol of their royalty. Today it's the conquest of the people. The flag is flying high in the Netaji Memorial, and the happiness is all around. That is where I started my career many years back, more than 20 years back, and I remember many walks along the Maidan and the Red Road. And today, of course, the thing about Kolkata, people in Kolkata, any occasion, the place to go to is the Maidan. And today I can tell you, evening is going to be jam-packed here at the Maidan, and everyone's going to enjoy, just come together. It's just so joyous to see people handing over flags to each other. It gives us such satisfaction, Thank you so much, Vishaka and Ramakrishna, and from Suchetgarh. Thank you very much, Ishan Dev, for joining us as well. And we are going to go across to a political panel. We try to bring the country together, but the debates sometimes divide. Let's see whether when we come back on the other side, I see my old friend Rajagopalan smiling there. Shahid Siddiqui is also there. Okay, we are going to... Ji. Absolutely, Jai Hind, Vande Mataram. And it is also Shahid Siddiqui's birthday. He keeps fighting with me, but I want to be the first to wish him on television. Thank you. We are going to have a big fight, and then a big joining hands together, and we are going to debate this all. Just give me a small commercial break. Back in just a few minutes, viewers. This is going to be an interesting debate. मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की यात्रा में आशाएं, अपेक्षाएं, उतार चढ़ाव सब कुछ के बीच में हर एक के प्रयास में हम जहां तक पहुंचे थे और 2014 में देशवासियों ने मुझे दायित्व दिया। आजादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल किले से देशवासियों का गौरवगान करने का अवसर मिला था।
pictures from Hussainiwala. Gaurav, over to you. Another ceremony there at Hussainiwala. Can you tell us the significance of this location and what we are seeing on air, please? Gaurav. No, absolutely, Arnab. This is again just like the one that happens in Wagah, Atari border, Hussainiwala again in Punjab, Arnab, and what you're seeing is this Jawan from the Rangers of the Pakistan Army exchanging sweets, and both sides will deliberately put tall soldiers there. We are really very proud, and as already mentioned, something today we breathe the air of freedom. I am reporting now from INS Gomantak, and where we can see that Indian Navy is has given from the Vrit laying. It has already been done, but this memorial is something dedicated to the Indian Navy brave hearts who liberated Andajeev Island from Portuguese occupation on 18th December 1961. And on 9th December 1961, Lieutenant Arun Adito and Lieutenant Neol Keman, along with 68 sailors from the gunnery school at Kochi, formed the landing party that was tasked to liberate the Andajeev Island from Portuguese occupation on 16th December 1961. The landing party before I begin the debate, I would like to run just a couple of clips of the Prime Minister's speech, if we can pull them out. We have several clips. He made many points out there. Maybe I'll ask our producers to pull out some of the significant clips of the Prime Minister's 80+ minute speech at the Red Fort today, if it's ready, please. Okay, it should be up in about 10 seconds, I'm told. Viewers, in this part of the debate, I simply want to bring in one simple point. Has this Independence Day brought with it a new wave of nationalism? That's going to be the theme of the debate. Here's a clip. ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी-कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई है। सुख दुख की छाया मंडराती रही है और इसके बीच भी हमारे देशवासियों ने
उपलब्धियां की है, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है, संकल्पों को ओझल नहीं होने दिया है। और इसलिए, और ये भी सच्चाई है कि सैकड़ों सालों के गुलामी के कालखंड ने भारत के मन को, भारत के मानवीय की भावनाओं को गहरे घाव किए थे, गहरी चोटें पहुंचाई थी, लेकिन उसके भीतर एक जिद भी थी, एक जिजीविषा भी थी, एक जुनून भी था, एक जोम भी था। और उसके कारण अभावों के बीच में भी, उपहास के बीच में भी, और जब आजादी का जंग अंतिम चरण में था, तो देश को डराने के लिए, निराश करने के लिए, हताश करने के लिए सारे उपाय किए गए थे। अगर आजादी आई, अंग्रेज चले जाएंगे तो देश टूट जाएगा, बिखर जाएंगे, लोग अंदर अंदर लड़ करके मर जाएंगे। And my first question is to Mr. Rajagopalan. Welcome Fuad Halim also, and Shazia Elmi, Prafulla Ketkar, and of course Dr. Samir Kaul. Mr. Rajagopalan, Prime Minister said, जो जेल जा चुके हैं और जिनका जेल जाना तय हो गया है, उनका भी महिमा मंडन हो रहा है. What was he indicating? P. Chidambaram. P. Chidambaram. He was indicating P. Chidambaram. He was indicating Nawab Malik. He was indicating Anil Deshmukh. He was indicating Partho Chatterjee. He was indicating Mondol. And what was he trying to say? He says these are all the persons in the past 1 month. If we have seen Arnab, PMLA Act was supported by the Supreme Court. Yes. Jolted by that verdict, the opposition parties, especially 11 opposition parties, the person who was in jail, he drafted the statement questioning the Supreme Court. They said Supreme Court does not have faith. Kapil Sibal commented. So these are all certain things which provoked Narendra Modi to speak about Mahima Mandal Pradishta and jail guzar chuke hain. So he also this made is it. the focus. So when this is the focus, Arnab, because Prime Minister wanted to ensure day before yesterday, when Mr. Tejasvi Yadav met Madam Sonia Gandhi, they discussed about this corruption. They discussed about the ED. He says, I can take ED very well. I can take CB very well. So this is the answer. He took, Parliament was stalled for 40 days. Can you believe, Arnab? I covered Parliament from 1977 onwards. And unnecessarily they controlled the Parliament. And these are all certain things which provoked Mr. Narendra Modi to come out with nationalism aspect. That is why he said, koi log jail guzar chuka hai. But he also said, he made it quite clear. So I think it was an uncompromising mood. And Shahid Siddiqui, I think the message the Prime Minister was giving was, if you think that this political criticism of action against Partha Chatterjee or Nawab Malik or this Anubrata Mandal or maybe Sonia Gandhi or Rahul Gandhi for their terrible scam is going to affect, lead to a pullback, it's not going to happen. In fact, he's asked for public support in this, and I think the public is with him, don't you think? The public is completely with him. That's the national mood. Arnab, I'm not here to defend any Nawab Malik or any Partho Chatterjee or anyone. The only point I would like to make is, number one, I will welcome Prime Minister's speech. This is a historic day for all of us, for 140 crore Indians. This is a very, very important historic day. And today is the day when we all should come together to celebrate
what we have achieved in the last 75 years, we have achieved a lot. We have built a great nation in 75 years, and in the next 25 years, we are going to create one of the finest nations in the world. I have no doubt about that. But so far as corruption is concerned, corruption has been there. Corruption is very much there. Corruption has not gone anywhere, and the nation should look at corruption in totality, not as a political instrument to browbeat one group or the other. Unfortunately, that has been happening, and that's not happening today. That happened during the Congress regime, that happened during other regimes. We have been using whether ED or CBI or other groups or charges of corruption to browbeat or to corner our opponents or to support those who are with us. And that has been extremely unfortunate, and that is the reason that India is today regarded as one of the most corrupt countries in the world. And we have to get out of that, we must have that stigma removed, and for that everybody will have to rise above. Can you tell me or tell Abhishek, for example, or Shazia, that you have made a very sweeping statement on this 15th of August. You have said India is one of the most corrupt countries in the world. Can you please quote your source? No. Yeah, what I read recently, I don't remember exact. Yes, where among the most corrupt countries. Where did you read this? What is the source? I think this was international source. Which international source? Because I don't know any such international source. We have been told we've gone up in the ease of doing business. We've been told that we are high on GDP rankings. We are being told that we are the fastest growing economy. We've been told, one minute, we've been told that our FDI inputs are going in, our institutional integrity is strong. We are told we are the third largest economy in the world in terms of purchasing power parity. We have overtaken the UK, and we are going to overtake Japan. So I'm very curious to know, what is your source when a politician or someone who's been a politician like you comes and says on the 75th anniversary of our independence that we are one of the most corrupt countries in the world? I actually request you to reveal your source and tell us how you come to that conclusion. That's what I believe is true. No, it can't be your belief. There has to be. No, it can't be your belief. No, I don't believe. Yes, I withdraw my statement. Thank you. Okay, Shazia wants to respond. Abhishek is. That's very generous of you to withdraw the statement. I must say it's in very good form, Mr. Siddiqui. Shazia is responding to the overall debate. Shazia. So first of all, I think about today itself. You asked this question, Arnab, what does this mean for all of us? And I think we have this great festival today for every Indian. And that is what Har Ghar Tiranga, 75th year of independence, has become. It's something for all of us, every religion, every caste, every community, every region. It's a national festival for every Indian. So festivities and celebrations in that order. About Shahid Saab, we've been living in this, the electoral hack that has been the mantra for years. Do not look at corruption. Do not look at nepotism. Do not look at dynastic succession and how it impacts politics. Just do not be in denial. And you know what you do? Just talk about Muslims khatre mein hai. We need to protect you and use Muslims as fodder. I'm saying it as it is. I was a small soldier in this whole Anna Hazare movement, and I realize now that it is our Prime Minister really who is leading this, who is become the protagonist of an anti-corruption or corruption-less, corruption-free India. And it takes a lot to say that, because so far it has been I scratch your back, you scratch my back, and we use CBI, ED, serious offences, crimes of various bodies, agencies accordingly. But it takes a lot to say, I stand for this. This is the resolution. So I have objection, and I'm glad Shahid Bhai Saab has taken his statement back. I also think freedom from slavery, what does it mean? So I think in the last 8 years, what a Prime Minister has done is there is a reconditioning that is happening of the way we look at ourselves. And I think that the slavery to sovereignty has to be in a thought, and that is a big change that is happening. Also in the way we look at polity. Why should we tolerate politicians? Why should we do Mahima Mandan or respect people who have been corrupt?
Why? Why are we still, let's say, literally, have to be servile to dynasties? Why should so-called political parties across the spectrum in our democracy be led by a family or the other? Prime Minister, and so it's become a convenient hack, and it's sad. That's all that it took. Use Muslims as fodder. Get your family in politics. Everybody, from your daughter-in-law to your son-in-law to your son to the larger family, will keep on becoming members of the parliament and keep on looting the resources and do nothing. No talk of governance, no talk of transparency. And also, I want to remind everybody who's sitting there, it is for the first time that our cabinet, second time around, not a single scandal. I mean, I remember being a journalist covering UPA. Day after day, there were scandals and scandals in every ministry. And for the first time, can we name one scandal in Modi ji's cabinet? Can we name one or two? Not one. Any of the sector, if you look at any of the departments, it is fantastic. For the first time, we have defense deals happening where people can imagine. So it's a reconditioning of the mind that is happening. It's a new kind of socialization. People can't accept that. And it's difficult. But you see, those who are in sync, who feel strongly, get it. So I think something great is underway and is churning. And Prime Minister is talking about that. And I think only a person with a strong record who's out there can say something like this. It's as much for his party as everyone else. Yes, that point is there. No scope for corruption. That point is there. No. That point is there. I want Abhishek to come in because Abhishek, Prime Minister is putting his skin in the game. After having taken such a position, if there is a slightest taint on any of his people in his government, he will have to act. Abhishek, over to you. Maybe you can take it forward with Fuad and others. Earlier I mentioned about Indira Gandhi saying corruption is a global phenomenon, almost accepting it as a fact. We had Rajiv Gandhi saying that of every 1 rupee that goes from the center, only 15 paisa reaches. And I was just Googling Prime Minister Manmohan Singh attacks corruption, and the only statement that comes is Arnab of 2019. 5 years after he has been Prime Minister. So if Narendra Modi, as Prime Minister, taking ownership, takes a position on corruption and says that it's not just about corruption because moral values as they stand, if you show corruption, people would say, okay, this is wrong. But you have to ostracize and isolate those who are corrupt. If he is taking a public position on that, what is wrong about it? Also, or now, if you have a Prime Minister who's talking about saving electricity from the ramparts of the Red Fort, who's talking about saving every drop of water from the ramparts of the Red Fort and talking to the nation at large, I mean, why should anyone object to it? He is giving a very holistic picture of where India stands, where India should be, its moral values, its moorings, its heritage. It's a dialogue that the Prime Minister is having with the country, with the people of the country on its 75th anniversary of independence. I think, Fawad, you should not be objecting to any points that were made by the Prime Minister, least of all corruption. Well, thank you for mentioning me. But my question is very simple. You got Hemanta Biswa Sarma sent by Narendra Modi to speak to Mamata Banerjee on the 14th of July. And he spends 2.5 hours speaking with Mamata Banerjee, after which Trinamool Congress withdraws its voters from the vice presidential election. So, institutional corruption is epitomized by what Modi does. He has a vice president who has been tacitly supported. What is corruption in having a political dialogue? I didn't disturb you, sir, so you can have your own conversation. That's what I'm saying. If Narendra Modi and BJP wants to have a political dialogue with the corrupt, then let them not take the moral high ground that they are against corruption. You have to keep in mind that the BJP website here in West Bengal released the YouTube picture of the Narada scandal. And the moment Mukul Rai, who was the kingpin in the Narada issue, joined the Bharatiya Janata Party, lock, stock and barrel with his corrupt vertical group, that video was deleted from the BJP official website.
So, corruption is an issue that the BJP is very comfortable with dealing with, because, when it serves their purpose, they take a stand. When they're speaking from the ramparts of the nation, they would like the nation to listen to something. But in terms of practice, it's a totally different ball game. One has to keep in mind that Suvendu Adhikari, who is the leader of the opposition in West Bengal Assembly, was clearly depicted in those Narada files. And the BJP government does not include or in its political agenda ever mentions those names who are now part and parcel of the Bharatiya Janata Party in the Narada scandal. So, it's a wishy-washy We are discussing Prime Minister's conviction, and the Narendra Modi. You have made your point, Fuad. We are discussing Prime Minister's address to the nation from the Red Fort. We are not discussing Bengal politics. But you have made your point. I'll get that question. I'll get those points rebutted by the BJP spokesperson, but I will take a short break. I'll come back and we'll discuss that as well. I'll take these two I want to continue this. Just after a short Let's not take a break now. Let's continue this for a bit. Let Fuad complete his point. Yeah, Fuad, complete your point. So, on the question of corruption, if you go to Karnataka also, you see the Bharatiya Janata Party is very comfortable with corruption. Those who are corrupt are part and parcel. If you look at the present issue that is being discussed across the nation, that's the smuggling of cows. Now the cows originate in Haryana, they originate in Uttar Pradesh, they originate in Madhya Pradesh. That's where they are loaded onto the trucks. They are brought off the trucks here in West Bengal and smuggled across West Bengal. So what is happening here is that you got the BJP having this double speak. Modi needs to take into account his ministers in Uttar Pradesh who are involved in the cow smuggling. The cows originate in Uttar Pradesh, the cows originate in Haryana. So, corruption is a very partial issue as far as the Bharatiya Janata Party is concerned. A quick point, Fuad, can I ask you? Fuad, something? Fuad, thank you. Fuad, see, I agree with you that the fight against corruption cannot be party or individual specific. I completely agree with you. Right? Now, I want to ask you, since you mentioned the vice presidential elections and you mentioned a political meeting in Darjeeling between Himanta Biswa Sarma and Mamata Banerjee, in which Jagdeep Dhankar was there was nothing secretive about the meeting. It was publicly acknowledged. Right? It happened there, and of course it was a political negotiation where the BJP asked the Trinamool Congress to not oppose Dhankar. The Trinamool Congress did not support Dhankar. It abstained. It's a bit of a wishy-washy situation out there, neither here nor there. Anyway, you sought to derive political meaning of it, and you said, how can these parties, if they have a position on corruption, end up helping each other? Okay. By similar logic, and please don't mind my directness, your leader Sitaram Yechuri spent an extraordinarily large amount of time with Mr. Sharad Pawar discussing both the vice presidential and presidential elections. In fact, he got so angry, he and D. Raja, when we asked him, where is Mamata Banerjee in this meeting, that they almost chased us out of their press conference. And you know very well how corrupt Nawab Malik is, top leader and right-hand man of Sharad Pawar. He is holding Dawood Ibrahim's assets in the city of Mumbai. Does Sitaram Yechuri support a political party's leader controlling Dawood Ibrahim's assets? Can I please know Sitaram Yechuri in the CPM's position? Can I know, allow me to complete, so viewers understand, can I please understand why did Sitaram Yechuri do business with a political party whose leader is controlling hundreds of crores of Dawood Ibrahim's assets and is in jail for it? Thank you at the outset that you have accepted that Narendra Modi has been dealing with Mamata Banerjee. No. Did you answer my question? And on the question of, I'm answering. No, I have Shazia that you're not answering my question. Why are you so scared of but why aren't you answering what is Sitaram Yechury's position on Dawood Ibrahim? And these dealings are... What is Sitaram Yechury's position on Dawood Ibrahim and those who control his assets? That's what I'm saying. Mamata Banerjee met Narendra Modi privately on the 4th of August this month. There's nothing private, it's the most public meeting. It was on the sidelines of the Niti Aayog meeting. For you it's public. Has the BJP made a statement? What Mamata Banerjee and... It's not a BJP meeting, it's a Chief Minister meeting the Prime Minister on the sidelines of the Niti Aayog meeting. Many other Chief Ministers also met him. Yes. But why are you not answering my question on Dawood Ibrahim and Nawab Malik and Sitaram Yechury's position on it?
as the BJP made a statement on the meeting between Hemanta Biswa Sarma and Mamata Banerjee in the presence of Jagdeep Dhankar? Yes. Has an official Yes. statement been made? Yes. What is that official Yes, statement? multiple Where it is times. found? Hemanta Please, Biswa no, Sarma please, said, I please. met. Mr. Dhankar were present What is there. the official BJP And the party has acknowledged that it sought the support and it got it. No, I don't know. Let the BJP respond to that. But you didn't answer my question. Fuad, not good. Not good. You didn't answer my question. Shazia will respond to you. So On Nawab Malik, you didn't First answer. of all, let me tell Mr. Halim, Dr. Halim rather, you know UPA 1 and 2. Give your So statement. every ministry and I can give you the details because I actually left my entire career and became an activist, and then it became and so I know a little more about it, and maybe you care to acknowledge and about yourself too. Okay, so Fuad, let her answer you. She's answering you. She's answering you, Fuad. All right. I'm asking you. She's answering you. She's answering you. Would you speak? Yeah. You know, you are okay with this is it. This is it. Fuad, she's answering you, yeah. Please listen to her answer. Corruption. She's of Congress answering party. your question. How come Fuad Halimji, you never talk about it? What happens to you? Cat gets your tongue when it talks about the loot that has happened, the absolute travesty. I mean, the criminal corruption that Indians have faced. What happens to you? I mean, what is so secular about that corruption? What is corruption also? I mean, the corruption also has to be secular or not. Fuad, now she was quiet when you spoke, Fuad. She was absolutely quiet when you spoke, Fuad. So I just do that favor, please. Thank you. She was quiet. She disagreed with you, but she listened to you when you spoke. She was quiet when you spoke, so just listen to her and then respond. What's the hurry? We have time. Fuad, that's basic. That's basic courtesy you must accord each other. So I want to ask you, you have been quiet. I don't know why your party has been quiet. Why have you spoken against ever about Lalu Prasad Yadav? Ever about Congress party? Why don't the leftist leaders and communist leaders ever speak about the corruption of Congress and what is done to this country? Where our country would have been and where it is now. Exactly. And what I don't understand what happens to you. You don't have the gumption, sir. You don't have the gumption. What happens to you? And here is a man who is taking the country forward. He's saying we are sick and tired of being a developing country. We want to be a developed country. We want to free ourselves. And you want to attack BJP. Why would you do that? What does there have to be spent from you? Because you have just an old mantra that I talked about. Talk about Muslims, talk about Dalits, keep the country poor, keep the country poor. No, absolutely. I keep the Hindus of this country in a state of, deprive them and in a state of guilt and play with this. You have done nothing for Muslims, you have done nothing for Hindus, you've done nothing for anybody. I take this forward. One minute. I take this forward. I would say 1 minute. Just 1 minute. 1 minute, Shazia. 1 minute, Shazia. Prafulla has not come in. Prafulla Ketkar has not come in. Just a minute. See, I'll tell you. There will be. See, Fuad, question to you. And to Shahid Bhai today. And if you can just bear with me and Samir Kaul can bear with me, I'll tell you one thing. I think it is very necessary to take a position on corruption. I believe the BJP also shouldn't make it selective. I'm very clear about it. But sure. I am very curious about the left. See, Fuad, I know the left. I have covered the left at the start of my career, and nobody knows the left party is more than me. Okay, so I was there. Okay, even when your leader Jyoti Basu wanted to be Prime Minister and the party fought not to allow him, I was there. I've been witness to the left closer than you think. Having said that, I appreciate your position on corruption. I laud it. I celebrate it. I just want to know, Prafulla Ketkar, that when there is a man convicted in 4 of the worst corruption cases, and now recently a 5th, a man who has looted the state, convicted by the court, embezzled hundreds of crores of rupees, is their best friend, Prafulla Ketkar. I'm talking about Lalu Prasad. And don't tell me about corruption. You talk about people. Was Amar Singh absolutely the symbol of clean politics in this country, the late Amar Singh? Was he?
What was the politics that Sitaram Yechuri and Harkishan Singh Surjit did with Amar Singh? When was corruption an issue in the building of political coalitions? And why don't you sacrifice your alliance, your newfound love once again, in which you're participating in a government with Lalu Prasad Yadav convicted of corruption? If I ask these questions, there will be no answer. Absolutely not one word, pin drop silence from the left. In fact, these contradictions are what has brought the left down, including its past alliance with the Congress party. Prafulla Ketkar responding right now, so everybody is on the debate. Arnav, I will come to corruption. I just want to know the fundamental question from the Communist Party. Communist Party is one party which didn't change their DP, which didn't ever celebrated any Independence Day in their headquarters. Still, I want to know whether still they believe that ये आजादी झूठी है. इतना मत झूठ बोलो. ये आजादी झूठी है. He's saying you're lying. One minute. Tell me. हमारे हर पार्टी ऑफिस में आजादी की ये मनाई जाती है. You never answer fundamental question. Why Jyoti Basu didn't hoist the flag? अरे you have a convulsive Please don't lie. इतना झूठ मत बोलो. No, he won't have an attack. Let him reply. He's asking you. Don't be sarcastic, Fuad. No need for that. We on national network, we doesn't know what happened in the headquarters of the Communist Party. What can be more unfortunate but to call a convulsive political fool a convulsive liar? Nationalism always dubious. No. We are talking about institutionalization of corruption. Can CPM take a vow that they didn't institutionalize corruption in Bengal, in Tripura, in Kerala, to protect their own party workers? Please don't lie. We are talking about nation and corruption. Bhai Bhatija Waj is the root cause of corruption. Prime Minister has called out today. Please stand by it. Please stand by it. Don't be selective. Don't be selective. Every political party will have to answer on this. It is absolutely acceptable because the RSS has no role. In fact, today the Prime Minister himself, while talking about political people, he did not take the name of a single RSS member. Right to preach. The Traitors don't have right to preach. nation's Who Prime stood by Minister British, and who stood by RSS Chinese, and still could do not not name take any even a stand on single China. RSS Please don't member who preach. contributed to the It is the freedom RSS struggle of India. Swayamsevak In who his fought speech during the today. partition. It is the RSS Swayamsevak who fought for Goa, Divdaman, to save people from Portuguese. It is the RSS Swayamsevak and RSS founder who be part of Satyagraha during the forest Satyagraha. Please don't preach. नरेंद्र मोदी को बोलिए भाई देश को जब संबोधित करते हैं इनका नाम थोड़ा सा बोल देने. ये प्रफुल्ल केतकर को आप लोग राजघाट भेज दीजिए, लाल किला का ऊपर में खड़ा कर दीजिए, अलग अलग जगह से ये जरा छत से ये सब चिल्लाएं. Come to terra firma, sir. Come to terra firma. Come to documented facts. That was your slogan when we got independence. Come back to India, sir. Because you haven't used Tiranga. 5 names. Sir, 5 names from the RSS from 1925 to 1947 who were arrested by the British. 5 names. Please. Can you give me 5 names, sir? Dr. Hedgewar, Abaji Thatte. That is before 1925. The founder of RSS himself was in jail during the That is before 1925, sir. Tell me. In the Khilafat movement. No, sorry. Sir, I respect Dr. Hedgewar's contribution to the Khilafat movement. And when the Khilafat movement, he was part of it, he was arrested. That is before 1925, sir. You stood by the Muslim League. You were sir, the people after who 1925 when RSS was formed, sir, 5 names. Sir, 5 names, sir. You were the people हाथ जोड़ करके 5 नाम, sir. You opposed एक Chinese war. Please don't one martyr from RSS, sir. You are the traitors. You one martyr, sir. एक नाम. Illegal immigration in Assam and Bengal. अरे एक नाम बोलिए RSS का. 1925 से 1947 22 साल में जो शहीद हुआ देश के लिए एक नाम. With 18 people went to jail during Chimur Satyagraha in 1931. In 1942, 18 RSS Swayamsevak participated and got killed in Chimur Satyagraha. If you don't know the history, go back to history.
Please, But please mo- don't but- preach but- respect but- patriotism, but- but more- because you have been the traitors. No, You have been the traitors. I want to ask you, Fuad. One minute. Rajagopalan also wants to come in. Mr. Rajagopalan. Mr. Rajagopalan wants to come in. Mr. Rajagopalan. Mr. Rajagopalan. Mr. Rajagopalan. Mr. Rajagopalan. I don't know why is he convulsing so much? You know, I'll tell you. I'll just tell you one thing. Fuad, and he's not convulsing. He's giving a different perspective. I'll tell you one thing. Irrelevant topics. Just 1 minute. He's trying to You know, fabricate, just a moment. which is most Fuad, Mr. Rajagopalan wants to respond right now. I'll just tell you one thing before I go to Mr. Rajagopalan. Sometime back, we were in Kolkata, we were live, Ramakrishna was live from the Anushilan Samiti, and we were talking about the important role of revolutionaries in the freedom struggle, which was overwritten and not even mentioned. They were called terrorists by the Congress historians, and therefore you should be very careful of any future alliances with the Congress. But we do not need a pro-anti-RSS view at all. Anybody who has read and known about Hedgewar would know that Hedgewar had a choice. He chose to be tried for treason. He was in jail for a year. He chose to be tried for treason. He did not go back. Yes, the RSS was formed in 1925. I can equally argue, did Hedgewar's ideology change between 1921, 22 and 25? No. You have to look at history as a continuity. That's the way we look at it. No. And I want Rajagopalan to respond to you, Ram. Freedom movement. He chose to move away from the freedom movement. Comrade, one second. Please, you can have your own time. Clearly the documents of the RSS, the writings of MS Golwarkar were clearly in favor of continued British rule in India. They did not consider British rule to be enemy number one. And I think now. Comrade, 1 second. I think this country will be much better if we accept all ideologies and stop looking at it in terms of who contributed how much to what percentage. We can equally say, sir, allow me to complete, sir. Allow me to complete. My point would be before Rajagopalan comes in, the left has supported and been part of supporting governments in the center. Why did you not work hard? To make sure that the role of Udham Singh and Bhagat Singh was enumerated? That when you were supporting a central government, the reference to Bhagat Singh and Udham Singh as terrorists was not removed? Was that not necessary for the left parties to do? Why was that history not rewritten? That is also food for thought. But Rajagopalan's turn to respond, ladies and gentlemen. 113. Rajagopalan. Only one thing to comrade Quad Alim. 1 second. Kindly answer me. What is the relationship of comrade Pinnarai Vijayan and Swapna Suresh gold smuggling? You talked about P.S. Thomas, who spoke about India's constitution. He has to resign from the CPM government. So you talk about West Bengal. Kindly speak about Kerala also. Sir, if you want to speak about Hedgewar, Golwarkar and Kerala. of the freedom I want to speak about Kerala. Pinnarai Vijayan, Swapna Suresh. Speak about Pinnarai. Sir, don't go into distraction. Don't use the oldest RSS trick in the book to go in for distraction. At the moment, no distraction, no Hedgewar. Pinnarai Vijayan. To answer why the Prime Minister of India, despite being from RSS, after so many years of independence speech struggle, does not mention the freedom motive speech. You answer that, sir. I think you're not even understanding the Okay, I'll get a word from Shazia. Shazia, I'll be responding to that. Shazia. So Arnab, this is a very important thing. Now let's listen to this debate, and there are lots of youngsters, millennials out there who are listening in. Now what is happening? I myself am telling you, there is such a stranglehold of this so-called leftist thought in academia, and also it was in the media for the. No, let me finish. No, sir. No, not done. Behave yourself. It's my turn. It's her turn. To be fair, it's her turn. To be fair, it's her turn. It's her turn. Thank you. Oh my God! I want to say something. It's her turn. No, Arnab, I want to say something here. So see, this is all they have only excelled in RSS bashing. They have nothing to offer to India of today, to Indians, to their own constituency, if they have any left whatsoever.
And I think it's a matter of great shame. And look at the Prime Minister. He's talking about, the ocean strategy. He's talking about R&D. He's talking about, innovation. He's talking about Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandhan. Kahan se kahan? You're obsessed with it, and that's why, you see, that's a problem. That's all you do, and you have no blueprint for the road ahead. Not an issue. Food security And is not imagine an issue for people in listen India. to all the Marxist feminist theories. Okay. On respect for women, and Yeah, you see what the Prime Minister I'd said like about Nari Shakti. you see Nari the Shakti. I only say this, and I'll go to Samir call. Maybe Abhishek can throw that to Samir call. Question being, why can't we? If the agenda is to make India a developed country, if the agenda is to fight corruption, if the agenda is a cultural renaissance, if the agenda is self-awareness, responsibility for the citizen, all things which we agree in, why can't we agree with them both in speech and practice? It's as elementary as that. Samir called, why can't we? What really is the issue here? I mean, why can't it be set aside and said, yes, the Prime Minister has set a great agenda for the country, let's go together and achieve it. Simple. I think that it's impossible to be part of a debate today with this infectious enthusiasm of the Azadi Ka Amrit Mahotsav. So on this occasion, let me congratulate everybody here on the panel and my country people. But what's important is, it's not only important to talk about things, it's also important to mean what you talk. It's also important to try and see if that is implemented in letter and spirit uniformly across the board. Now, if I were to go back, and I'm not talking this as a spokesperson of the National Conference. This is my personal view. I come from the party, but these are my personal views today, and I'm speaking as a free Indian. I can tell you that the speeches, if you analyze the speeches of Honorable Narendra Modi ji, my venerable Prime Minister, over the last few years only, I think that not all promises that were made on the ramparts of our forts were actually implemented in letter and spirit. Now, I don't want to go into each one of them, 15 lakh rupees, so many jobs and all that, but I'm saying that it's the job of the Prime Leader to give an agenda. I agree with you. But also setting an agenda as far as things like corruption are concerned, I think the fact that the truth is corruption is universal. It's just a matter of what the perception is and managing the perception levels. I don't need any indices or what indices, external indicators or internal indicators. Living in my country and being sensitive enough tells me that it hasn't gone away. It has got segregated into pockets. It is in different ways. It's actually more organized now. But we do speak about that we are resistant to it. But really, if you ask yourselves, all of you here on the panel, has it gone away from our lives? It hasn't. It's there. It's more organized. It's bigger. Now, number two, and this has to do with human failings. All parties, all conquerors. No, you need to give me 2 minutes. Okay, I'll only say this. 1 minute, Prafulla. I'll wrap this up here by saying this to Samir Kaul. Samir, I'm saying one thing to you, Samir. As far as authoritarian... No, 1 minute, Prafulla, just wait. Prafulla, just wait, please. Thank you. We have a recovery on attachment of 99,000 crores you see, property in last I know that, but the windows are on air. My question is, my limited point to Samir Kaul is, and I'll wrap this up by telling Samir something. Samir, let us all of us, you, me, everyone, let us all consecrate ourselves to ensuring that embezzlement stops, that money laundering stops. Absolutely. That 1 minute. Just allow me to complete, please. Allow me. You should have also the courage to listen today, Samir. Okay. See, what kind of embezzlement, you'll tell me? Like the kind of embezzlement that your leader Farooq Abdullah is accused of in the J&K Cricket Association scam, of which the court has taken full cognizance. What kind of disrespect to the flag, like your leader Farooq Abdullah said, keep the Tiranga in your house? What kind of anti-national comments, like the kind of comment which your leader made when he said that he wants China to intervene?
in Kashmir. Let us all, you and me, all come together to make sure that kind of embezzlement, corruption and anti-national talk stops, and let us work towards making the country greater. I thank you very much, ladies and gentlemen, for that part of the debate. Ladies and gentlemen, we've been going across to various locations through the entire day. We've been going across to Khajuwaha, we've gone to Goa, we've gone to Narapet, we've gone to INS Shikara, and we've spoken to people, we've gone to the cellular jail, we've spoken to people who span generations, and there are people who genuinely span generations in their spirit, people who've seen this country, people who have become great in the greatness of this country. So I thought we would get in someone, a great nationalist. He played the role of villain, but I think he's one of the greatest heroes in his personal life. I thought I'd have a chat with Prem Chopra. Prem Chopra ji, kaise hain aap? How are you? How are you? Happy Independence Day, Prem Chopra ji. This is Arnab here. Can you hear me? Yeah, thank you, Arnab. Thank you. Same to you, my dear. Happy Independence Day to you all. And I want to tell you, Arnab, that you have been conducting the show so beautifully. You and your whole team has been conducting the show so beautifully. It's amazing that you have got that much of stamina to do that. And my congratulations to the viewers, to all of you, for the 75th Independence Day. ये हमारे लिए 15 अगस्त 1947 एक बहुत ही मुबारकबाद दिन था, जब हमने हजारों सालों की गुलामी के बाद इस दिन हमने आज़ादी हासिल की थी। और ये हालांकि उसके पीछे आप ये मत भूलिए कि बहुत सारी कुर्बानियाँ थी, बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, हजारों करोड़ों लोग शहीद हुए थे। लेकिन ये एक मुकाम पे हम पहुँचे हैं जहाँ के एक तमाम हिंदुस्तानी बहुत खुश है और बहुत ही मुतमय्यन है इस चीज़ से। अब आज सुबह जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे मोदी साहब ने जो स्पीच दिया है, इतनी इंस्पायरिंग थी। इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग स्पीच। इट इज़ प्रूव्ड that our country is a superpower, and very soon we will be the most superpower again. Amazing. Prem Chopra ji, this is my great fortune. You were born before independence. You were born before independence, and you were born in Lahore, if I'm not mistaken. Yes, that's right. I was born in Lahore. You were born in Lahore. Yes. And then you moved here. You've been part of our. Yeah. You've been part of our popular culture. What is the biggest change that you see in the country today? If I were to tell you, if I were to tell you from the time, say, when you started your career 20 years back and now, what do you see changed in the country today, perceptively? You see, when we left Lahore, it was entirely disarid country. And so this has been a great journey. From there we came down to another place, and then to Simla. My father was employed there, and my education, everything took place there. But at that time also, when we were hearing about the wars and differences amongst the different nations, and the dushmani of one person to the other and one country to the other, we were aware of that during our college days. But यानी कि उस दिनों में हम ये जानते थे कि भाई
ये हमारा हिंदुस्तान जो है एक ना एक दिन अपना मुकाम ज़रूर एक अरूज पे बहुत ज़बरदस्त मुकाम हासिल करेगा, और वो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की वजह से हुआ है, जहाँ के उन्होंने तमाम दुनिया में तमाम लोगों को मिलके हम आगाह किया कि देखिए साहब, हिंदुस्तान हमारा ये है, और यह हमारा तिरंगा झंडा जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान में irrespective of the caste, creed, religion and community, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि तमाम दुनिया में ये झंडा लहराया जा रहा है। What do you look forward to now about the country, Prem Chopra ji? What do you look forward to? आपने मुकाम की बात की, जो जिस मुकाम पे हम पहुंच चुके हैं, क्या हम पहुंच चुके हैं और बहुत दूर हमें जाना है? What do you look forward to the most? I look forward for the prosperity, for the happiness, for every Indian. For every Indian, irrespective of what caste he belongs to, but he should be Indian. And it is been recognized all over the world that we Indians are absolutely very devoted to our ideas, devoted to our country. And I feel that we should now is the time when we should shed hatred. Life is much better, stop the war. And also, this is something I would like to say that क्योंकि आजकल देखिए ना, ये जो वाक़यात हो रहे हैं, एक आदमी दूसरे आदमी का जानी दुश्मन बना हुआ है, एक शहर एक मुल्क दूसरे मुल्क को तबाह कर रहा है, यानी कि यहाँ आजकल हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना जो मिट्टी का है वो फना होने से डरता है। हम सब के दिलों को किसी कोने में ये मासूम बच्चे बच्चियाँ, हम बड़ों के देखकर दुनिया बड़ा होने से डरते हैं। ये मासूम चेहरों पर एक कन्फ्यूजन है, एक बहुत ही क्वेश्चन मार्क है। तो अभी हमें इसे सीधा करना है, ठीक करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इट कलेक्टिवली। इट इज ओनली पॉसिबल इफ वी डू इट कलेक्टिवली। Absolutely. Prem Chopra, always optimistic about the country, always looking forward. And it's so good to speak to you and get some of that positive energy from you. Prem Chopra ji, thank you very much. Happy Independence Day. Look forward to meeting you personally soon. Thank you so much. Thank you. Thank you. All the best. Happy Independence Day. All the viewers too. Thank you very much. Thank you very much, Prem Chopra ji. Thank you. And viewers, when I come back on the other side of a short break, and I'll run into the break with one of the clips of the Prime Minister speaking. But when I come back on the other side of the break, I have two very, very, very exceptional gentlemen. Part of the team that of the first Indian to go into space. I will have with me both Rakesh Sharma and Ravish Malhotra. In a few minutes, you can't miss that. तो हम देख रहे हैं ये दरवाजा खुल गया है और यहाँ से अब आगे बढ़ने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये जो स्टेडियम आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2000 की संख्या में लोग रोज जुटते हैं। बस कोरोना काल में ये कार्यक्रम बंद हुआ था, लेकिन अब फिर से वही चीजें शुरू हो गई हैं और रिट्रीट सेरेमनी होती है हर शाम। लेकिन 15 अगस्त की शाम एक अलग ही नज़ारा, एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। ये देखिए पाकिस्तान बॉर्डर का ये दरवाजा खुल गया है और वहां से भी बाहर आ गए हैं। ये पाकिस्तान बॉर्डर का दिख गया है और ये हिंदुस्तान बॉर्डर। आप देखिए, हम हिंदुस्तान की सरजमी पर हैं और एक अगर हम थोड़ा सा कदम दूसरी जगह रखेंगे तो ये पाकिस्तान की सरजमी हो जाएगी। अब हम देखेंगे स्वीट शेयरिंग सेरेमनी कैसे होती है और मेरे लिए तो ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है ही, हमारे दर्शकों के लिए भी होगा, क्योंकि जब हम लाइव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और हम खुद देख रहे हैं तो वाकई अद्भुत है। इससे पता लगता है कि नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। शांति, सद्भाव, भाईचारा, बस यही बना रहे और यही भारत की तरफ से भी लगातार गुहार की जाती है। आजादी का महापर्व है,
अमृत महोत्सव है और इसको ऐसे ही प्यार मोहब्बत से मनाना है। प्यार मोहब्बत का ही पैगाम देने का प्रयास है। ये अपने साइड का हिंदुस्तान का है, आधा पिलर पाकिस्तान का है। ये हमारा मेन पिलर है 191। ये 191 जो आप पिलर देख रहे हैं, मेन पिलर है। यहाँ पर ये हिंदुस्तान का पूरा एक झंडा दिख रहा है और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान का है। हाँ, ये जरूरी था अपने दर्शकों को दिखाना। तो ये जो पिलर है, आधा पिलर भारत का, दूसरी तरफ पाकिस्तान का, और यहाँ से ही बैरिकेड्स हट गए हैं और अब होगा मिठाई को बांटने का कार्यक्रम शुरू। The Amity BBA has been ranked India's #1 BBA in the recently released Times of India B School 2022 rankings, a testimony to Amity BBA's globally benchmarked standards in education. Reading allows us to become familiar with ourselves. We don't read, we won't know what is knowledge. I just find it very interesting to know people's lives, how they went through certain situations, how they dealt with things. So wherever you want to go in life, if you read books along those lines, then that would really help you in growing. Reading could mean a million different things to every individual. What does it mean to you? Visit readindia.info to find out more. बिल्कुल जी सर, यहाँ पर करीब 3 से 4 बजे के आसपास प्रोग्राम शुरू होंगे। इस बार प्रोग्राम में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, जिसको लेकर करीब 12 बजे के आसपास कंफर्मेशन होगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ की मैं तस्वीर दिखा दूं कि कितनी खूबसूरती से ये पूरी जगह सजकर तैयार है तिरंगे के रंग में। वैसे तो यहाँ हर रोज सेरेमनी होती है, लेकिन आज की सेरेमनी बेहद खास है। 15 अगस्त है और क्योंकि अमृत महोत्सव आजादी का पूरा देश मना रहा है, प्रधानमंत्री भी लगातार लोगों से अपील करते रहे हैं। ये जो हम दिखा रही हूँ इस वक्त में इंडिया, ये जो बॉर्डर है जहां इंडिया लिखा हुआ है, इस पूरी बिल्डिंग को, इस पूरी जगह को तिरंगे की लाइटिंग से पूरी तरह से तैयार किया गया है। खूबसूरती से इसे सजाया गया है। अंधेरा होगा तो उसको तो देखा जाएगा, लेकिन अभी जो खूबसूरती यहाँ निकल कर आ रही है, हमने जो यहाँ तैनात जवान हैं, जो गार्ड्स हैं, उनसे भी बात की। उनका ये कहना है कि आज हमें 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी खुशी हो रही है। हम आज जो महसूस कर रहे हैं, हम शब्दों में उसे बयां नहीं कर सकते हैं। Pictures from Hussainiwala. Gaurav, over to you. Another ceremony there at Hussainiwala. Can you tell us the significance? Viewers, welcome back. Before my next segment, which is very special, and I have been looking forward to this for the entire morning. In fact, I have looked forward to this for a very, very long time. It is a dream moment for me, because I remember I was in primary, secondary school, and
we were in, my father was in the army and we were just getting television at home. And this was in Khadki in Pune. And we saw this moment where we saw two young men preparing to go into space. One went, one didn't, but what a team they were. And everybody idolized them. Wing Commander Rakesh Sharma and Air Commodore Ravish Malhotra. Everybody idolized them. I don't think Air Commodore Ravish Malhotra and Wing Commander Rakesh Sharma, I think I've told Wing Commander Rakesh Sharma what you have been for my generation. I don't think he's hearing me. I really want him to hear me today. Can you hear me, sir? Can you hear me, sir? You just open your mic a little bit, sir. You can hear me, sir? I think Air Commodore Ravish Malhotra can hear me, but I don't know if Wing Commander Rakesh Sharma can hear me. Can you hear me, sir? Sir, can you unmute yourself a bit? I think your mic is still muted. But let me get the visuals on air and speak over them before I get both of them lined up. And if we can run the pictures full frame, ladies and gentlemen. This was a preparation for the joint Soviet-Indian space flight. Amid stiff competition, two young men were selected to be the cosmonauts. And here are the pictures. No, we'll go to the clip in just a bit. And they were Rakesh Sharma and Ravish Malhotra. At that point of time, this flight was seen as an absolute dream, an impossible mission. And we have that quote when Indira Gandhi asked Rakesh Sharma, kaisa lagta hai hamara desh? And he said, sare jahan se acha Hindustan hamara. But what a collective dream it was, because what we saw were two men doing what we felt as a nation we could not have done. Going through those international training missions with such discipline, with such a sense of national honor, with such a sense of pride. We took pride as school children in the way they conducted themselves. We took incredible amount of pride in the way they conducted themselves, in the way they stood, in the way they interacted with the Soviets, and the way they stood on standby. Both of them spent so long training in the then USSR, and it was only for the glory of the nation. So viewers, these two gentlemen are part of our history. They are etched in our consciousness. They make us proud every day. That small clip, Wing Commander Sharma, you can hear me now? I'm just doing the audio check with you again. Yes. I can hear you. Sorry, I missed all your introduction. Yeah. Well, I've just been. So if there's anything worth repeating, no, there's nothing. I just said that I was in school and television had just come and we watched in Magic. We watched you. It gives me goosebumps to talk to you now. We watched you before. You know, we used to go and see these movies in the army cinema halls. There used to be open air theaters. I remember going to the open air theater in Khadki. And we used to watch these films where they used to show small clips of you and Ravish Malhotra training. And all of us, our army officers, everyone, the kids, everyone just stood there. It was the popcorn moment for us. You can't imagine what it was, you know, for us. And we were so happy and so proud. So, you know, when you go back 40 years, it's a different feeling. So I just wanted to say what an honor it is to speak to both of you today. I will speak less. You will speak more. I just want to run that clip that is in everyone's mind, viewers. That small clip, please. होता है। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? जी, पहले तो मैं भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बधाई के लिए। जैसे आपने कहा, हमारी ट्रेनिंग बहुत रवीश मल्होत्रा की और मेरी दोनों की ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल थी, मगर अभी हमें आके पता लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली, ये ट्रेनिंग ज़रूरी थी, क्योंकि
यदि हमारी डॉकिंग मनूवर हुआ है बगैर किसी तकलीफ के, हमें तो ऐसे लगा जैसे कि हम सिमुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है, कड़ी ट्रेनिंग, इसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम बगैर किसी तकलीफ के सक्सेसफुल डॉकिंग कर पाए हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तबीयत अच्छी है आपको, हमको या अपने परिवार को कुछ खास कहना है? बड़ी मेहरबानी जी, कहना चाहता हूँ कि तबीयत बिल्कुल ही अच्छी है, ज़रूरत से